from Bengal myself. Manish sir, you are from where are you posted, sir? I am posted in Kalyani. It's around 50 kilometers. Kalyani. Oh, yeah, I know, sir, because I am from Barakpur myself. Okay. Yes, so I am aware, and it is very hot right now in Bengal. By the way, it's hot everywhere. I'm Hot and sure humid too. it is very humid. Yes, yes, and I'm new to North India at times as well. I still haven't gotten used to the humid, very humid weather here in Noida. It's very the heat is really, really. It is I what? similar to Yes, it sir. is similar to Bengal only. It is similar to Bengal. Oh, yes, it is very humid. Uh, So you're right. Murthy sir, where are you posted? I'm currently posted at Punjab. Okay, I sir. hail from Andhra Pradesh. I have Right, served sir. good 14 years in Bengal. I know You have served Bengali. 14 years I in know Oriya. wow, wow. So, আপনি বোঝেন একটু বেঙ্গলি? আমি খুব ভালো মতন বুঝেন, ঠিক আছে? আমি আচ্ছা, right. গল্প করতে পারি, ঠিক আছে? Wow. That was very fluent, by the way. Neha ma'am, are you here? I just want to start off with our session, with meditation session, because everyone's Neha ma'am is finally here. Yes, Yes, yes. So before Neha ma'am starts off with this session, आप लोग को थोड़ा introduction दे दूं Neha ma'am के लिए. Neha ma'am has been conducting various yoga for health and success programs in association with Amity for a long time. Neha ma'am has been part of AITD BSF interventions for a long with CLNDP with LMDP as well. She's a yoga expert and a homeopathy physician as well as a registered medical practitioner with the Delhi Homeopathic Board, Government of Delhi. So Neha ma'am, I would like to hand over the proceedings to you. I hope you all enjoy the session. Thank you, Dave. Thank you so much. Okay. Hope I'm audible. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Namaste. Hare Krishna. मैं आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Namaste. Okay. Our today's topic is connect with the breath. Today, we are going to work on a foundational breathing practices. And these practices will help you later on your deep pranayam and your meditation practice. As you all know, today is the first session. Today is your first class. Everyone, first sit comfortably on your posture. As you see, I have used the cross-leg posture. You can sit comfortably in your chair. Make sure you are sitting on both your glutes equally. So don't lean on one side. Thigh should be relaxed. Calf should be relaxed. Feet should be relaxed. Now, bring your awareness towards your organic body, towards your upper body. Don't lean forward or don't lean back. Spine should be neutral. Head, neck, and spine in a straight line. Don't overarch your back as I'm doing. Don't overarch your back, so don't do the anterior tilt of your pelvis or don't round your back. Spine neutral. Once you are done with the physical, bring your awareness towards your breath. Gently close your eyes. Now rest your hands on your lap, palms up towards the ceiling. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Now join your palms together in front of your chest. Chant 3 rounds of Om all together. Inhale. श्वास लीजिए.
Again, inhale. Last and one more. Inhale. Now relax. Hands on your knees. Gently open your eyes. Let's get started. First, you can watch the first round on your screen. I'm going to start. I will quickly show you. Interlock your fingers. This is the first starting position. With inhale, you guys have to lift your palms up towards the chest region. This is one, and you have to inhale throughout this process. Second, exhale, turn your palms towards the camera. Slowly, slowly extend your elbows, round your back. Now, again with inhale, lift your both hands up over the head, lengthen your spine, lengthen your torso. And with exhale, fourth, slowly release your interlock, hands on the side. Now from here, take your both hands back, interlace your fingers, expand your chest, slightly chin up. And again with exhale, release your interlock, bring your hands back to position one. I will quickly show you the practice from the back so that you can see when I interlock my fingers behind. So this is the first position. Inhale, chest up, lift your hands up. Exhale, slowly, slowly round your back. Third, inhale, lift your hand over the head. Exhale, slowly, hands on the side. And immediately take your hands back with inhale. Arch your back. Exhale, position one. Now, all together, we do 6 rounds of this practice. Okay, everyone interlock your fingers in front of your navel. तो अभी यहाँ पर हाथ रखेंगे. धीमा श्वास लेंगे. सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे आप फिंगर्स को टर्न करो. Turn your palms towards the camera. Slowly, slowly, elbow straight, round your back. पूरा श्वास खाली कीजिए. अभी धीमा धीमा श्वास लेंगे. हाथ ऊपर 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 ऊपर. श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे धीरे से. अब धीरे धीरे हाथ पीछे लेके जाएं. श्वास भरते जाइए. हाथों को इंटरलॉक करेंगे. Exhale, slowly bring your hand to position one. Second round. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again, inhale. Arch your back. Open your chest. Exhale. Back to position one. Now third round. Again, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. श्वास लीजिए. श्वास छोड़िए. 3 more rounds. श्वास भरिए. छोड़िए. श्वास लीजिए. श्वास छोड़िए. हाथ पीछे. श्वास लीजिए. श्वास छोड़िए. Back to position one. 2 more rounds with a gentle smile on your face. Inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Both hands back. Inhale. Exhale. Last round. Inhale. Exhale. Inhale. आपको श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है. श्वास छोड़िए. एक्सेल. श्वास भरिए. हाथ पीछे. इंटरलेस योर फिंगर्स. श्वास छोड़ते हुए आगे. नाउ रिलैक्स योर हैंड. होप अभी सबको ये प्रैक्टिस लर्न हो गई होगी. तो अभी आप आंखें बंद कर लीजिए और हम 3 राउंड करेंगे. नाउ वी गोना डू 3 राउंड with closed eyes. Okay, so everyone, chest up, shoulder relaxed, interlace your fingers. Now gently smile on your face and close your eyes. Inhale, lift your both hands up with inhale in front of your chest. Exhale, slowly round your back and bring your hands in front. Inhale, both hands up over the head. Exhale, down. Again, inhale, हाथ बांधिए पीछे, छाती बाहर, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस. One more round. Again, inhale, lift your both hands up in front of your chest. श्वास खाली करते हुए हाथ अपने से दूर लेके जाएंगे. श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, आंखें बंद. श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे. श्वास भरते हुए हाथ पीछे. श्वास छोड़ते हुए वापस. Hands on your lap, eyes still closed. Don't open your eyes. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लेंगे. Slow, deep, long inhale. Lengthen your spine. Bring your whole awareness towards your breath. Just connect with your breath, as today's topic is connection with the breath. Slow inhale, slow exhale. Now gently open your eyes. Now the second breathing exercise. All of you, rest your hands on your knees. As I know you are sitting on the chair, hands on your knees. First, look at your screen. I'll move my spine with the breathing. Okay, so hands on the knees, see. I'll do the anterior tilt of my pelvis. Arch your back and open your chest. So hands on the knees, first inhale, anterior tilt of your pelvis. As you are seeing, I'm arching my back, open my chest. श्वास खाली करते हुए exhale, धीरे धीरे कंधे पूरे राउंड करेंगे. Draw your belly in and do the posterior tilt of your pelvis. जैसे आपने देखा होगा लोग ऐसे बैठ जाते हैं, pelvis अंदर करके. तो वो क्या है, जब आपने posterior tilt किया pelvis को, अब आप देखिए anterior tilt. Slowly, 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 slowly arch your back, open your chest. So we do 6 rounds. Hands on the knees, arch your back, arch your back, arch your back, chest up. अब श्वास खाली करते हुए move your spine. Slowly, slowly round your back. Round your back, round your back, move your scapulas out. Draw your belly in, posterior tilt. फिर से करेंगे. Second round. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 more rounds. Again, inhale, 1, 2. Everyone move your spine with your breath. श्वास छोड़ते हुए कंधे बाहर, पेट अंदर. Draw your belly in and do the posterior tilt of your pelvis. 2 more rounds. Move your spine. Slowly, slowly, slowly arch your back, chest up. Exhale, round your back, draw your belly in and do the posterior tilt of your pelvis. All together, last round. फिर से श्वास भरेंगे, धीरे 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 श्वास भरेंगे. Pelvis आगे की तरफ move करेंगे. Arch your back, chest up. Exhale, do the protraction of your shoulders. Draw your belly in and do the posterior tilt of your pelvis. Again, inhale, spine neutral. कंधे ढीले, आंखें बंद.
Slow inhale, slow exhale. Feel the sensations going throughout your body. Now gently open your eyes. Make a fist. So thumb in, all four finger out. Make a Adi Mudra and rest the dorsal part on your thigh. Make a fist, thumb in, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां बाहर. Head, neck and spine in a line. Gently close your eyes. Now slowly bring your awareness towards your breath. आंखें सबको बंद रखनी है. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लेंगे. उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने देंगे. Only and only connect with your breath. पूरा ध्यान श्वास पर. You have to lengthen your inhale and lengthen your exhale. No sound during inhale and exhale. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए. उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने दीजिए. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Okay, now with my count. Inhale, 1, aankhein band. 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Rishti aankhein band. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Very slow inhale, slow exhale. Take this time to observe how your body feels, how your breath feels. Feel the lightness in your body. Feel the calmness in your body with each inhale and each exhale. Few more rounds. धीमा, गहरा और लंबा श्वास भरिए. उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने दीजिए. Hands still same. Last round, everyone. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Now release your thumb. Rest your hands on your lap. Eyes still closed. Release your mudra. Hands on your lap. Just scan your body from toe to head and head to toe with inhale and exhale. As I said, today's topic is connection with the breath. So only and only watch your breath. How you inhale, how you exhale. Don't control your inhale and exhale. Simply watch your breath. सिर्फ ध्यान श्वास पर. पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ धीमे, गहरे, लंबे श्वास पर. और उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने देंगे. Now from your breath, again, bring your awareness towards your extremities. So move your fingers. Join your palms and rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your eyes. हथेलियों को आंखों पर रखेंगे. One more round. फिर से करेंगे. Rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your eyes. Now you can chant with me or after me. Make a leaf with your palms, with your hands. You can chant with me or after me. Karage vasate Lakshmi. I'll repeat. Karage vasate Lakshmi. Kar
Madhya Saraswati, Kar Madhya Saraswati, Kar Mule tu Govinda, Kar Mule tu Govinda, Prabhate Kar Darshanam. Gently open your eyes into your. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining me today. Hope you guys join the next tomorrow's session. We will continue our journey towards the meditation and towards the deep breathing practices. But first, few days we just learn how to breathe naturally. Thank you. Hare Krishna. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Over to Neha, you, ma'am, for the Dave. wonderful. Thank you so Thank much you for the very wonderful much. Thank session. you. It's beautiful. Hare Krishna. Thank you. Thank you Krishna, so ma'am. much. We'll again be joined by Neha, ma'am, every day now till the 17th. So I'm sure we'll look forward to it. Thank you so much, Neha, ma'am. Thank you. Thank you. Welcome back, everyone. How are you all feeling? Sirs? Beautiful film. Mr. Banerjee, once again, we are feeling very relaxed. But once again, regarding the poster, Poster is still the same. Oh my God. Please it don't. has gone back now into 2022. It is changed now, right, sir? Some November 2022. It says 14th, it's The old one. 26th November. okay. 1 second. I have to check then. I am. Yes, it is. Okay. Now I'm. It is different. Okay. Thank you, sir, for always pointing it out. It helps me. Thank you so much. I'd rather, yeah. Okay. So, I have a question for all of you. I am sure we all received the pre-program letter. How many of you did get that time of a busy schedule to look at it? Did you get time to do the reading or, take a look at it? Why I'm asking is, sirs, because उस pre-program letter में एक quote था. And from someone at the end of that pre-program letter, would any of you be able to say, do you know who that quote was from? Who it was? The last page of the pre-program letter had it. Don't look it up now if you have read it. See, this is a test also for you all. No idea. It is okay. So if in the pre-program letter, you at the end, we have a quote from Subhash Chandra Bose, Netaji. That quote reads, "One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives." It's a very beautiful quote. Why I am starting off this quote today is that I want to officially introduce you to the very first session. हमारे आज का session जो है, कल we got to know about it. It is impact that you want to have. This session, sirs, is designed with the objective to enable you to think without boundaries. On what impact you personally and professionally you'd like to have aligned with the BSF vision, value and motto, and what you, sirs, can do to strengthen your team's beliefs around these values. At the end of this program, we will be able to, identify and deconstruct in depth the impact, and what we mean by impact, what are the obstacles to impact, creating an impact, and strategize ways around it. How strategize ways around how we can create an impact. So इस first session को it is under that हमारे 7 talents of a leader में ये set direction के आते हैं. This is the first official session under set direction. इस session को लेने के लिए I'd officially like to introduce you to the coach for the section, Dr. Dipali. Dr. Dipali, I hope you are here. Yeah, Yeah, Hare hi. Krishna, all Good of morning, you. ma'am. So glad Uh, to see all yeah. colorful flags and very decorated backdrops of all the participants. I'm really glad. Yeah, so Dr. Dipali has a very rich experience of 16 years as an assistant professor with a PhD in management. Ma'am is not new to IIT BSF interventions. She has been part of CLNDP journey for quite some time, and she's
currently heading the Amity Directorate of Distance and Online Education at AUR. She's conducting online exams for distance learning students. Ma'am, I would not like to take a long time. Please, I'm handing over the proceedings to you. Thank you so much, Soumya, for setting the tone of the session and briefly describing it so well. So to start with, I would really extend my warmest greeting to all of you. And it's a privilege, and I'm really glad to take this session with you. And my past experience of taking so many sessions with BSF have always been a real value addition to me. So they were very impactful, not only in terms of the way I took it, but it was more impactful in terms of what I learned out of it. So it's always a learning curve that I'm climbing through whenever I'm witnessing all the participants from BSF. So a great experience. Thank you so much for allowing me to have this session with you. So as Soumya have rightly introduced, the title of this session is very, very interesting. And I'm so happy that right in the beginning, right in the morning, I've got a very fresh slot with you. We are starting our day with it. And I was a part of the last session as well, wherein you were trying to control your breath, take account of your breath, and you got all charged up, all energized with the kind of yoga that you have done. So I hope that was something interesting for all of you, and you're all set to begin with the journey of creating impact. So can I get your hands up or thumbs up in the window? Oh, thank you so much. Thank you so much. So I would appreciate, because it's a very interactive session, it's a workshop wherein your contribution would also, bring a lot of meaning to the entire discussion. So I request that the more you participate, the more you speak up for things. Yes, chat box is also one of the options. You can always type your submissions in the chat box. But if possible, if you can speak up, that would be great. It's always better to interact when we can speak on a platform. So let me just start sharing my screen with you. Okay, before I start with the session, the title goes like, how can you create impact? So I think all of us throughout our life, because you are all very senior officials who have been leading your men's, your forces, and you are excelling on the chart of leadership. So I'm sure every time you must have been very introspective about how to create an impact. कैसा impact हम चाहेंगे कि हमारे followers पे हो या उन लोगों पे हो जो हमारी command में है, जो हमारी battalion में है. So that is something which we are always conscious about. और not only in our professional life, rather हम हमारी personal life पे भी हमेशा चाहते हैं, especially with our families, with our kids, बच्चों के साथ हम हमेशा हम कहते हैं ना कि वो वही follow करते हैं जो उनको सिखाया जाता है. तो you always try to uphold yourself whatever may come, कि हाँ बच्चे हैं तो उनके सामने वो impact होना चाहिए कि this is what my father is, they should be proud of us. तो वो impact create करना बहुत easy task नहीं होता. It takes lot of introspection, lot of sacrifice, and lot of values are to be associated. Only then such kind of impacts are created. So today we will be discovering in our whole journey of 2 hours that how you can create a better impact on people. What are the challenges which come in the way? So this is an individual based perspective that we will be discovering today. क्योंकि जो ये आपका प्रोग्राम है वो लीडरशिप और मैनेजमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो इट्स ऑलवेज सेड दैट अगर आप एक अच्छा लीडर होना चाहते हैं, आप अच्छे से चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू मैनेज योर ओन सेल्फ. सो विद this session we are starting with your individual self, and gradually you'll pick up the momentum, और फिर आप टीम ऑर्गेनाइजेशन उन टर्म्स के ऊपर भी हम बात करेंगे. So let me just share my screen with you.
Okay, so I hope my screen is visible. Yes, ma'am, ma'am. it is. Yeah. Thank you so much for confirming. Okay. Yes. So the topic itself seems to be very interesting, the impact that you want to have. So just to lay the context of the topic, I would just like to ask you a bit of questions that do you really care about the impact, creating impact on people? What thought comes to your mind when you talk about creating impact? Madam, whatever we do, Yes, sir. it has an impact, whether it is a positive or negative, it will definitely impact others. True. So all your gestures, all your actions do impact others. But what we'll be talking more about is how do you want to, how you can, shape up that impact based on your own things, based on your own strengths, your vision, and things like that. So for that, let's begin with a small exercise which I want you all to do. You can see pictures of few leaders on this screen. Yes, ma'am. Okay, so can we name them? Who all are there? Dr. Kalam. Dr. Kalam, our Prime Minister, Dr. Kalam, Mr. Mahatma Gandhi, Vivekanand, right? Nelson Mandela. Bhai Ambani, Nelson Mandela, Ambani, Sindela. Vivekananda, and Nelson Mandela. Mandela. Okay. And they are very, very popular faces who are known for the kind of impact they have created in the society, Yeah, I in the individuals, and in the lives of people, right? I hope all of you agree to that. Yes. Yes, yes. Okay, okay. So with that thought, I would request Tanvi, if you are there, if somebody can help me out with the breakout session, which I want to take up with this slide. Yes. Okay. Yes, ma'am. I am here. Okay. Okay. So sir, I would like to conduct a breakout session wherein you will be divided into different rooms, and you'll be a team of 3 to 4 people in a breakout room. What you'll have to do is you'll have to pick up any one personality out of these pictures, or maybe if you can come up with your own personality, any other personality which you can relate very well to. So what you'll have to do is you'll have to discuss what all impacts those personality have created on the society. And not necessarily the positive ones. You can also talk about the other side of the impact. So as a group, you will have to come up with one personality and just let us know what are the impacts that were very evident on the society that were created out of that personality. So I hope I'm clear with the task. Can we move forward? Yes. Okay, okay. Thank you so much, sir, for confirming. So Tanvi, can we initiate the breakout rooms? Yeah, ma'am, how long do you want the breakouts to be? What will be the time? I think 30 seconds would be okay. Okay, let me do 1 minute because 30 seconds gets over very fast. So I'll do 1 minute here. Request all to click on join to move to the breakout rooms, please. Hello. Yes, sir. Yes, Nagendra sir. इसमें हो नहीं रहा है. It's not coming up. Join का option आ रहा है sir आपके? Join. I have already joined, but somehow it has missed now. Okay. I've joined and then it has asked for some field. No problem, sir. Let me give you a request again. 1 second.
Sandy, Mr. Soumyadev have recently joined the meeting, so Yes, also yes, assigned. I have admitted him. Okay. Should I brief him about the task? No, he's from our team only, Dr. Dipali. Yeah. Okay. Yeah, Dr. Dipali, all are back now. Okay. Fine. So I hope you had an interesting discussion, and can we begin with room 1? Who all were the members of room 1? Room 1. Yes, sir. I think I was in room 1. Earlier, I was sent a request of room 6, and then subsequently I was changed to room 1. Then Jia Singh was there, Ramesh Ram, and T. Mohan. We 4 were there in that group. Okay, that was room 1, right? Yes. Okay. So, sir, what was the discussion that you had? Which personality did you pick up, and what impacts did you discuss? Before we discuss, it's almost over, but we have decided on Mr. APJ Abdul Kalam. Okay, great. One of the most important factors is that being a president of India, for the first time, some president of India has shown such impact on the nation after Dr. Rajendra Prasad. Otherwise, most of the presidents have been rubber stamped. And secondly, the humility and the soberness, down to earth behavior of him makes him a different person. True. That's true. So, ma'am, in spite of that, ma'am, I would like to add something. yes, please go ahead, sir. In spite of that, ma'am, what Nagendra is saying, he was a great such a leader. Rather, he had loyalty and self without interest. और इसके अलावा जो है उसके अंदर हार्ड वर्कर भी है वो, और एक विजनरी है जो कि इंडिया के साथ जो विजन उसके साथ जुड़ी हुई है वो उनके साथ विजनरी है, और ऑलवेज हम्बल सर. He was always humble. Very true. To add to it, 3 traits of Dr. APJ Abdul Kalam which impacted my life and me as a personality was his simplicity, his assertiveness, and his clarity of thought. These 3 traits, it really meant a lot if we see his entire life and the way he tried to take the nation along. So it was his greatness. Thank you, ma'am. Very true. So they were, that was an amazing insight coming. One more issue, he dedicated his, yes, sir. yes, ma'am. Yes. Dedicated his life to the country and to school children. And he remained a student and a teacher throughout his life. Throughout his life. That's true, sir. So that down to earthness, the kind of humbleness that he had, the modesty is what keeps him in our minds and in our heart till date. And I'm sure all of us feel so very proud of our ex-former president that we do not have any doubt about, any negative impact or any negative side of it. I mean, very proudfully, with great reverence, we always remember him, and he's been an inspiration to everybody. I mean, irrespective of whatever wake the person comes from, whether he was a scientist, whether he became a president, in every wake of his life, in every role of his life, he have done so much of justice and so much of greatness he was filled up with that everybody looked at him, and we really owe a lot of respect to this personality. So very true. That was the kind of impact which Abdul Kalam ji was able to create on us, on our society, and
on us as an individual as well. So greatly submitted group 1. Can we have group 2, room 2 people? Good morning, madam. Very good morning, sir. Basically, in the room number 2, we have chosen the Dr. B.R. Ambedkar, Okay. the person who is known as the one of the 6th intelligent man in the world and the symbol of knowledge, True. as declared by the United Nations organization. And he was the person who had established the liberty, equality, justice, and emancipation of the women for the gender equality, and for that he had fought the Hindu Code Bill. On that he resigned in the 1956, and he impacted a lot on my life and others also in many ways, to liberate the people and to establish the better laws for the people of the India. And still we are all the governments and the political executives that derive the powers from the constitution, which is made an architect by him. Thanks. Morning, ma'am. Very good morning, sir. The impact I found in the personality of Dr. Ambedkar is knowledge. I think he is the only person in India other than Dr. R.K. Narayanan who got 2 PhDs from foreign universities, and his determination to achieve his goals towards his society for betterment of deprived peoples, and his spirit of fighting during all adversities. During that period, he was alone. Nobody was with him, and he fight for the right thing. Very true, Mansingh sir. Thank you so much. These are the qualities and which impacted greatly on me. True, very true, sir. One more thing I want to add, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. He also create the awareness among the people who does not know their basic fundamental rights. It was his great vision and knowledge and his determination to educate the people who does not know even the basic fundamental rights. Very true. So one thing which is coming out in common with this room 2 group is taking Ambedkar, B.R. Ambedkar ji as the person who have created an impact. And maybe the reason why you have chosen him as a personality was because you are looking at the larger section of the society. So be it the downtrodden people, be it the people who haven't ever got a position in the society, be it the women. So he was a person who was consciously awake, and he always tried to uplift and do things for people who were not considered to exist also into the society till that time. Yes, ma'am. That's very true. Ma'am, good morning. Yes. Good morning, sir. But this is out of syllabus. Out of 7 जो personality है. No, sir, it is not out of syllabus. It is not out of syllabus. It is not out of the syllabus. I also stated जब मैंने ये स्लाइड तो मैंने कहा था कि आप अपनी चॉइस का भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. तो ले सकते हैं. You are not present in the consciously. You are not present in the class. Yes. Properly. Right. It is out of box thinking. Ma'am, yes. It is out of box thinking of the group number 2. Yes. वो मेरा रीजन ये स्टेटमेंट बोलने का ये था कि I witnessed this session with the older batches of BSF. तो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि why only these pictures selected? अम्बेडकर साहब के ऊपर एक सेशन रख दीजिए. जी सर. एक सेशन रख दीजिए अम्बेडकर साहब के ऊपर. Yes, no doubt that must be there. हाँ, तो वो जो है इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको जो है समराइज नहीं किया जा सकता है. उनके लिए सेशन चाहिए. Yes. वो तो किसी को समराइज नहीं करते. जितने भी दिखा रहे हैं सारी इतनी नहीं. अग्रवाल सही कह रहा है. अग्रवाल 45 मिनट में किसी को समराइज नहीं कर सकते जो सामने है. सेशन होना चाहिए
और उनकी सारी चीजें देखा जाए, उनका फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या योगदान रहा है, अपलिफ्टमेंट में उनका क्या योगदान रहा है, पार्टीशन में उनका क्या योगदान रहा है, वो सारे जो है सीक्वेंस जो है, उनकी एजुकेशन को लेकर के क्या योगदान रहा है। बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल इसमें जो है ना आपके विचारों से प्रभावित जो आप बोल रहे हैं, नहीं सोसाइटी ने उनको क्या दिया हुआ है। अरे भाई आप हर चीज को पॉलिटिकल ले जाते हैं। आप ऐसे कीजिए, क्या दिया हुआ है, आरएसएस को और वीर सावरकर को भी ले आइए, कितनी बार माफी मांगी। प्लीज, यू आर सेंसिटिव पर्सन, यू आर सेंसिबल पर्सन। सोसाइटी से क्या मिला पीके, आप फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। मान सिंह Sir, let's continue with the other groups as well, क्योंकि हमें ये देखना है कि बाकियों के लिए कौन रोल मॉडल रहे। Follow to instructions of our senior. Go ahead, ma'am, for another group. Yes, so members room are 3, I requested think, to follow. if room 3 can come up with their submission. Room 3 के participants कौन थे? We have chosen Swami Vivekananda as our leader. Okay. Because he brought many social reforms during his times, and he is considered as a patriotic saint and very humble. And he didn't have any charismatic personality or aura, but when he spoke, the first Parliament of Religions, thereafter, then people realized that yes, he had metal in him, and then he proved to be what I would say. He proved to be many changes in the Hindu society at that time. True. And that is why today National Youth Day is celebrated only due to him. That's true, sir. So whatever personality he had and whatever later on he brought to the society, so from that point of view we consider him as. इसके अलावा जो सर आपने यस सर, एक सेकंड सर, वीरेंद्र सर ने बहुत ब्यूटीफुली उनको एक पॉलिटिकल सेंट बोला है, मतलब दैट वाज अ वेरी patriotic saint. वो एक he was no political figure, not political, he was patriotic, that's true. और वाकई में शिकागो में जाके जो उन्होंने एस्टैब्लिश करा एक हिंदुइज्म का जो झंडा लहराया था सर, वो बहुत मतलब आज तक भी एक इंस्पिरेशन है. एंड टू मी also personally I am very much influenced by his personality. मतलब right from the childhood, जब उनका मैंने उनका जीवनी में भी पढ़ा है कि नरेंद्र उनका नाम था, तो every incident that was stated in the books was really beyond he had to sleep in the open. Despite that, this is his quality. मैम, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि समस्याओं से लड़ना है, भागना नहीं है. जो उन्होंने कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें अपने आप को आप झोंक दीजिए. जो भी समस्या आती है उससे लड़िए और जिंदगी का रास्ता खुद बनाना है. ये बहुत बड़ी चीज थी मैम उन दिनों में, जब सारी चीजें जो है हमारे अगेंस्ट थी. सही बात. शिकागो में जाकर के जो उन्होंने स्पीच दिया. That is why he is considered as patriotic. ट्रू सर. वही कंस्ट्रेंट्स के बाद भी अगर कोई इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है, तो वही चीज दुनिया याद रखती है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इन अ लीडर. And even today he is influencing many. He is a great influencer, yes sir. In his absence also, like people today also relate so much to him. Young generation, जो आपने कहा बहुत rightly said है सर, यूथ डे जो है वो इन्हीं के नाम पे है. तो that's true कि आज तक भी वो कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है. जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उनका फोटो सर, उनका मतलब उनकी आईज स्पेशली वर सो मच फुल ऑफ पावर एंड स्पार्क इन देम कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि वो सच में कैसे रहे होंगे जब. He went as a simple speaker and he got a standing ovation after his speech. That was not simple sir. Simply ही जो बातें उन्होंने कही और जिस तरह से लोगों का ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पे रिफ्लेक्ट करा, that is what greatness That's he what had. I am saying. He went as a simple speaker, but he got a standing ovation after his speech. So he had greatness in that simplicity. Very true sir, very true. मैं भी इनके बारे में. जी सर, आप भी तो उस ग्रुप के ही पार्ट होंगे ना, रूम 3. मैं घनश्याम, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ क्योंकि ये समाजवादी थे और समाजवादी होने के बाद जितनी भी संस्था है
जो ज्ञात्री मंत्र बोले जाते हैं हर स्कूल में, ये भी संस्था से संबंध रखता हूँ। ज्ञात्री मंत्र से बोलते हैं कि जो भूत प्रेत भी भाग जाते हैं और ज्ञान भी आता है, मन में शांति भी आती है। तो ये एक स्टार्टिंग जो ज्ञात्री मंत्र से होती है, ये इनकी संस्था है, समाजवादी संस्था। रामकृष्ण तो परम। मैं इसको दूसरे तरीके से जोड़ना चाहता हूँ। हमारे ये भी कहा जाता है कि अगर ज्ञात्री मंत्र का पाठ करोगे, भूत मंत्र ये जो है आसपास सब आपके अच्छा एनवायरमेंट देंगे, ये चीजें नहीं आएंगी। ये ऐड करना चाह रहा था। और सारे विघ्न टल बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात बताई आपने घनश्याम जी। मैम, इनके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात, इनका इम्पैक्ट जो रहा है ना, इन्होंने यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने का जो इम्पैक्ट दिया है, एंड उसको जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है बाद में with very simple words, that is the major point of his impact on society. And due to that, because he channelizes his own energy during his youth, traveled extensively in that era of time, जब travel करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, उस टाइम पे he just uses energy and expresses all gains to youth in very simple terms. That's why he becomes the ideal of youth right now. Even today, if you read his expressions and impressions which he had earned in very small, like he died very young. Yes, he died. That's why he is the icon. That's the impact of his youthfulness to present youth also. That is what his impact is. Rightly said, Ashwini sir. बहुत बिल्कुल सही आपने बात कही है। And fortunately, of late, अभी recently हम लोग वहाँ कन्याकुमारी जाके आए थे, तो I witnessed that room, that whole energy, that space. That meditation room, man. Yes. So the moment you enter that place without his presence, also you can so much feel his presence that I mean you feel so charged up with that. और आप You always sees his eyes in that meditation room. Yes, you see that. I mean, हर एक का शायद अलग interpretation होगा, and that power could be felt very easily over. जनरेटर चलाओ लोकल वाला। और सर मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ रहा था that you need not to make noise, आपको quiet रहना है. People were automatically driven by that charisma that they were silently observing that silence and it worked wonders. वाकई में। और जबकि मतलब obviously वहाँ सब vacation mode पे आते हैं, वहाँ सब holiday mode पे आते हैं, जहाँ पे वो इस mood में भी नहीं होते, but still that energy was so high that it overpowered all other emotions and we were like straight into meditation. So amazing. The incident at that Kanyakumari place, he was just sitting on the shore, and that island is a little far away. जिसको जेटी से जाते हैं हम. Yes, yes. He just thought of and jumped in the sea and just swim up to that place. Just imagine. True, sir. That's the energy of the youth. Yes. And then he attained that consciousness, which he sat there for, I think, days together, and then he was able to make wonders in the world. So very true, sir. Very nicely contributed room 3 people, and room 4. Did we had room 4 also? Namaskar, madam. Initially 5 officers, later on 4 officers were only present. Mr. Okay, Manish Negi, Mr. Rajesh Kumar Jadhav, Srinivas Murthy, and myself. So we, among the photograph you shown, we selected none other than Netaji, Subhash Chandra Bose. As from his initial college days, he was topper. Then he joined ICS and then left the ICS job. Then he tried to join Congress and tried reform for the our independence, but there he have seen some fault in that system. Then after getting elected as mayor, he then British then capsized in a room, single room. From through Afghan he left and he traveled thoroughly via Germany. Then he met all great leaders, and he met Raspberry Bose over there. So he was a great leader throughout his life. And after when Japanese forces headed over few captured Indian soldiers and a few surrendered Indian soldiers, he then organized INA. And for financing INA, he started banking. He started all of national building. He started on those days. He also empowered women also. He started
Rani Lakshmi regiments, and Captain Sagal was first who took over that regiment, and later on he employed that regiment to look after that war in war area, to look after the Indian National Army soldiers. And throughout his life, he tried for establish self-reliant Indian governments. And it is due to only his efforts, major efforts, though history could not recognize the then time. But now India is recognizing his efforts, and India now got it independence, and British has fled this country. So now Mr. Murthy, who is in uniform today, he will elaborate further. Thank you so much, Supriya sir. That was really nice. बहुत briefly आपने पूरा उनका journey बता दिया in very short words. So, who else from the room would like to contribute? Mr. Murthy, Mr. Manish, please come up. I am a great freedom fighter who was a true patriot, a very good administrator who selflessly fought for the freedom of India. He believed in women empowerment also, and during those times when women were not supposed to come out of the house so much. Despite that, during those times, he believed in women empowerment, and as sir has told that he had a women brigade also in his Azad Hind force. And he was the one who truly believed that without armed conflict, it is not possible to come out the clutches of the British Raj. And I think whether people recognize it or not, but he was one of the main reasons because of which the British have given us freedom. Because without blood, as he has rightly said, that without blood, the independence cannot be achieved. Very true, sir. उनका वो जो I'd नारा like वो to आज add, ma'am, Yes, he sir. was really inspiring personality, and he was having all the leadership qualities which we are talking about, and his contribution contribution and as well as qualities cannot be covered in words. Sorry. I thought it was my office. Yes, please continue. I'm really sorry. Somebody came in. That's all, ma'am. Rest of the things it has already been covered. Already been covered. Good right. morning, ma'am. Very good morning, sir. Some more thing about the Swami Vivekanand regarding Okay, Swami Vivekanand. some golden rules for the life. Be courageous in the face of trouble. True. Importance of being a persistence and believe in yourself. So these are rules which made us for the better life. और impact इतना strong है, words still are so inspiring. और हम किसी भी situation की बात कर लें, किसी भी अपने lifespan की बात कर लें, whether we are into youth, whether we are into our adulthood or there is a child, I think ये principles sir बहुत ज़्यादा bind करते हैं and they inspire you. मतलब if you are courageous enough, you'll always stand by your thoughts. You will be able to face things so well. तो that's true. इतना सारा impact इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे एक्ट से स्टैब्लिश करा जिस वजह से आज हम लुकअप करते हैं उनको, इन सारी पर्सनालिटीज को इनफैक्ट, और हम इनके इम्पैक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर पा रहे हैं. एंड यू नो द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस एक्टिविटी, आई होप वी हैड टिल रूम 4 ओनली, 5 तो नहीं था ना ब्रेकआउट रूम? तन्वी 5 is also there? 6 is also there. Okay, sorry, I missed that. I thought we had 4. So can we proceed with room number 5? Which personality they took? I'm really curious to know that. Who were the participants in room 5? मोहन सर, आप कौन से रूम में थे? Ma'am, room 5 had just Dr. Suresh, so not everyone was able to join that room. You can ask room 6 then. Okay. Yeah. So room 6. Yeah, good morning, Dipali ma'am. Good morning, sir. This is Bipin. In room number 6, we were 4.
Sanjay Mishra, Uday, Maheshwar, and myself. Okay. And we have selected our contemporary leader, present leader, Prime Minister Modi. Okay. And although there are a list of traits or leadership qualities which can be taken from him, but few important is, first I would like to start with, he is a great communicator, a purposeful communicator. And by his communication only, he is affecting or motivating each section of the society, be it poor, middle class, rich, businessman, students, or everybody. This time, I was astonished to see that 18 lakhs students and their parents joined him for Pariksha Pe Charcha. It seems very unimaginable, but it is happening. Again, his foresightedness for the different programs or different achievements he want to make. Last year, he has been setting goals for himself, and every time he is setting priorities. I have to do this first. This is the second. And according to the priority, he is acting very confidently. With the confidence and decisiveness, he is achieving or getting whatever he is thinking to be the requirement of the nation. And again, last but not the least, I would like to say that he is also adhering to the ethics. So these are points. My other colleagues may like to add some other traits. Very nicely briefed up, Vipin sir. That's really true, and the kind of impact that he's creating, and that to leading a nation with so much of diversity, so much of vividness, and having so many people who are also against him, who do not hesitate in talking anything about the prime minister. Still, he's undeterred by such forces, and he just keeps marching on his own path, which he have set for himself and for the country, undoubtedly on ethical grounds. That, as you said, that's true. Good morning, ma'am. Good morning, sir. I'm Maheshwar Prasad from room number 6. Okay. I want to say something about our Prime Minister Narendra Modi. The first is he has charismatic personality. We were living in the era when we thought that now the one-party government is gone and we will live only in a coalition government. But he is having such a charismatic personality that he brought one party in majority. So this is his first achievement. The second one is he is very patriot. He always think of India, how India can develop, and he is untiring also. He is working without taking any leave, any off, and always working for the nation only. Another one is he is very courageous and risk taker. So many issues were pending for the last so many times. The one is 3 talaq. The second one is abrogation of Article 370. Yes. Another one is construction of Ram Mandir. There are so many issues which were sorted out by him without taking care of what people will think of him. Yes. And another one is his honest of fighter. He is at the top of the nation. He is very at the position of very powerful prime minister. But when we see about his family, they are living as usual. So he has so many qualities. So I like my prime minister, Sri Narendra Modi. Thank you so much, Maheshwar. That was Good. very. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I'm Sanjay Mishra from room number 6. Okay, sir. I want to add on as Maheshwar has said
there are n number of merits. One is he's a good orator, very soft spoken, humble, and visionary. Visionary means the personality shown in your slide. All were visionary people, but the visionary होना और उसको execute करना, he has done. The Modi has Narendra Modi has done the vision of all personality shown in the slide, ma'am, and he is taking our India to a new great height, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sanjay Kumar Mishra. मैं घनश्याम दास। हाँ जी, मैं इनके बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अब मैं बीएसएफ से संबंधित बात बोलूंगा। जब ये गुजरात के सीएम थे तो हमारे बीएसएफ कैंपस में इंटर फ्रंटियर गेम हुआ, तो ये एज ए चीफ गेस्ट बन के आए। तो बीएसएफ की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बीएसएफ ने बोला कि जो बीएसएफ ने लैंड मुझसे मांगी है मैंने उनको पूरी दे दी गई है, उनकी रजिस्ट्री करवा दी गई है। नंबर 2, हाँ, ये रन का जो इलाका लगता है, राजस्थान में रन का इलाका लगता है बॉर्डर का, वहाँ पे हमारी पानी की डिमांड थी। उसने CPWD को बोल के हर हमारी BOP पे पानी पहुंचवाया। ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े काम थोड़े से भारी पड़ जाते हैं, वो समझ में नहीं आते। जो हमारी जोट की चीजें थी, सही बात, उन्होंने नाराबेट के इधर ही नंदरेश्वरी माता का मंदिर है, अभी जस्ट जो वाघा में परेड होती है, जैसी बटारी में परेड होती है, उसी तरह की परेड वहाँ उस लोकेशन में करवाई, बॉर्डर इलाके में, ताकि BSF का एक नाम हो सके। और हमारा काम था कि लैंड मिलना, आसानी से लैंड मिल गई। पानी हमारे जवानों के लिए बॉर्डर पे जाना, वो मिल गया। CPWD के क्वार्टर, हमारे पास क्वार्टर कम थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, CPWD के ये इतने क्वार्टर हैं, आप BSF वाले ले सकते हो। आज तक भी हमारे कैंपस के क्वार्टर बनने के बाद भी हमारे पास है गांधीनगर। तो ये एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ जो हमारे BSF के जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए है। ये चीज सभी जानते हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। वही सर कि एक नॉर्मल कॉमन लाइव्स को जो उन्होंने टच करा है अपनी पॉलिसीज और फिलॉसफी से, मतलब एक वाकई में इनके एक्सपेरिमेंट्स इतने डेयरिंग थे और उन्होंने कभी ये परवाह नहीं करी कि मेरा क्या इमेज रहेगा, अगली बार मैं जीत के आऊंगा भी या नहीं। तो वो तो कहीं इनके रहता भी नहीं है। लाइक डीमोनेटाइजेशन वाज समथिंग जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, और कितने मेजर जो पार्टी वाले लोग थे वो लोग इम्पैक्ट हुए। तो इट वाज समथिंग रियली वेरी डेयरिंग व्हिच पीपल कैन नॉट डू एट दिस लेवल। तो वाकई में इनका बहुत नाम हमेशा याद रखा जाएगा, और हर चीज जो वो करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। एंड एज योर ग्रुप मेंबर टोल्ड कि ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं, इन्होंने हर एज ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करा है। तो यही नहीं सर, आउटसाइड दी वर्ल्ड जहाँ पे भी अब्रॉड जाते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं, जिस तरह से इनका स्वागत होता है, पुराने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से वेलकम नहीं हुआ, जिस तरह से जनता उमड़ती है इनको देखने के लिए, इनसे बात करने के लिए। इट इज रियली वेरी प्रेस्टिजियस और बहुत प्राउड मोमेंट होता है। हम सब भी टीवी में वो चीज देख रहे होते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट वहां है। तो इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में मैं सच कहूँ तो बच्चों को भी इंटरेस्ट अब, या और लोगों को इंटरेस्ट भी इसलिए आने लग गया बिकॉज बहुत ज्यादा मोमेंटुअस चेंज आ रहे हैं विच आर गुड एंड बेनिफिटिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दैट्स ट्रू। तो I hope I have covered all the rooms. 6th room, last. Just one thing I would like to add here. Yes, surely, sir. Please go ahead. Who would have thought about Article 370? Yes. Only personality like our Honorable PM, Prime Minister ji, could do that. True. Without thinking of any repercussions, and everything went on smoothly. Yes. It showed that the will of the government is supreme. It is If it has decided to do anything, it will be done. And there is no authority on this earth who can challenge the government. True, sir. पर सर इंटरनल फोर्सेस भी इतने कंट्रोल में रखे कि वो स्मूथली शायद नहीं हो सकता था। And even today, we forget about Kashmir. We are taking claim on Pak occupied Kashmir. Yes. It is integral part of India. True, so sir. that's how the even diplomatically also things are being handled in such a magnificent manner. Very true. That today at international forum we have different standing and different support altogether. Yes. मैम एक लास्ट पॉइंट ऑन लाइफ साइड। अभी एक कहावत है, एक कहावत है कि
आप अगर अपनी बीबी के चंगुल के अलावा कहीं भी फंसे हो, मोदी आपको बचा के लाएंगे। जो दूसरे देशों से बचा के लाते हैं। Ma'am, the positive impact, I just want to add one thing if we had got the time. Yes, sir. Ma'am, his impact in the generation is quite visible now. Since 9 years, I'm finding the generation change impact of Mr. Modi on the new generation. Say 9 years back, my kids were very young, and they had the impact due to his personality of Swachhta Abhiyan. आज के डेट में वो कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकते। हमारी आदतें अब उनको देख के सुधर रही है, बट दैट इज अ जनरेशन चेंज मैम। Yes. And a person of that age can bring change in this generation. तो वो तो हमारी नहीं सुनते हैं सर घर पे, तो सोचो आप कि मतलब कितना इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट रहा होगा। बिगर क्लीनलीनेस का इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ जो विजिबल है। If they go anywhere, they don't throw any wrapper outside the vehicle. They just carry their trash with them and only disposed of at the designated place. And it is a very big impact. Big impact because वहाँ पे सर हैबिट चेंज है। हैबिट में चेंज लाना is something really great. So मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम ये लास्ट ग्रुप है। जी सर। तो मैंने जो है चुना है धीरूभाई अंबानी। ओके ओके सर। तो जहां तक इम्पैक्ट की बात है मैम, इम्पैक्ट तो इंडिविजुअल तो कैसे जो है इम्पैक्ट के जो है सेट करेगा वो, कि हमें इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर डालना है, इंडिविजुअल के ऊपर डालना है या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालना है या कौन सी सोसाइटी है जिसके ऊपर उसको इम्पैक्ट डालना है, उसके हिसाब से उसको चेंज करना होगा। जबकि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। व्यक्ति की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, एक उसका एनवायरनमेंट होता है, उसका एक सोशल जो है उसका एक गैम्बेट होता है जिसमें वो पला और बड़ा होता है। तो वो सारी चीजें लेकर के वो जो है अपने संस्कार डेवलप करता है उसी हिसाब से। इम्पैक्ट के लिए जो है इम्पैक्ट डालने के लिए ही पर्सनालिटी को चेंज करे व्यक्ति, इट इज नॉट पॉसिबल और होना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज वो जो है अपने मेन पर्सनालिटी से गुम हो जाएगा जो उसकी पर्सनालिटी है। तो प्रमोद जी इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ा? उसी पे आ रहे हैं। तो मेरा जो है पर्सनालिटी है मिस्टर धीरूभाई अंबानी। तो ये ग्रास रूट से इन्होंने शुरू किया अपना काम, जैसे सभी जानते हैं। इन्होंने टीचर भी किया है और पार्ट जॉब में इन्होंने इवन सर आपकी वॉइस उन्होंने इवन जो है जॉब के तौर पे तो इनका हो रहा है, कितना बड़ा पड़ रहा है। जो हमारे आज जो यूथ है जो जॉब सीकर इनका बने हुए हैं, हर जगह उनको जॉब ही चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि जॉब के लिए, ओनली जॉब के लिए, तो जॉब क्रिएटर कैसे बना जाए उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी जनरेशन में, अपनी एज में उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। जो इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया हो एक जनरेशन में। सही बात। तो मैम ये जो है बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिनका इफेक्ट जो है आज भी प्रेन्योरशिप की तरफ जो है ले जाता है, प्रेन्योरशिप की तरफ। मतलब लोग जो है जाते हैं इंडस्ट्री जो है दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, अंबानी है, फलाना ढकाना है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये जो है पूंजीवादी है। इस मानसिकता से जो है यदि निकलना है तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल भी हैं। ये जिस हिसाब से आज की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया में उन्होंने कितने जो है उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं कि आइए और अपना जो है प्रेन्योरशिप बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो उन सबके लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन था आपका भी। और बाकी लोग भी हैं इस रूम में आपके साथ? मेरे साथ मैं अकेले ही हूँ अभी फिलहाल, मैं जो है ग्रुप बन नहीं पाया था। ओके तो सर, मैं उसके बाद भी आपने अकेला मेंबर हूँ। बढ़िया आपने वन आर भी काफी है यार।
और देखिए इनका इम्पैक्ट जो है इन्होंने आगे की जनरेशंस तक छोड़ा है, जो एम्पायर बिल्डअप करा। बिल्कुल सही बात है कि बहुत लोगों के लिए रोजगार का एक साधन बनाया इन्होंने। और प्लस सर सही कह रहे हैं आप, वो लाइन बहुत रेलेवेंट है कि एक ही जनरेशन में इतना बड़ा स्टैब्लिश कर देना, जहां आप मतलब एक स्कूल टीचर, आप पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, वहां से उस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और आज का जो जियो वाला रेवोल्यूशन है, चाहे इनके बेटे की वजह से हो, बट फाउंडेशन तो वहीं से स्टार्ट हो गई। मैम एक चीज और जोड़ूंगा, ये फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन दूसरे को देख करके, उसके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं वो, कि आप यदि कर्म करते हैं तो आप जो है अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। आप यदि मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो आप भी बहुत बड़े जो है एम्पायर के मालिक हो सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो यूथ है वो दूसरे के जो है बिना मेहनत के सब कुछ करना चाहती है, बिना मेहनत के जो है साम्राज्य स्थापित करना चाहती है, और वो फिर गलत रास्ते से जाना स्वीकार करते हैं, शॉर्टकट जाना चाहते हैं। लेकिन इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? इससे बड़ा भी शॉर्टकट नहीं हो सकता है कि एक जनरेशन में कोई साम्राज्य जो है राजा बन जाए सीधा अपने अपने जो है कर्म से। इसी तरह से अंबानी का भी है। अंबानी भी एक सिंपल जो है घर से थे, मिस्टर अदानी। अदानी का इतिहास भी हमारे एरिया से ही शुरू हुआ है उनका। जहाँ पे मेरा डिप्लॉयमेंट है अभी, एक क्राड जो है छोटी सी जगह है, वहां से उन्होंने काम स्टार्ट किया था। आज देखिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जो हमें यूथ को समझना चाहिए कि वो जो है फ्रस्ट्रेशन की तरफ ना जाए, वो जो है अगेंस्ट द एस्टेब्लिश ना जाए। आप इस तरह भी जो है अपने आप को, यदि आपके अंदर काबिलियत है, आप यदि मादा रखते हैं काम करने की, तो आप बढ़ सकते हैं। सही बात है सर। और आज का जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो तो और फैसिलिटेटिंग है। जिस समय इन्होंने अपनी जर्नी तय करी तब इतना कुछ नहीं हुआ करता था। तो वेरी ट्रू, बहुत राइटली आपने सेलेक्ट करी अपनी पर्सनालिटी। इनफैक्ट सारे ग्रुप्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि द वे दे हैव समराइज्ड द इम्पैक्ट दीज पर्सनालिटी हैव क्रिएटेड ऑन अस एंड ऑन द सोसाइटी वाज रियली ग्रेट। और पर्पस इस पूरी एक्टिविटी और एक्सरसाइज का ये था कि हम ऑन आवर इंडिविजुअल लेवल ये स्टडी करना चाहते हैं कि हम कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट वो करने से पहले एक बार हम ये देख रहे हैं कि औरों का इम्पैक्ट हम पे क्या रहा। नाउ इफ वी हैव दीज एग्जांपल सेट इनटू आवर लाइफ कि हाँ भाई इन पर्सनालिटी ने हमारी लाइफ पे ये इम्पैक्ट करा, नाउ कैन वी जस्ट ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड टर्न द टेबल्स बाय आस्किंग दैट व्हाट इम्पैक्ट वुड वी लाइक टू हैव ऑन बेस्ड ऑन आवर पर्सनालिटी ऑन अदर्स। तो उसके बारे में हम अब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे। सो सिमिलरली जैसा हमने कहा कि इन सब पर्सनालिटी का इम्पैक्ट रहा, उसी तरह आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन बीएसएफ विच इज प्राउड ऑफ द नेशन, उसका भी अपना खुद का एक विजन है। और वो विजन बेसिकली एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना इन टर्म्स ऑफ गार्डिंग द बॉर्डर्स एंड मेकिंग द कंट्री सेफ एंड सिक्योर। और आपका मोटो है ड्यूटी ऑन टू डेथ। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली वेरी पायस, क्योंकि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो पूरी तरह देश के लिए, वो पूरी तरह नेशन के लिए। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ courage and lot of internal strength कि आप इस विजन के साथ एसोसिएट हो पाए, right? And now because you have been serving into this prestigious organization for years together, तो आप लोगों का भी विजन बहुत ज्यादा उसी से aligned है, उसी से mold up है। तो वही आपकी personality traits में भी reflect करता है। And I should say कि चाहे हमने वो फोटोज की बात करी, वो लेजेंडरी, sorry to interrupt you. Yes, sir, please. The motto of BSF should be written Jeevan Paryat Kartabya in Hindi also. Basically, duty unto death. This was a some sort of negativity it was showing. So it has been removed from the motto. Both in Hindi and English, it should be Jeevan Paryat Kartabya. Well, it has been done away with now. The English version has been done away with now. Yes. It is on Jeevan Paryat Kartabya now. जी सर, well taken sir. We'll rectify that. Apologies for this. So now let's talk about we as an individual, हम कितना impact create करना चाहते हैं सोसाइटी पे, what is into our mind, क्या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ हो, एक पर्पसफुल लाइफ हो, और हम
हमारे जाने के बाद लोग हमें कैसे हमें याद रखें और किस तरह का इम्पैक्ट हम छोड़ के जा सकते हैं लोगों पे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट, ऑब्वियसली हम सब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ही चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लोग हमें एक लुकअप करके देखें, जो भी काम हमने हमारी लाइफ पर्यंत करा है। नाउ व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट? अब आप अगर आप चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पाए लोगों पे, तो आई एम श्योर इट इज नॉट एन ईजी टास्क। उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। So can you just come up with some issues which are created or which create difficulty in creating an impact? First, let's talk about आप लोग किस तरह के impact के लिए look up करते हैं? आप क्या impact चाहते हैं कि आपकी life लोगों के ऊपर एक impact छोड़ के जाए? Maybe on the battalion that you are leading, maybe the people who are under you, maybe your family members also, your kids. So any submissions from your side, what comes to your mind about creating impact on your, yes. As a leader of the battalion, as a boss also, whatever we do, because all eyes are upon commandant, the subordinates also and the seniors also, because commandant is the cutting edge in the hierarchy, and because battalion is the only unit, one unit which is executing on ground. So manpower is controlled by commandant. So he is the feeder for all the manpower requirements at higher headquarters also. So whatever he is doing, that is making an impact. Yes. Because every activity is being watched either by subordinates as well as by higher officers. So that is why anything, as Mr. T. Mohan said, whether negative or positive, that will have an impact on the battalion function. Sir, impact आप create करना चाहते हैं, वो whatever impact, maybe you want to teach them that you need to be compassionate, and you need to abide by the principles of BSF, whatever impact. तो अब उस impact को translate करने में, do you find certain difficulties, certain problems? Yesterday also we were discussing, and I just that time also stated, even if I am successful in bringing home my point to 50% of the troops also, I think I have done my job. Because difference of opinion will be there. There will be many impediments. The very first impediment will be people don't want to come out of comfort zone, because every commandant will try to do his best. Of course, a style of functioning matters, and it will always be there. Difference of opinion also will be there, and it has to be there for development. Otherwise, there won't be any development. But at the same time, one must know that ultimately, if it is, because battalion is one man show, it is the commandant who is responsible, whether it is good or bad. Everything is being done in his name. First sentence in the situation report is name of commandant. So if we see that, then, and secondly, whatever vision you give or whatever impact you are trying to make, because small things impact at a large spectrum, make big impact. So the first impediment is difference of opinion. Secondly is the mental makeup also. Yes. Because caliber, certainly everybody will not be on the same platform or having different capabilities. True, true. So you have to go along with everyone. Yes. You have to take everyone along with. अच्छा मैं कुछ ऐड करूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। Is it possible कि जो है इसको स्विच ऑफ कर दो, सेट ऑफ डायरेक्शन में लिया जा सकता है? वो बस जो सेट ऑफ डायरेक्शन है या हमारा सेट ऑफ द गोल है, उसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है इम्पैक्ट? बिल्कुल सर, अटेनमेंट तो हमें गोल का ही करना है एट द एंड। जब अभी हम इम्पैक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस की बात करेंगे, अभी किसी ऐसी पर्सनालिटी को, किसी भी एक पर्सनालिटी का आप नाम ले लीजिए जिसकी एक्सेप्टेंसी 100% हो, एक्सेप्टेंसी जिसकी 100% हो, मतलब इम्पैक्ट किसको बोलेंगे? मतलब कितने % को हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा हुआ है?
उसकी आप देखेंगे कि कुछ सर्टेन ग्रुप को उसके ऊपर जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और सर्टेन ग्रुप जो है उसका डेडली अगेंस्ट है। तो हम कैसे मानेंगे कि जो है इसका जो है जो डायरेक्शन है या इसने काम किए हैं वो अच्छे डायरेक्शन में किए, अच्छे किए हुए हैं, क्योंकि सेम सोसाइटी में उसके जो है उसका विरोध करने वाले भी हैं, कोई अपनी इच्छा करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी जब जैसे मान लो हमारी यूनिट है, यूनिट में कुछ भी आप जो है अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए हमने अपना इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट अच्छा बनाने के लिए कोई अच्छा काम किया, तो उसमें कुछ जो है विरोधी भी होंगे, नजरिए से देखा जाएगा। नेचुरल है, व्यक्ति की अपनी सोच है, व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी पर्सनालिटी के ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए, उसकी डुप्लीसिटी नहीं रहना चाहिए पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी जो है क्लाइमेट और गिगिट की तरह वो चेंज हो जाए, क्रिकेट नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। सर पर्सनालिटी चेंज करके बहुत दिन तक कोई रह भी नहीं पाएगा, तो वो बात सही है। आपने कहा इम्पैक्ट के दोनों जो उसके सिद्धांत जो है अपने होना चाहिए, उसके सिद्धांत धर्म के अनुसार होना चाहिए, उसके कर्म जो है धर्म के अनुसार होना चाहिए, तो स्वाभाविक है वो क्यों इतना कंप्रोमाइज करेगा, पर्सनालिटी को चेंज करता रहा इम्पैक्ट डालने के लिए। नहीं सर, इम्पैक्ट डालने के लिए पर्सनालिटी चेंज करने का रेकमेंड किसी ने नहीं करा। और ही कोई ऐसी पर्सनालिटी है, मैं लास्ट और बोलूंगा मैं, basic traits will not change. सर आप अभी जो हमने सारे पॉपुलर फेसेस की बात करी, चाहे नरेंद्र मोदी जी या अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी नहीं चेंज करी। नहीं मैम, पर इम्पैक्ट के दोनों कॉइन्स होंगे, कॉइन्स के दोनों साइड अच्छी बात नहीं है। आई डोंट एग्री। पर्सनालिटी उन्होंने बार बार चेंज करी है, बार बार चेंज करी है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, इट्स टाइम फॉर ब्रेक मैम। आप देखिए मोदी जी का नारा था जब वो टाइम फॉर ब्रेक, सबका साथ सबका विकास लेके आए थे, फिर उन्होंने अपने सिद्धांत चेंज किए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, फिर उन्होंने चेंज किया। अरे आपको इलेक्शन लड़ना है क्या भाई? या अपना बात कर रहा है। टाइम फॉर ब्रेक मैम, इट्स टाइम फॉर ब्रेक। So I think the discussion is getting very heated up, so yes, we require a break. So Tanvi, can we for a break, and how long can we? Yes, Dipali ma'am. Yes. Yeah. I think we can have a small coffee break and tea break right now. You know, take a breather for 10 minutes. 15 minutes. 10 minutes. Sir, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Yeah, so we can all be back. Yeah, at 11:56. 10:56. Yeah. 10:56. Okay. Yes. Thank you very much. Thank you. So. PK, control your emotions. सर चाय पियो सर, बढ़िया से सर, चाय पियेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी बात रखो, इम्पोज करने की कोशिश मत करो भाई। सही की जो बीमारी होती है ना कि सब कुछ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, इसको कंट्रोल करो, अपनी बात रखो, नो डाउट। बट फिजिकल वाले में अपना अलग ही मजा है सर। साथ में समोसे खाने का मौका मिलता है ना। एग्जैक्टली सर, समोसे, जलेबी, और फिर सबसे बड़ी बात है एकेडमी के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट देखने में अपना अलग एक लर्निंग। वेलकम बैक एवरीवन। Ashwini sir, I completely agree with your thought, and we have been trying this in 6 batches. We have been trying to ask BSF that we would love to invite you to our campus for an offline thing, and actually हमें भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप सबको एक सजेशन देता हूँ। हाँ जी। We are missing MIT like anything. अच्छा सर। रीजन भी, अभी हम उसी जगह बैठे हैं जहाँ पे हम पोस्टेड हैं। हाँ जी। और you had created a world class facility. I had been to MIT, Noida. Okay, sir. Okay. It's a world class facility. Okay. And what we are deprived of the experience of being in that infrastructure. I suggest one thing. You can also contact with that
BSF Training Directorate. Mhm. This group should be a 2-day visit or 1-day visit should be organized at your campus, particularly those groups who has done on online courses. Right. That's a good idea. Or whatever activities you are doing over there, it is not only BSF CLM DP course. You are running various other courses also. Correct. If we Yes. stay in Amity, we had the interaction with the younger generations also, with the Hmm. senior peoples also. That's beyond the course scope. Yes. Yes. Absolutely, sir. That is missing. Madam, who Absolutely, is sir. the, I would. Madam, who is the Vice Chancellor of the MT University here? Sir, Dr. Balwinder Shukla. She's the Vice Chancellor in Amity, Noida. Dr. Balwinder Shukla. Yeah. मैम ये जो है ना एमिटी हाँ जी वन थिंग कैन बी डन कि आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बट एक बहुत बड़ी चीज जो सामने हमारे दिमाग में आती है कि शायद ड्यू टू फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इट इज बीइंग डन ऑनलाइन तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो है चर्चा करके इट शुड बी प्रेशर शुड बी माउंटेड ऑन बीएसएफ आल्सो said this course should be done offline mode. Sir, of course, we'll again talk to the BSF director and we can also try for Ashwini sir suggestion कि 1 day का आप सबका एक visit तो मतलब हम pitch in कर ही सकते हैं. So I will definitely talk to my CRT team also, client relations team. We'll ask to pitch in to the BSF director. So Thank you for the suggestion. Thank you. These kind of management courses has Yes, a component of tours, which has got its own impacts. Yes. So I had done many courses, many management courses also, in which they organize a week-long tour or 3-day tour, and in which they take you to different places. And by seeing those different places, you had come to know different kind of ideas, which always remains in the back of your mind. And as this is an advanced leadership course, and we have to make the decision, those ideas can be implemented wherever you are posted in different capacities. That is missing is this online thing. Definitely, sir. We absolutely agree with you. Let's take this idea forward with the team. For now, I would pass the baton to Dr. Dipali. To continue the session, we have 1 odd hour of the session left and a lot of interesting things. Over to you, Dr. Dipali. Thank you so much, Tanvi. So thank you. As we've resumed right after the break, so again we are able to charge up a little more. And I left on a note of a heated discussion. So continuing with creating impact, let me share my PPT with you. Yeah, so we were talking about, initially we talked about the impact these famous personalities have created on us. Then we tried introspecting our own self, that how can we create impact on others? And then we tried discovering what are the difficulties which come in the way while we are creating impact that we want to make. So based on that, we have a philosophy of 2 circles, which are called circles of influence and circle of concern. Now, this is something really very interesting. The circle of influence is actually very much governed by an individual himself. It remains very much under the control of an individual, whereas the circle of concern do not remain under your control. It's beyond your control, right? So now these 2 circles, to a great extent, creates a lot of impact in or hurdle or whatever you can say in the way of creating impact on others, right? So let me just define that with an example. What are these 2 circles? Like if I talk about circle of influence, so your attitude is very much into your hands. Your own health is into your hands. You have a very good control of what you buy. I mean, what all opinions do you agree to? Your behavior on others is also governed by your own self. Then the kind of literature that you read, the kind of things that you watch, which create an impact on your mind, that is also under your influence. You choose on those things, your sleep patterns, then the people whom you are surrounded with, that is also governed by your own choice, because a man is known by the company he keeps.
So all these things are come under the purview of circle of influence. So every individual has his own circle of influence. Then there is an outer circle, because you can see these two concentric circles. The outer circle is circle of concern, which to a great extent is not into our hand, like any natural disaster, or maybe the weather conditions, the political issues that are cropping up, war that have outbursted all of a sudden, social media feeds, the likes and share that happen, the comments that you receive, our economy, how other people behave with us, that too is not into our control. They are beyond our control. So that's why that comes under the purview of circle of concern, right? Now, can you establish any connect between the two? Do you all agree with this fact that the circle of influence is completely under your control? It's based on your choice. You all agree to that? Give me a thumbs up if that is so. मैम इसमें एक पॉइंट है जी सर. स्लीप जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके. स्पेशली बीएसएफ पार्लियामेंट्स में, क्योंकि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा. अचानक कल का इंसिडेंट था अजय सर का, कि एक इंसिडेंट हो गया था, पूरे दिन उधर उसमें लगे रहे. यहाँ रात में कुछ हो जाएगा, 4 घंटे 6 घंटे हम उसमें लगे रहेंगे. राइट सर, लेकिन जब आप सोए, मतलब जब आपको मिलता है टाइम, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ही नहीं मिलता मैम. और सर वो सबसे बड़ा कंसर्न है कि टाइम नहीं मिलता है. यस, जो स्लीप के टाइम को इम्पैक्ट कर रहा है, अगेन वो बाहर वाले सर्कल में आ रहा है सर, सर्कल ऑफ कंसर्न में आ रहा है, कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या कुछ ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से योर इंटरनल इन्फ्लुएंस सर्कल इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं. सो डू यू ऑल अग्री कि जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमारे कंट्रोल में है? दैट इज व्हाट वी बाय अ थॉट ऑन दिस, ऑल ऑफ यू. नाउ टेल मी, क्या सर्कल इसमें पॉइंट और है, स्लीप से ही रिलेटेड है हेल्थ. ओके. हेल्थ, ये दो जो है एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं. बिल्कुल सर, लेकिन हेल्थ बहुत सारे और फैक्टर से भी गवर्न्ड होती है सर, द वे यू ईट. ये मेजर फैक्टर है कि अगर साउंड स्लीप नहीं मिलेगा तो बहुत मेजर फैक्टर है सर. लेकिन अगर हम कहें कि हम वॉर फ्रंट पे हैं, वहां हमें कुछ खाने को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, मतलब दैट कैन बी अनदर फैक्टर. देन अगेन आई वुड से कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल अनगवर्न्ड सर्कल. तो इन सब का इम्पैक्ट आता है हमारे इस इनर सर्कल. Yes, exactly, ma'am. This circle of influence always or somehow governed by external factors, many factors. So one cannot say that all. आप बुलाना जरा, रुक जाओ. And to interrelate these two circles, ma'am, one time is one of the constraints which generally don't depend. It's one of the factors, time, durations. So commanders thinks that within a very short time that some task should be achieved, but one time is also the time to understand each other, because until or unless frequency matches, and to match the frequencies also time is one of the factors. Then the end means the person at the end point, he must also wanted to see the result. So he also to understand that whatever. Good morning, ma'am. By and large, the circle of influence, we are in control. Dipali ma'am, please unmute yourself. You are on mute. Okay, I'm so sorry. So, was I on mute throughout? Okay. Yes, So now sorry. okay. So, by and large, we can control our circle of influence, except, as Mr. Ashok has said, due to our operational scenario, our nature of duties are such that sometimes we are not able to sleep properly, and that impacts our health also. True, sir. Secondly, the factor is another factor who you surround yourself with. In an organization like force, like BSF, you have been given a certain set of people, those who are posted in the battalion or a certain formation. So you cannot change your surrounding people
And in that way, you cannot change the people who you surround yourself with. My point यहाँ was पे this. surround yourself with का literal meaning सिर्फ यही नहीं है सर कि the people who are exactly around you, बल्कि ये वो है कि like there are people जिनकी opinion हम सुनना चाहेंगे सर. Yeah, वो दूर that I में बैठा understand. हुआ हमारा दोस्ती होगा जिसपे हमें विश्वास होगा. We'll call up that person and say कि ये situation हो गई. What do you say? क्या कर? तो there are set of people जिनसे हम opinion लेना चाहेंगे जो हमारे मतलब हर पेन में हमारे साथ होते हैं. या Yeah. maybe the kind of literature that you are reading, ये सारी Right. चीजें हमारा एक internal हमारा जो intellectual capital है जो हमारा बढ़ा पाए उन लोगों की बात यहाँ हो रही है. For example, yes, I agree with you. For example, whom to follow on the social media, on Twitter or Yes, on that is LinkedIn. under our control. True, That sir. is our under control. True, So, true, sir. तो ये दोनों जो सर्कल्स है ना सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनको डिफाइन करके इनके अंदर इंटर रिलेशनशिप निकाली. और अभी तक जो हमने रिलेशनशिप निकाली वहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो सर्कल ऑफ कंसर्न के फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई वॉर आउटब्रेक हो गया, उस वजह से आपकी स्लीप डिसऑर्डर हुआ, स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि सर्कल ऑफ कंसर्न के फैक्टर्स की वजह से आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. नाउ कैन इट बी वाइस वर्सा? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के फैक्टर्स की वजह से आपका सर्कल ऑफ कंसर्न इम्पैक्ट, बिकॉज दैट इज वेयर द इम्पैक्ट विल कम, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, राइट? सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, राइट? maybe an example could be कि there's a factor like how my boss looks up at me. वो मुझे कैसे कंसिडर करते हैं, what kind of an employee I am. Now that is not into my control. तो वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न में आ जाएगा. बट एग्जैक्टली क्या सच में वो मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्या मेरे पास कोई ऐसी क्या मेरा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जिसकी वजह से वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न का फैक्टर चेंज हो पाए? If I'm working hard, if I'm putting my all efforts into my task, if I'm achieving things, that is under my circle of influence. So based on my traits, won't my boss will be affected by that? He would also analyze that, yes, this is a person who is like really working hard and putting a lot of effort into the task. So maybe his perception would change based on my inputs. Madam, it's I have to add a point over here. Yes, sir. It is your action and your behavior that will impact others also. True, sir. It is a, what you can say, it's a, maybe it's the lines are blurring here. The circle of influence and concern. Mm-hmm. The economy and what you buy. It is also blurring over here. Yes. Social media feeds and your attitude. Political issues and your attitude. You have a thin margin over here. Maybe we cannot change the weather, natural disaster, but that's others why they are coming in they circle influence of you. And the concern and influence, they impact each other. They impact each other, sir. लेकिन जो foundation होती है वो हमारे circle of influence से ही बनती है. If I'm a person who's very, very rigid to my principles and my philosophy, maybe the family background which I have, the way I have been raised up, मुझे पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे ऐसा नहीं देखना है या मुझे ये चीज नहीं पढ़नी है. That is very much under my control. So I think कि जो foundation आपकी है वो आपकी circle of influence से ही बन रही है. और जो circle of concern है वो impact करता है आप पे. But to what extent it will be impacting you, that is completely decided by you as a whole. कि आप कितना impact उसका आने दे रहे हैं अपने ऊपर, है ना? बच्चे हैं जब hostel में जाते हैं, because I'm sure your kids must be big enough जो अपनी पढ़ाइयों के लिए hostel गए होंगे या फिर अपनी job करने के लिए abroad या कहीं पे भी गए होंगे. तो in that case, at times parents are very confident कि हाँ इसको बाहर भेज सकते हैं क्योंकि इसमें कोई bad habit नहीं है and he is very strong on his personality, on his traits कि ये कभी भी deter नहीं होगा बाहर के distractions देख के, right? तो you have that trust क्योंकि वो inbuilt है सर. तो अब आप कैसे भी situations में उसको ला दो वो कभी भी change नहीं होना, काफी हद तक change नहीं होना.
राइट? सो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज टू सर्कल्स इज क्योंकि हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट क्रिएट करने की. सो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय यू ऑन अदर्स डिपेंड्स ऑन दीज टू सर्कल. और इन सर्कल को इंक्रीज और डिक्रीज करना भी हमारे हाथ में होता है. नाउ हाउ डज दैट हैपन? सर, अगर हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर देते हैं किसी तरह से, तो सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा हो जाता है और उस वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ creating an impact increases. And how does that happen? Let me browse you through the next slide. See, we have two type of approaches, proactive and reactive approach. हमेशा सर proactive approach is much better than reactive approach, क्योंकि proactive approach में आप future को लेके prognosticate कर रहे हो चीजों का, and you are being well prepared in advance about your reaction or how you are going to what course of action you are going to take into a particular situation. So for example, in your situation it might be कि आपको कुछ activities दिखाई दे रही हैं border पे, and you can sense out कि कुछ nuisance create होने वाला है. As such war नहीं होगा, लेकिन हाँ, they are up to something, right? So that will be coming under your circle of concern, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, right? Now if you are enlarging your circle of influence by being proactive, by sensing things in advance and taking some proactive measures, कि आपने deploy कर दिया उधर teams को, या फिर आपने थोड़ा सा sensitize कर दिया लोगों को, या फिर आपने अपना रेकी वहाँ पे ज्यादा बढ़ा दी, so that you can get to know about each and every movement that is happening. तो आपका circle of influence इस वजह से बढ़ा हुआ है, and that is why you were able to shrink the circle of concern, and you got a better control over the situation because you were proactive enough. So this is what creates an impact. It creates more of impact on others if you are able to enhance your circle of influence by reducing your circle of concern, which is also a proactive approach, wherein you are enlarging your positive energy. And on the other side, I think somebody wants to submit something. कोई कुछ submit करना चाहते हैं? Okay, so on the other side, if I say कि हमारा जो circle of concern, जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं reactive focus का, वहां पे हमारा circle of influence shrink हो रहा है, just because of the reason कि हमारा जो circle of concern है वो overpower कर रहा है हमारे circle of influence पे, right? तो आपको पता चला ये situation है, and then you are more worried about it, you are creating a panic about it, क्योंकि आपका internal जो self है वो बहुत strong नहीं है, and that is why your circle of influence is also shrinking. You are reacting to the situation, you are not proactive about it. Am I clear with this thought? If anybody amongst you would like to share any of the incidents that happened with you, जहाँ पे आपने अपने इन दोनों circle के factors को impact होते हुए देखा है, and if you agree to the thought कि proactive approach always gives you an edge and helps you in creating a better impact, ये तो एक war front वाली situation हुई सर. Otherwise, अगर हम normal life की situation भी लेते हैं और इनमें से कोई भी factor लेते हैं, maybe our attitude, our behavior, I'm sure आपकी इतनी लंबे tenure की जो journey है BSF के साथ, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसे आपके leader आए होंगे या कोई आपके reporting boss रहे होंगे जिनको आप अभी भी बहुत अच्छे से याद करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको उनके बारे में सोच के, and you speak all good words about him, who have created a lot of impact on you in person. तो maybe उनकी attitude की वजह से, maybe उनकी behavior की वजह से, और जिस वजह से आपने देखा कि उनका circle of influence enlarged था, बड़ा था, क्योंकि maybe he had a very positive attitude towards things. Good morning, ma'am. Yes, sir. Please. Regarding the circle of influence, अगर आपका behavior और attitude और positive approach है, तो बहुत सारी चीजें जो मैम जो है according to your approach के हिसाब से होना शुरू हो जाती है. बिल्कुल सर. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बटालियन को एज ए कमांडेंट आपका अप्रोच, बिहेवियर, एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच है, तो बटालियन में डेफिनेटली यू फाइंड द डिफरेंट रिजल्ट समय के साथ. वेरी ट्रू सर. और सर अगर उस बटालियन में रिसोर्सेज भी कम होंगी ना, तो वो लोग क्रिप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको इतना मोटिवेट कर रखा है कि उन्हें अपना गोल बहुत क्लियरली पता है, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट लिमिटेशंस, उसको भी इग्नोर करके वो अपना रास्ता बनाते हैं खुद. एंड वी हैव सीन सच इंसिडेंसेस अ लॉट. मतलब हालांकि हम कोई वॉर फ्रंट के लोग नहीं है सर, बहुत सिंपल एकेडमिशियंस है, लेकिन इंडियन मूवीज बहुत अच्छा डिपिक्शन करती हैं उन सारे इंसिडेंसेस का जो जहाँ फाइट हुई है.
talk about border as a movie, या कोई भी उरी अटैक आपकी बात कर लो, मतलब हर बार we've seen कि कैसे limitations थी, कैसे resources थी, but it was led by a person who was visionary. उसको पता था कि कैसे मुझे जो को हाई करना है अपने मैडम, one more thing I want to add. Yes, लड़ाई मैडम हथियार से नहीं जीती जाती, लड़ाई मैडम डेडिकेशन और आपके जो है विल पावर से जीती जाती। डेडिकेशन विल पावर मैडम आपके पॉजिटिव अप्रोच, बिहेवियर और एटीट्यूड से आता है कि कैसी आपने टीम बनाई है, किस हिसाब की टीम बनाई है, टीम के अंदर आपने कितनी टीम को कितना मोटिवेट किया है। दैट थिंग्स आर प्लेइंग मेजर रोल। ट्रू सर। और इनफैक्ट लड़ाई जीतने का मतलब ही ये होता है सर कि आपने कितना कम से कम डैमेज करके, कितना कम नुकसान करके आपने अपना पर्पस को अटेन कर लिया, दैट इज लड़ाई का जीत। तो इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि दोनों तरफ अगर मरते हैं तो लोग ही मर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन अदरवाइज ऑल्सो। तो बहुत हद तक चीजें ऐसे भी कंट्रोल हो सकती है, जैसे अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो काफी हद तक मतलब व्हेन वी सेड कि उन्होंने आर्टिकल 371 हटाया, हमें पता था इसके रिपरकशंस बहुत हाई हो सकते हैं, बट कुछ ऐसा सरफेस पे नहीं आया, क्योंकि मेंटली लोगों को ट्रेन करके या सोशल मीडिया को कंट्रोल करके, व्हाटएवर द केस माइट हैव बीन, उन्होंने अंदर ही अंदर चीजों को सेटल करा अंडर द कार्पेट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ विनिंग अ बैटल। अब ये भी एक तरह का बैटल ही था सर, जहाँ पे हम लोगों की अप्रोच चेंज कर पाए, उनको एक फ्री डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दे पाए इंडिया में, टू ऑल दीज थिंग्स। यस, इट हैपेंड बिकॉज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाज एनलार्ज्ड, और उसकी वजह से सर्कल ऑफ कंसर्न श्रिंक हो गया। हमें पता है कि रेस्ट ऑफ द इश्यूज विल बी टेकन केयर, क्योंकि हमारा कोर स्ट्रॉन्ग है। वो कोर स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तभी लोग एनर्जाइज्ड होंगे, तभी लोगों को एक चैलेंज मिलेगा which they'll put up all their efforts to attain that challenge. And I can quote an example from my unit. Surely sir, please go ahead. It's regarding circle of influence. Okay. I had informed the troops and kept the data of physical fitness, including their body weights, and what we conduct a physical test, what we call as FPT. Sir, phone kiya tha? I used to keep track of both the dimension. Hello. And regularly we used to monitor their weights, and monthly we used to carry out the physical test. Okay. It was my concern and my circle of influence. True. As a result, the troops had modified their behavior. They themselves used to reduce their diet. Very true. Far from borders, they used to practice their physical fitness. So I definitely think the circle of influence has widened. So I've seen the real example. Very, very well said, Mohan sir. Very nicely you have contributed and related the concept, and I think it must have been taken up well by rest of the group as well. So now let's talk about certain reflections that we were able to come up with the session which we have taken till now, that you need to really think upon, because here we are talking about creating an impact on people. So you need to think upon that currently, where are you focusing? Your majority time and your energy is focused at what thing, right? And that thing will lie in the circle of concern, because that's the core. What I called it as is core. So it is very much under your control, and you just need to focus upon that. Okay, these are the things which I'm doing, which are positive enough thing, which will help me to expand my circle of influence. So you need to introspect upon those major areas where you've been focusing till now. So any area that you have been focusing, जैसे आपने सर health का बताया, मोहन सर ने health का बताया कि now because he was usually into a habit of monitoring the health and diet of people, तो अपने आप उनकी battalion जो है वो बहुत motivated हो गए. They were keen about working out and having a healthy diet. So that led to increasing the circle of influence and shrinking the circle of concern. So that could be a good example over here. Then are you currently being a personally effective as you can in your life? So based on these gestures which you are showing to your team, or whatever example by which you are leading,
Are you able to create that impact into your life? Just try to question yourself. And if you find that no, the impact is still not up to the mark where I could have been otherwise, so you really need to think upon that, what are the areas that you are lacking in. जैसे होता है ना सर, कई बार कई लोगों का मतलब they are very positive about things, they know how things are to be done, but maybe कईयों के साथ attitude problem होती है या behavioral issues होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ चीजों को कन्वे नहीं कर पाते. जैसे अभी किसी ने ग्रुप में कहा था कि अदर साइड ऑफ द टेबल कौन सा पर्सन है, वो कितना रिसेप्टिव है, इस पे भी मैटर करेगा कि चीज कितनी सोक की गई है, कितनी एब्जॉर्ब की गई है, राइट. सो नाउ अदर साइड ऑफ द टेबल जो पर्सन है वो आपकी बात तब सुनेगा जब वो इन्फ्लुएंस होगा आपके बिहेवियर से या आपके एटीट्यूड से. तो एट टाइम्स यू हैव टू प्ले विद different variables, you have to juggle with different variables. Being a leader, you have so many variables to take care of, जिनके साथ बैलेंस बना के आपको लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट बनाना पड़ता है. तो there are different variables and I'm sure you must have witnessed those variables. Can you name few of them? नाम साम दाम दंड भेद. बहुत प्रिसाइसली और बिल्कुल परफेक्टली सर आपने कहा कि ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है. ये सारी बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स. एंड इट डिपेंड्स अपॉन whom you are facing. किसी को गुस्से से बनाना पड़ता है. चैलेंज ये है कि लीडर के पास ये सारे ट्रेड्स होने बहुत जरूरी है. whom you are facing, तो whatever person comes, ये चारों में से कोई ना कोई तो वर्क कर ही जाएगा. But then if a leader is able to create a balance with all these four, तो nothing like it. I think as our organizations, we are very heterogeneous force. By help of training, we just make a homogeneous force. We made it a homogeneous force. But the personal upbringing of the person are very different, very heterogeneous. Some are from south, some are from north, some are from east, and some people, I just quote an example. Say if you deal with a Punjabi person, your language is something which is very harsh to the person who is from the eastern part of India, like UP, Bihar. Am I through or I'm stuck? Yes. Are you getting me? No, yeah, we lost your voice in between, but now it is audible. Now it's okay? Yeah. Till Punjabi person we were okay, and till wala bhi. If you use a particular kind of language with the Punjabi people, they find you that you belongs to them. Yes. If you use the same language with a person from the eastern UP kind of area, बोलेगा क्या बात कर रहे हो, आपने तो मेरा बेइज्जती कर दिया. So as a leader, you should know all kind of traits, sam, dam, adan, bhed, and even the one language cannot be used to motivate the others, make the impact. So same language can have an impact in particular area of people in different ways, and the same language has the impact of different kind, just opposite from the people who belongs to the different society. So this is one of the thing which a single thing can have different impacts also. True. So that's why you always have to have multiple kind of things, and you have all the tools which you can utilize for the making a better impact, or right impact rather. Better impact is what? Right impact. Yes. What does that? मैम हमारे यहाँ ये क्लाइंट थर्ड क्वेश्चन का ही आंसर दे दिया. यस सर. जी सर आप बोलिए. मैम ये सब में एक लाइन में बोलते हैं कि एक डंडा हर जगह नहीं चलता, एक तरह का डंडा हर जगह नहीं चलता. तो सामने वाले को देख करके उसके हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है. सिचुएशन कैसी है और कहाँ का रहने वाला है, क्या डिमांड है. वही सर कह रहे हैं कि हिट्रोजीनियस ट्रूप है. तो आप लोगों ने मेरे थर्ड रिफ्लेक्शन का आंसर एक तरह से दे दिया कि मतलब व्हाट स्ट्रैटेजीज या टूल्स यू यूज टू ट्रांसफॉर्म पीपल इन एंड कंट्रोल पीपल इन योर लाइव्स. तो ये सही बात है. जैसे लैंग्वेज इज वन ऑफ द टूल, उसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे, हर तरह के लेवल पे, मैं वही कह रही हूँ ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं सर जिनको हम जगल करते हैं. दैट इज व्हाट ह्यूमन बिहेवियर इज. उसकी ब्यूटी ये है कि उसमें इतना वेरिएंस है, उसमें इतनी हेट्रोजेनिटी, एज यू हैव राइटली सेड,
that dealing with them at one point of time really becomes difficult, but leader के लिए यही challenge है, and that is what comes in the way of creating an impact. और सर वो एक positive side भी है और उसका negative side भी है, तो मतलब it's both the way, working both the ways. And last of all, you also need to reflect upon that. What can you do today to expand your circle of influence? इसमें आप focus करें सर अपने उन areas को जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब you are lagging behind. Maybe you are a tough task master. आपको काम कराना आता है, आप काम के लिए जैसे हम कहते हैं people oriented person और एक होता है task oriented leader. तो दोनों तरह के leader होते हैं सर और वो हमारी personality के हिसाब से हम बनते हैं. तो though you are all agreeing to the fact कि हमें दोनों का एक midway decide करना पड़ता है, हर तरह के लोगों के हिसाब से approach अलग लेनी पड़ती है, but then also it is very difficult क्योंकि हम तो as a personality individual है ना सर. So I'm sure you must be facing these kind of challenges also, जहाँ पे maybe if you are a task driven person तो आपको सिर्फ A, B, C और D ये 4 steps हैं, ये बताने आते हैं, लेकिन दूसरा बंदा उसी बात को बताएगा ABCD को तो एक अलग तरह के अप्रोच से बताएगा जो कि एक बिहेवियरल ओरिएंटेड पर्सन है या पीपल ओरिएंटेड पर्सन है. अब इन दोनों की बातों की एक्सेप्टेबिलिटी में भी डिफरेंस होगा सर, मतलब लोग उनकी बातों को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें भी डिफरेंस होगा. अश्विनी सर, आई थिंक यू वांट टू मेक अप अ पॉइंट और आपको कुछ आ रहा है दिमाग में, एंड वेरी राइटली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द होल थॉट. प्लीज गो अहेड सर. Task oriented and the people oriented are interrelated things, ma'am. So one should always be a task oriented person with the approach of people oriented. So the task can be very difficult. The main approach to achieve the task, you should be people oriented. You should be preparing your people to perform up to that level so that the difficult task can be achieved. So these two things are not separate things. These two things are very interrelated and very interdependent to each other, ma'am. True. Very well said. You just have to have an output. Ultimately, any organization requires some output from you. End of the day, that counts. End of the day, that counts, for which you are getting your remuneration, monthly remuneration. Whatever you are getting, it is just after the task has been done. And to doing that task, you are assigned some manpower. So you always have to be the people-centric approach, in which you have to train, develop, motivate your troops, focus on troops so that they can perform the task. They cannot be separated things. They are very interrelated and interdependent. That's I just want to know. True, sir. Exactly, ma'am. This Mr. Ashwini said rightly, both are interrelated. Just I am quoting a small example. Just I landed here 1 year back and Rising Nagar location, and there was not a single grass. Then I the men with whom we are working that we should have playground and we should have a good playground. It should be at par with any best stadium in this country. Then we get motivated them, and then small portion we plant, then grass being planted. Then we found that we required a continuous flow of water. So one canal is going by our campus. We take a tap of that from the canal, and we in all alternate 7 days, 1 week, we getting 7 days continuous water from the canal. Then we created another asset. We created 2 ponds. And after creating 2 ponds, then we thought that now we having good enough, so we should have rain gun. So then we have again established rain gun. Nowadays, it is a totally green field, and people are playing 1 football ground, 1 athletics ground, 1 handball ground, and 1 volleyball ground. And all we are enjoying this the ambit and greenery in Rajasthan. So it is a compartmental, and groups must understand that what will at the end what we will get. So that flow of information and understanding each other is very essential. True, sir. And that was the impact which you created, and that impact is going to last for years together, sir. आपकी posting भी वहाँ से चली जाएगी, तो भी जो भी आएगा वो कहेगा अरे बहुत अच्छी condition में मतलब चीजें ऐसी हुई. So those developmental things are always seeked upon and liked by people later also. तो वही lasting impact है. और आप सही कह रहे हैं कि goal से related है, मतलब finally it is the goal that you are going to attain, but the passage that you are traveling while attaining that goal also becomes important, because that creates an impact.
सर वीरेंद्र सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? Task will always be priority because tasks, we have very specific tasks. They are very well defined in BSF Act and rules. The role and task, both are well defined. So naturally we are here for fulfillment of the tasks. Our vision is naturally in furtherance for our tasks, for completion of the tasks. That is why, as Mr. Mathil and Mr. Supriya also mentioned, that people are there only for this purpose. We are here to get the job done from the under command. So both cannot be segregated. They are to be taken in totality. It is manpower management only, which is our prime responsibility. And today it is the most difficult job. Due to the heterogeneity present. Giri sir, if you don't mind, please. Role and task of the border security forces is clearly defined, as you said, in the by act and rule. My question is, in case the war erupted, then BSF will be able to deny or not following the order of any of the higher command? You see, Mr. Mahinder, actually, the situation once happened during Parakram. We were almost on the brink of war. Yeah. We were deployed under Army Ops Control. I had the privilege of being part of 65 Infantry Brigade, which is Barki Brigade. It is known as Barki Brigade because it went up to Barki, outskirts of Lahore in 65 war. And they were almost on the outskirts of Lahore airport when somehow the other powers intervened and truce was declared. So, and as far as BSF is also concerned, those in the Bhuj, they must be aware that the battalion which was in Diyarbakir, it was tasked to capture the Pakistan outpost and it fulfilled the task. That is why I said the role is very well defined. The task, wartime tasks are defined. And these have been given in the act. The parliament has given us the task. So we have to, when it is expected from us, we have to be ready for all the things. And there cannot be any denial. The Thank you, sir. forces are meant for this purpose only. Yes, they sir. are being fed for that one day, ultimately. Yes, sir. No. And our army has proved many a times. We have also proved our mettle many a times. It is a matter of record. Good, sir. Thank you, sir. सर मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसमें कुछ. हाँ जी सर. हाँ, इसमें क्या है कि बीएसएफ को जो भी ड्यूटी मिलती है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी हो, चाहे कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, बीएसएफ उसको हर अच्छे तरीके से कर सकती है और अच्छे तरीके से कर रही है. इसके पीछे एक जोक है. एक सेमिनार हुआ कि चांद पे जाना है, जिसमें आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, सब थी. तो आर्मी एयरफोर्स वाले कहने लगे हमें जो रैकेट दे दो, हम चांद पे आसानी से चले जाएंगे. आर्मी वालों की बारी आई कि भाई ये हमें रॉकेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम भी चांद पे चले जाएंगे. पुलिस वालों ने भी इस तरह का सब चीजें मांगी. बीएसएफ ने बोला कि हमें जी जीआर दे दो. जीआर मतलब उस जगह का जहाँ जाना है वो बता दो, हम अपने आप पहुंच जाएंगे. यानी कि बीएसएफ को जो भी टास्क मिलते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है. और फिर वो रिसोर्सेज की भी चिंता नहीं करते, उनकी पॉजिटिव में भी वो लोग उसे कर लेते हैं. तो वेरी वेरी नाइस. इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है बीएसएफ के लोगों का. एग्जैक्टली भाई. वेल सेड घनश्याम भाई. हम जो बात कर रहे थे, हम वो सच में विजन की या फिर टास्क की बात कर रहे थे. जैसे गिरी सर ने भी यही बताया कि मतलब इट इज द टास्क व्हिच इज वेरी वेल डिफाइंड और हमारे सारे एफर्ट उस टास्क को कंप्लीट या अटेन करने में ही लगे होते हैं. तो बिकॉज वी आर वेरी क्लियर विद द विजन ऑफ बीएसएफ, और आप सब लोग अपने पर्सनल विजन को भी बीएसएफ के विजन के साथ अलाइन करते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर. और इतने साल की आपकी इतनी क्रेडिबल सर्विस जो आप कंप्लीट कर पाए, इट इज जस्ट बिकॉज वो अलाइनमेंट रहा. क्योंकि वो अग्रीमेंट नहीं होगा सर तो फिर काम कर ही नहीं सकता. एंड राइट एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, जब आपकी फोर्स में लोगों को
इंट्रोड्यूस किया जाता है, एट दैट टाइम ऑल्सो दे गो थ्रू अ वेरी हार्श ट्रेनिंग, उनका ओरिएंटेशन होता है। तो वो सारी चीजें इसी तरह से डिजाइंड होती है कि अलाइन कर सके वो इंडिविजुअल के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन मिशन के साथ। इनफैक्ट हम ज्वाइन ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को तब करते हैं जब हम उनके थॉट्स को बाय करते हैं। सो दैट इज अबाउट बिल्डिंग विजन। तो बिल्डिंग विजन को लेकर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इट स्टार्ट्स विद व्हाई, दैट मीन्स द पर्पस, the very purpose of existence or survival or the question of why do you exist। तो विजन जो हमारा है वो इन चारों चीजों को से स्टेम आउट होकर आता है। एंड द कोर पर्पस शुड बी वेरी वेल नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द पर्सन एज वेल। जब आपको पता है कि पर्पस मेरा ये है, व्हाई एम आई सर्विंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई एम आई सपोज टू बी हियर, इफ दोस पर्पस इज क्लियर, आई थिंक बाकी का रास्ता अपने आप तय हो जाता है। और सर का जो दास सर का जो जोक है वो बहुत अच्छे से रिलेट होता है इस चीज से कि मतलब हमें तो बस ये बता दो जाना कहाँ है, दैट इज द पर्पस। और वो पर्पस के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, हम अपने आप अपना रास्ता बना लेंगे। तो इफ यू आर सो डिटर्मिन्ड अबाउट अटेनिंग योर पर्पस एंड इफ यू आर क्लियर अबाउट द पर्पस, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ पर्टिकुलर विजन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। सो पर्पस को लेकर एक छोटी सी एक्टिविटी है सर। यहाँ पे आपको 6 पिक्चर्स दिख रही हैं अलग अलग चीजों की। आप मुझे क्विकली बता सकते हैं पिक्चर नंबर 1 जो है वो किस चीज की पिक्चर है? डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, लंच ले। फैमिली गेट टुगेदर में, फैमिली आउटिंग। वेरी ट्रू सर, हो सकता है फैमिली आउटिंग हो सकता है ऑफिस के लोगों के साथ, बट दे आर ईटिंग फूड, दे आर हैविंग देयर मील्स एंड एंजॉयिंग इट। सेकंड पिक्चर टॉक्स अबाउट शॉपिंग, तो वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दे हैव गॉन फॉर शॉपिंग। थर्ड पिक्चर इज ऑफ ट्रैवलिंग इन मेट्रो, ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो। एंड फोर्थ वन is airport, queuing up for boarding, queuing up for boarding boarding के लिए they are waiting. Okay, very true. The next one, discussion in the meeting. okay, they are discussing something within the office setting, और कुछ intense discussion हो रहा है, laptops on है and people are looking at each other and they are discussing. और last discussion, reading, yes. Library. Okay, reading, library, or it could be a bookstore as well. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी pictures हैं. Now, why am I asking about sensing purpose with this picture, with these pictures was कि आप हर पिक्चर को रिलेट करके एक पर्पस निकाल पाए। आपने ये नहीं कहा, जैसे आपने कहा कि ये जो डाइनिंग वाला स्पेस है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, तो यू टोल्ड कि फ्रेंड्स के साथ खा रहे हैं। आई टोल्ड हो सकता है कि ऑफिस के लोगों के साथ खा रहे हो सकता है फैमिली के साथ खा रहे हो, बट द पर्पस वाज हैविंग अ गुड मील, ओवर द टेबल डिस्कशन, है ना। तो पर्पस इसका एक साउंड पर्पस है। हर टास्क के बिहाइंड एक कोर पर्पस है। शॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके पीछे में क्या क्या कोर पर्पस हो सकता है शॉपिंग के पीछे? सब ठीक। ओके, सो लेट्स मार्च टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी पिछली स्लाइड की इमेजेस हैं, मे बी हम लाइब्रेरी की इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर हम मेट्रो में ट्रैवल करने की इमेज ले लेते हैं, उसको लेकर हमको ये ग्रिड को भरना है। सो आई कुड हैव डन दैट इनटू ब्रेकआउट रूम, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुए हैं अभी तक इसके। तो आई वुड लाइक यू टू कंट्रीब्यूट विदाउट अ ब्रेकआउट रूम एज वेल। तो यहाँ पे हमारे को सेंसिंग पर्पस की एक छोटी सी एक्टिविटी, एक शीट है जिसके थ्रू हम पर्पस को क्लियरली सेंस कर सकते हैं। तो लेट अस रिलेट टू द पिक्चर ऑफ मे बी दिस मेट्रो जिसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और इसको रिलेट करते हुए हम ये तीनों ग्रिड्स या ये चारों कॉलम्स भरेंगे। तो योर ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ थिंग्स आर, अगेन रिलेटिंग टू दिस पिक्चर, क्विकली टेल मी व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू दैट। वैसे आपने एक ऑब्जर्वेशन बता दी कि ये मेट्रो है, लोग वहां ट्रैवल कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड while looking at this picture? Everyone has different purpose. Okay, yes, or maybe everyone have a different destination to go, alag-alag jagah pe utar jayenge. Okay, so that is what we are talking about, your observation of how things are. This is what you observe ki aisi ye cheeze hain. Now agar ye aapka observation hai, how do you want to impact? ab aap kya impact create karna chahte hain isse? This is not a homogeneous group. Okay. So impact can be made only where the goal is common. Okay.
because then only people would be interested to listen, and impact can be there due to two reasons. One is, as I said, goal, homogeneous goal. Secondly, hierarchy, because in hierarchy only when people are under command or subordinates that you can have an impact. Very In well friends said. also, in friendship also, all are at the same level, you can have impact. In group also, you can have impact, but not in a heterogeneous situation like this, because everybody having different agenda, different destination, different goal. सर मैं जो ये पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, आई एम नॉट लिटरली मीनिंग कि जो यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं इस मेट्रो के अंदर, हम उनकी बात नहीं कर रहे, इसलिए आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट पर्पस कैन यू सेंस आउट ऑफ इट. जैसे आपने कहा कि ये कॉमन गोल होना जरूरी है, तभी हम उस पर इनैक्ट कर सकेंगे. सो फॉर से यहाँ पे कॉमन गोल है कनेक्टिविटी या फिर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डेस्टिनेशन. ये कॉमन गोल है. मैं कुछ कहना चाहूंगा. सॉरी, मेट्रो से गए, शॉपिंग किया, नॉट नेसेसरीली मेट्रो से गए सर. ये क्या है, मतलब इट इज अबाउट ट्रैवलिंग. हम कोर पर्पस देखना चाह रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेंट में लोग खा रहे हैं, तो वो उनका रिलेशन क्या है, या वो किस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या वो किस कंट्री में बैठे हैं, हम वो नहीं देख रहे हैं. Purpose is to reach the destination. Yes, purpose is to reach the destination. तो अगर हमारा ये पर्पस होता है, don't we have a common goal in that case? We do have. तो क्या अब इस केस में ओके. और दूसरा सर ने कहा हेट्रोजेनिटी, सॉरी हायरार्की, है ना, गिरी सर ने ये बोला. तो सर हायरार्की के केस में वी आर नॉट आस्किंग दीज पीपल टू डिसाइड, रादर हमें डिसीजन लेना है अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन. Sorry to interrupt. Question is that in the next slide it was shown. What do you want to? Who do you want to impact? Yes. So since for making an impact there has to be some relationship. I hope you would agree with that. Yes, I do agree, sir. मैं आपको observation वाला picture box shows बता the रही हूँ. discipline, the sense of discipline they are maintaining while traveling. Interest should match. Yes. So the interest is, sir, मैं आपको easy कर देती हूँ उसको. Interest is traveling or reaching the destination conveniently and on time, maybe. In that way, we can have interaction. Firstly, we can start off an interaction with anyone or with the group, whosoever is sitting there. Or in case there any situation is developed, then of course we can have a lead and make an. Okay. Sir, we need not to worry about. Yeah, sir, मैं एक बार और clarity दे देती हूँ आपको. जैसे मतलब first, अच्छा सर आप बोलिए. मैथिली सर आप बताइए. Ma'am, your observation how things are, especially that metro photograph. It is basically the core sense is traveling and traveling by the travelers, and the impact which we want to have on that is the sensible traveling or the disciplined traveling. Disciplined traveling. Say we had seen the pictures of travel in buses where the people are one over each other. ठीक है नहीं, धक्का मुक्की हो रही है, कहीं पीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. The impact in this picture is the sensible traveling means you should always be in queue. Don't push each other. If there are senior citizens, the seat should be vacated for the ladies. And don't play loud music. Again, you just have to your earphone and do that. These kind of impact which should be on travelers is specific to that picture only, if I can understand properly. Yeah, truly said, sir. I mean, the observation was basically about traveling of people. तो impact could be, जैसे आपने कहा, एक तो convenience, that people are conveniently traveling, जो आपने कहा they are not one over each other, है ना. दूसरा maybe that it's a faster means of traveling, कि आपको लोगों को उनकी destination पे जल्दी पहुंचाना है और conveniently पहुंचाना है, और maybe with less amount of resources being used, ऐसा भी हम कह सकते हैं. हालांकि metro से वो नहीं हो रहा, because metro is something which is very costly. It's difficult to build in a city. It fetches a lot of expenditure. लेकिन मतलब ये impact हम सोच सकते हैं कि हमें जो traveling है वो ऐसी create करनी है जहाँ पे हम impact create कर पाएं, wherein we are economic on our resources also. Firstly, secondly, we are giving convenience to people. Thirdly, it is saving a lot of time. So that is the impact which we have decided. We want that kind of an impact to come, right? And we need to decide an alternative mean or reality जिसके through ये impact आ सके.
It might be a metro, it might be a bus, it might be a train, it might be a e-rickshaw, it might be anything. तो अगर मेरा impact का जो criteria है is about environment maybe, so I would say कि other alternate reality would be e-vehicles, right? तो we are deciding upon based on the observations that we have seen, we are deciding कि हमारा impact area क्या होना चाहिए. अगर हमारा impact area determined है, so what would be our alternative reality? या जो अभी चल रहा है वही बेस्ट है, क्योंकि वो तो नहीं हो सकता, उसमें तो स्कोप है और बेटरमेंट का. तो वी आर ट्राइंग टू थिंक अपॉन व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव रियलिटी एंड हाउ आर दे पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाय द अल्टरनेटिव रियलिटी. जो आपके इम्पैक्ट हैं वो कैसे पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं उस रियलिटी के साथ. सो एक्चुअली द टास्क वाज इनटू अ ब्रेकआउट सेशन, जहाँ पे मैं आप हर एक रूम को एक पिक्चर देती, बट बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम वी आर नॉट डूइंग दैट. तो वी वर ट्राइंग टू, जैसे अगर मैं लाइब्रेरी वाला इमेज पिकअप करती हूँ, राइट? सो लेट मी रिलेटेड टू दिस थिंग कि I'm observing people studying there, people reading books over there. So what kind of impact is that I want on people? Maybe मेरा impact होना चाहिए enhance of knowledge. Yes, maybe enhancement of knowledge. सर मैं एक impact को लेके चलती हूँ, तब मैं उसका alternative generate कर पाऊंगी. तो maybe impact could be reachability. अब reachability का मतलब ये है सर कि रीड करना है, वो चल के लाइब्रेरी में आएगा, उसके घर के पास लाइब्रेरी है तो शायद वो रीड ही ना करे, बट इट शुड बी मेड अफोर्डेबल एंड रीचेबल टू पीपल. अगर मुझे इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना है, व्हाट कुड बी द अल्टरनेट रियलिटी? Maybe it could be Kindle, it could be e-books, yes, it could be library on wheels. तो अगर मेरे को पता है कि मुझे किस एरिया में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, then I would be able to devise an alternate reality based on that. So the purpose was this. Now if we translate these pictures into our own self, हम हमारे as an individual की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन हमारे impact से related है, that what kind of impact we want to create. So we need to observe how we are, what kind of things are there, हम कैसे surrounded हैं, या लोग हमारे बारे में किस तरह का perception रखते हैं, what all things we have come across in our life till now. Now we need to introspect upon what kind of impact do we want to create. हम कैसे चाहेंगे कि लोग हमें किस तरह से याद रखें. Once you've got transferred, the people who have worked under you, your men, how would they remember you? So that is the kind of impact that you want to create, right? Now next step would be, in order to create that impact, what kind of alternate reality would you create into their settings, and is that alternate reality facilitating to that impact which you want to create? क्या ऐसा हो रहा है? So that was the purpose of this whole activity. So can anybody help me out with one thing, with your individual trait or your any personality aspect wherein you have observed, you want to create an impact, and you can finish off these 4 grids. हमने picture के साथ तो कर लिया, library picture के साथ और metro के picture. If anybody could do that. An alternative reality could be the huge book. कुमार सर starting से मतलब बताएं ना आप, what kind of impact do you want to create? यहाँ से शुरू करोगे तो alternative reality हमें easy हो जाएगा समझ पाना. Impact, our goal of the impact would be to make the reading more affordable, more reachable to the needy class, to the lower strata of the society, the children who are deprived of the books. And for that, if the used books can be stored, can be collected, and they may be given at a certain this point कि एक जगह बना दिया जहाँ पे सोसाइटी में कि वहाँ से वो बच्चे आए और they can read the books. So that impact can be very, very affordable. So this type of things can be an alternative arrangement. Yeah, and those reality are contributing towards creating that impact. Yeah, yeah. Very well said. Should I contribute in that? Yes, please sir. मैथी sir, in fact मेरे को ऐसा intuition हो रहा था कि मतलब आप यहाँ जरूर contribute करेंगे, and it will be a great submission from your side. Please go ahead, sir. I will quote an personal experience over here in Kashmir.
This is my 4th tenure in Kashmir. I had been to Kashmir since 1999. First tenure, second tenure, third tenure. And I had seen all the phases of the Kashmir militancy. And I just want to create an impact in the people over here. So the previous impact was something else when we were the girls roaming around fighting the militants, and due to that activities, we had very negative impact on the society over here in Kashmir. Since abrogation of Article 370, we had the opportunity that we can reach out the people and help them have a positive impact of ours as an organization, as a BSF. That's the background. The situation with me is that we had got certain funds allotted to be spent on various activities for the civilians. Okay. The best area was find out the capacity building of the people. Wow. Was it? To be precise, we had been allotted 1,50,000 rupees to be spent for various activities. So I had decided, okay, let's utilize this to have a good impact of the BSF on a younger generation. And the best solution I found, the goal was to get some people trained for recognized courses so that it will help them in their future. Their skill and knowledge will be enhanced, and that will be beneficial for them in future. The target students were of class 10, 11, 12, and that was the target group. Then those people were from the rural areas where we are deployed. Having those things, providing those skills set to them required some institutes, some computers, some infrastructure classes, and the challenge was to take them from that village to the Srinagar and get them trained over here. Chicken. Now I defined what do you want to impact. I just want to impact the BSF image, the good image of the BSF, with enhancing the social skills of the younger generations. Alternative reality for them, I have to work out. I just engage a company, a training company over here, some agencies, and उनको फिर alternate दिया कि ऐसा करते हैं हम, we will create a facility over there, request some organizational buildings to have classrooms. In the rural area, sir? In the rural area itself, just adjacent to their village, some government building as a they class. Don't have to travel now. They know. We just use the traveling period. And now we convince that training agency to send their computers and their teachers to the villages. We make the training company travel from Srinagar to village and create the training facilities over there. We help them out, providing the electricity generators, some furnitures, which we have at our own resources. The 30 students, 15 girls and 15 boys, were trained for 60 days course just next to their village. So these alternate things has been done. This is how the challenges were there, alternatives were worked out, and the impact was created. Originally, we just want to have that impact, and that was created. The result of that impact, I will discuss sometime else when it will be appropriate. And it was really a positive impact. Yes, and it is a lasting impact. I mean, it will always be remembered because you have upskilled them. Now they have jobs to do. So it's a lifelong thing which you've given them. By a that is an experience I just want to share in this set of things. Well fitted, sir, और बहुत बढ़िया example. And in fact, really we are proud of BSF that they conduct such kind of things. Moving forward, next is what is your core purpose? हम vision की बात कर रहे थे, तो vision में first step हमारा आता है about purpose, and we find very easily just through that matrix कि हमारा purpose किस तरह से हम define करेंगे अभी पिछली वाली slide में. Now
नेक्स्ट कम्स, जब हम पर्पस की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज योर कोर वैल्यूज, क्योंकि हम एक विजन को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज कि हमारा पर्पस क्या है, क्या हम अटेन करना चाहते हैं। हमने उस रियलिटी को भी क्रिएट कर लिया। नाउ आर कोर वैल्यूज फैसिलिटेटिंग इन अटेनिंग दैट पर्पस और नॉट, क्योंकि वैल्यू सिस्टम है ना सर, वो बहुत ज्यादा इंसान को गवर्न करता है, द वे अ पर्सन हैव बीन रेज्ड अप, या किस कंट्री, किस कॉन्टिनेंट सेटिंग में वो रहता है। तो वैल्यूज आर समथिंग वेरी वेरी एसेंशियल। और अभी 2 मिनट पहले हम यही बात कर रहे थे कि कैसे बीएसएफ की वैल्यूज को आपने अपने अंदर इम्बाइब कर दिया है, और वो जो हार्मनी है, वो जो सिम्फनी है, दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स a better leadership position because you have imbibed those values into you. तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू नीड टू थिंक अपॉन कि जो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, जैसे किसी ने जो नरेंद्र मोदी जिन्होंने चूज करा था, उन्होंने कहा कि एथिकल ग्राउंड पे रहते हुए ही इज एबल टू अटेन दोज थिंग्स। सो दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर स्टिकिंग टू योर वैल्यूज। सो यू नीड टू डिफाइन योर वैल्यूज, और आपको उसको इन सिंक करना पड़ेगा अपने पर्पस के साथ। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो उस मिसमैच की वजह से अगेन द इम्पैक्ट वोंट बी दैट मच हाई, है ना, वो इतना रेजोनेट नहीं कर पाएगा लोगों के साथ। सो यू नीड टू डिफाइन दैट व्हाट आर योर वैल्यूज, आपको किन पैरामीटर्स में रह के इस इम्पैक्ट को क्रिएट करना है, इस पर्पस को अटेन करना है। जैसे हमने कहा कि गोल हमें अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो काउंट होता है वो आउटकम है, अभी हमने ये बात करी थी। तो आउटकम अटेन करने के लिए जो रास्ता हम चल रहे हैं, वहां पे हम हमारी वैल्यूज और एथिक्स के साथ कितना स्टिक होते हैं, वो भी पैरामीटर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, which is very essential. And that brings me to the next slide, wherein I'm talking about the BSF values. So in the core values of BSF are credibility, integrity, inclusion, professionalism and compassion. And I'm sure कि आप सब में वो values imbibed होंगी. So our next upcoming slide talks about कि अगर मैं credibility की बात करूं, and I ask you that your team कि आप rate करो अपने आप को on a scale of 0 to 10 with respect to value of credibility. So what can you do to what is your score in terms of credibility? अगर आप अपनी would be, I hope there will be total agreement on this that it will be 10. It will be 10. Because nothing no doubt, less. sir. Wherever we have served, everywhere BSF is always in demand. Yes sir. इसीलिए सर आप देखो कि कितना strong. Very true. ठीक है सर, मैं आगे के पॉइंट्स पे आपको बता देती हूँ। अगर हम इंटेग्रिटी को more than 10. तो इंटेग्रिटी को भी रैंक ओके सर। तो आई एम डन विद दीस स्लाइड्स एंड दिस ब्रिंग्स टू मी अ कंक्लूजन कि कितना वेल इम्बाइब्ड है बीएसएफ का विजन या गोल वैल्यूज आपके अंदर, मतलब यू हैव ऑलवेज अलाइन बोथ द वैल्यूज, और इसीलिए उसका रिजल्ट इतना मैसिव और अमेजिंग है। So that is very much required in every organization कि आप अपने value system को अगर आप absorb कर पा रहे हो, definitely you can sail through very well into that. So Actually, next, any organization when it is raised, it is based on certain ethos. And we were also when raised, certain ethos were imbibed in us, and same has been continuing since then. So it is an officer-oriented force. Officers have always been leading by example, and it's a matter of record also. Officers have sacrificed number of officers have sacrificed for the nation in counterinsurgency as well as in anti-Naxal operations also. That's why the force has been front runner in all the arenas and spheres, only due to the commitment of the officers in every sphere, be it operations, administration, training, whatever you name it, and officers will be leading everywhere. The men are inspired by officers. Sir, and you serve as an example to the other people in the nation as well. Because sir, corporates में generally you do not find this kind of high value driven system. But here, until unless this is there, you cannot lead men. You cannot lead, yes. You cannot motivate your men to sacrifice their own lives. Very true, sir. It's the most difficult job. इसलिए सर इंटेक के टाइम पे जिनका टेम्परामेंट है, only those people choose this as their profession, and then you are tamed over the years through your training. And और सर वो ये ना जो हम inner circle of concern की बात कर रहे थे, तो वो आप लोगों का the way you are surrounded by people, the same thought process everybody has, that kindles that spark every time.
तो वो That is शायद it is military training. So everyone will have same bent of mind. Yes. Every officer will have same bent of mind. They will be akin. Very true. Very true. And let me contribute one more thing. ये first slide पे 10 on 10, 10 4 times मुझे बोल दिया गया. I need not to explain it further. So I do agree to that, or it was much expected also. Very true, sir. Let So me contribute a little more thing. yes, sir. Please over to you, sir. Giri sir is always, I had done courses with the Giri sir, and as a course mate, he is always a instructor to us. No, I am grateful rather for the comments which Mr. Ashwini has passed. I am a very small person. It is his greatness. Thank you. It is with all the participants you are seeing in the screen over here. They are driven by a very high value system. Everybody has gone through many kind of challenges. Only thing is that you had a system of metrics, some new words, and we just have to fit in that. We are just identifying ourselves how we had done that. Your inner circle and your outer circle, taking the area of influence and area of concerns, they are so mingled up with each us, na? The area of influence जो हमारा खुद का है, ठीक है नहीं, उसको area of circumstances जो साथ में हम इतना ज़्यादा motivate लोगों को, सारे लोग का साथ रहे, situations ऐसी हैं, मतलब when we have to lead the man to their death, that is the most difficult chance. Say, we all had experiences in militancy time over here in Kashmir. When you are standing and your Johnnies are come in front of you when the bullet fires upon you. So that kind of impact we have on our man when he is ready to face the bullet coming to you. So, and that's a supreme thing, man. Yes. That's a supreme, and everybody has faced it. Murthy sir, and I was here in same battalion. Again, on TP sir, Virendra Giri sir, Kesaria sir, ठीक है नहीं, अंतर्यामी सर, रोतेला सर, इन सब ने वो चीजें झेली हैं मैम, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं साथ में मैम. तो लीडरशिप जिस लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं ना, कि when one person is ready to sacrifice his life, we all had gone through that, and everybody has got his own experiences to share here. Only thing is that it's an art of fitting those experiences in the matrix prepared by you. True, sir. So that's why it is called, sir, ये एक platform of exchange है. We cannot, teach you things. It's only that जब हम चीजों को एक common platform पे discuss करते हैं, तो वो उनका clarity और बढ़ जाती है, and we all contribute to that. So that's very true. और जो आपने supreme level की बात करी, sir, पूरी country look up करती है आप लोगों के इस supreme level पे, and we feel so honored and proud कि मतलब we are able to interact with you, so nothing like it. And I can really imagine सच में उस level of commitment को कैसे ignite आप लोग करते हैं अपने army men में, तो that is really amazing, awe-striking. So moving forward, this is Bhag, which is also called a grid of setting goals. So it comprises of 4 components, that is big, hairy, audacious goals. And this was a contribution of Jim and Jerry. They are the authors of a book wherein they have talked about how visionary organizations lead their team toward attaining the goal. So it talks about that your goal system should be very clear and compelling, as you have been just now only narrating about that. It is the supreme level of taking sacrifice from people and how committed they are to the organization. So because they are very clear, they have a very clear understanding about what their goals are and what purpose are they in this organization. Then it helps a person to come out of his comfort zone. This is very much required. In order to attain a goal, you need to come out of your comfort zone. You need to be bold and exciting, and you need to know that the purpose why you exist. Your very existence is driven by a certain goal. So if you are clear about that goal, and if you are ready to shift your gears from your comfort zone, only then there would be a greater attainment of goal.
So I'm sure all of you, क्योंकि आप तो बहुत hardships वाले scenario को बहुत face करते हैं, क्या कभी कोई ऐसा scenario आया wherein you had certain comfort zone and it was difficult for you to push yourself from one zone to another, maybe on personal level or maybe on professional level? हम सबके comfort zone होते हैं. Like if I talk about myself, I was a person who was a bachelor's in science, and I never wanted to switch on to management. But because I was not a person who speak a lot, I was not a very outgoing kind of a person. I'm an introvert person otherwise. But my profession and the area which I selected, I did my MBA, I did my PhD, all these things, wherein I'm required to be more, interactive with people. I need to communicate with people. Being a teacher, I need to understand the mentality of people, which was not actually something which I really liked upon. So I had to push myself from my comfort zone in order to excel into my profession, and then I was able to make the mark. So I'm sure such situation comes into everybody's life wherein we have to push ourselves out of it. So can somebody help me out with any such situation? You can contribute any comfort zone which you were into and your task demanded you to come out of it. We can never be in comfort zone. Yes. That is not a commandant who is in comfort zone. It's not about that's true, very well defined. It's not about the physical comfort. It is kind of a barrier that we have created mentally. It is mental. Basically, commandant's job is mental, more mental than physical. Yes. But yes, those who are deployed in anti-Naxal operations or counterinsurgency, it is physical also, along with mental, both. Sir, it is everywhere, sir. अभी तो जो है वहाँ पे मैं नॉर्थ बंगाल में था, साउथ बंगाल में, तो नॉर्थ बंगाल पर तो ये हाल था, एक 2IC या CO जो है वहाँ पे रहता था बॉर्डर पे, कंपल्सरी था. Because ma'am, basically to bring others out of comfort zone, first we have to leave our comfort zone. To extract work, first we have to work. Then only we can extract work. We have to work more. एक ट्रेनिंग पार्ट से एक कंफर्ट जोन का आपको हाउ वी आर ट्रेन्ड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैम फ्रॉम आवर बेसिक ट्रेनिंग ओनली we had been allotted a room in which the 4 course mates used to be reside. So 1 month we developed the comfort zone with 4 people, and after 1 month they changed our room. No zone in BSF is under comfort. So they don't want to keep us in comfort. Every time, every month, they change the comfort zone of our being the 4-man group in a room. Actually, कोई comfort zone मिला आपको BSF में? मैं वही बात बोल रहा हूँ सर, हमें तो बचपन से अनकंफर्ट रखने की कोशिश की गई है. 1 महीने में जैसे ही 4 लोगों के साथ दोस्ती होती थी, एक ऑर्डर आ जाता था, चेस्ट नंबर फलाना इस कमरे में, चेस्ट रीएलोकेशन ऑफ द रूम. फिर दोबारा से 4 लोगों से दोस्ती करो. लेकिन फिर कंफर्ट हुआ 1 महीने में, फिर डिस्कंफर्ट ऑर्डर आ गया. When we are always remain in discomfort zone, we are trained like that. जैसे ENO में रहता है ना, रूटीन, ब्रेक द रूटीन. बिल्कुल सर. ब्रेक द रूटीन, इसी तरह से यहाँ पे ब्रेक द कंफर्ट. ब्रेक द कंफर्ट. That is what keeps you on toes, sir. और वैसे comfort का मतलब not only with people, it's like maybe some habit or maybe some cultural difference which is there with due to which, I mean, the acceptability that is very Madam, I just quote just an example, ma'am. There are various comfort zones. Yes. And heterogeneity is very high in your case, so I know that how diverse it is. You have people across the length and breadth of country. मैडम, ये अपना एटीट्यूड लेवल है कि आप अपने कंफर्ट जोन को कैसे क्रिएट करते हैं. आप उससे आपको उसकी क्रिएशन करना पड़ेगा कि आप किसी भी सिचुएशंस में आप अपने कंफर्ट लेवल को किस हद तक जो है ला सकते हैं. The salesman said we are comfortable in the uncomfortable scenario. Yes. That's the right line told by you. और वही अब आपका कंफर्ट जोन बन गया. Your discomfort have become your comfort zone. So
that is how you've been trained. बिल And में वही है लिखा हुआ। Ma'am, Yes. ma'am, I would like to say something. दोनों मिलाकर। Sorry, sir. कैमरा मेरा ऑन नहीं हो रहा है इसमें, बट वैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल सर, बताएं सर। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था कि नवंबर के महीने में मैंने बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेश बॉर्डर से जो है केनो में डिप्लॉयड हुआ, एंड व्हेन एट दैट टाइम आई ज्वाइन 30 बटालियन BSF. So within 4 months, 2 ID blasts were occurred in our area of responsibility. So that time I was feel very negative and uncomfortable कि ये क्या हो रहा है, और हायर हेडक्वार्टर से लेकर के बाकी लोग भी जो है इस तरह के कि ये चीज इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये चीज so many instructions, so many direction जो है they were given to me कि ये भी इम्प्लीमेंट करना, ये भी इम्प्लीमेंट करना. And after 2 months, unit apprehended 3 Naxals in that area and same area, and Naxal were those जहां पर ये लोग अपना डेली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब ये लोग पकड़े गए तो ये वही बंदे थे जो आईडी ब्लास्ट किए थे. दोनों आईडी ब्लास्ट में ये लोग इन्वॉल्व थे. तो जो इंस्ट्रक्शन और जो चीजें दी गई थी वो उसमें जो है सब के सब बोले कि ये आपने कैसे किया है, जबकि ऐसा कुछ अलग से नहीं था, हमारा रूटीन का चीज था जो कि हम लोगों ने उससे अप्रीहेंड किया था. तो अब उसमें जो उस समय मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील किया कि कम से कम एटलीस्ट हायर हेडक्वार्टर से लेकर के बाकी लोग भी जो है उसको दे वर थिंकिंग कि नहीं, ये बटालियन जो है दे आर डूइंग वेरी वेल, ट्रूप्स आर डूइंग वेरी वेल एंड अचीव्ड समथिंग. और इवन 3 नक्सल जो है एट ए टाइम जो है अप्रीहेंड करना, इट वाज ए बिग थिंग्स. और वो एक्टिवली आपने एक्ट करा इस सिचुएशन. हाँ, तो एक तरह से एक कंफर्ट जो अनकंफर्ट था वो मेरा कंफर्ट में थोड़ी देर के लिए बदल गया, जैसा कि गिरीश और बाकी लोग ने भी बोला कि ये दैट विल डिपेंड अपॉन माइंड सेटअप एंड अपना माइंड एटीट्यूड के व्हाट बी थिंकिंग, और इसके ऊपर है. तो हम लोग जो भी परिस्थितियां और स्थितियां के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और कुछ भी करते हैं, तो ये सब चीज जो है अपने हायर हेडक्वार्टर भी होता है साथ में, और हमारा ट्रूप्स भी होता है साथ में, कि ट्रूप्स को हमें एज ए कमांडेंट जो है वी हैव टू लुक आफ्टर आवर मैन आल्सो, एंड इवन ट्राई टू मेक बैलेंस इन बिटवीन बटालियन एंड हायर हेडक्वार्टर आल्सो, कि हमें उनका इम्प्लीमेंट भी करना है और हमें यहाँ पर अचीवमेंट भी करना है, और उन्हीं से करना है जिससे हमें डे टू डे हम जो है उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं. तो ये जो चीज है, ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड जो है अपना जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या और किस पॉजिटिव वे में हर चीज को ले रहे हैं. तो ये जो चीज है ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने ऊपर, कि हम अगर हायर हेडक्वार्टर कभी कभी इस तरह की चीजें भी बोलता है, या अपने सीनियर होते हैं या इवन जूनियर ऑल्सो, कि ये जो चीज है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बट ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, एंड हाउ वी कैन अप्लाई एंड व्हाट वी कैन अचीव. तो ये सब कुछ अपना स्टेट ऑफ माइंड है, वहां पर पॉजिटिव में अगर रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी आई थिंक ऑल राइट. ट्रू सर. इनफैक्ट पूरी गोल अटेनमेंट की जर्नी ही माइंड का ही. बहुत बढ़िया. So that's true that you define your own comfort zone based on your mindset and you come out of it also based on your mindset. बिल्कुल सर. और इन्हीं सब चीजों को सम करते हुए एक टेम्पलेट है आपके सामने सर, which is about your vision template, and this is a summation of whatever we have done in this workshop for 2 hours today. तो जैसे first statement आपकी है 4. So what do you want to impact? What kind of impact do you want to create? Maybe the impact could be, can anybody tell me one impact that you want to create on your team? He should be loyal to us. Okay. And BSF, yes, sir. As a commander, we can impact on 3 or 4 dimensions.
versus we can impact on training aspects. Okay. So maybe the impact that you want to create is कोर्स में 1:30 बजे के बाद फोन करना, ठीक है? Yeah. You want to you maybe उनकी health पे एक impact जैसे आप लोगों ने health, fitness. So fitness and professionalism. impact that you want to create on them. अब Yeah. ये impact create करने के लिए you need to tell them that what matters, why this fitness matters to them, और इससे क्या result निकलेगा. तो maybe you'll ask them. It is aligned with the career. Yes. And second is we can impact them on economic front. Due to uncertainty of their own life, they have to raise kids. They have to have certain security system, financial security. So we can advise them on financial issues. True. And even train them. In BSF, what as a command you have seen, they apply for many loans, troops. On whims and fancies, they apply for loans, the troops, maybe for house building, for education, and for some others. So we can greatly impact to inculcate the habit of savings and investment. Okay. So you have a can directly impact them. True. So let's stick to one impact. हम health वाले impact पे stick करते हैं sir. So what matters to them is जो आपने कहा जैसे कि professional ground पे उनकी जो growth है, that matters based on their health. Then on their personal level also health matters a lot. Right. Now, what do you imagine as the future? अगर health intact है, अगर आप वो impact create कर पा रहे हो लोगों पे, wherein you are making them conscious about their health, and you are trying to change their mindset about how they need to lead a healthy lifestyle. So next question could be, you need to ask them that what kind of future do you imagine if you are a healthy person? That will help you in creating a better impact on them. Moving forward, what all benefits will they gain out of it? That could be one of the area of concern. Then हम भाग वाला variable लेकर, we will be setting some audacious goal for them that okay, if you are fit to this level, आपके vitals बहुत controlled हैं, तो maybe you can relish every kind of food at every stage of life. वरना diabetic या high blood pressure वाले लोगों के लिए you'll have to curtail with certain diet things. So that could be a goal that you are able to enjoy your life to a great extent if you are fit, and you need to set up that goal based on the strength or the mindset that you are creating with the people. जो आप लोगों ने कहा कि comfort zone जो है, that is a matter of mindset. That what kind of mindset you are having, based on that you will define your comfort zone and you'll come out also of your comfort zone, and then you will be in a better position to attain the goal. Right? So this whole template, ये vision template जो है, ये facilitate करती है अगर हम किसी एक impact को लेकर चलते हैं, and then what all could be the way forward so that that impact could be created in a good manner, impactfully. So that was the summation of the entire workshop, maybe some survey that we have, and this is the entire diagram in totality, that how vision is built by seeking purpose, by identifying values, by using bhag and describing it vividly. So that all contribute towards building vision. And again, this is a flow chart or some activity sheet which is mentioned in your handbook also. So maybe whenever time permits, you can always mention different aspects in all these 4 quadrants, and that will help you in building a better impact and coming out of a better version of what you are, because there is always a scope of improvement for every individual. So, Vani madam, sorry to interject. I think we are a little short on time now. Yes, I've already done this thing. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. I would like to add one thing from my end when we were discussing Bhag goals, if I may. One very fantastic thing about a Bhag goal, sirs, is that
it has to be very simple. When you say audacious, and it is also very simple. For example, when NASA wrote down its Bhag goal, they had a very simple idea. I will take the man to the moon and I will make sure I fly him back safely as well. And it kind of expands. So Bhag goals aren't, always just, it doesn't have to be, we see policy documents में visions में बहुत verbose होते हैं, वैसे terms use करते हैं. Bhag goals बहुत simple होते हैं. When Boeing first came up, they did not, they as a they were only making jets for defense and all. So when they had a proposal initially in America to bring the first commercial jet, no one took them seriously because they were like, we already have a lot of players. Why Boeing doesn't create, they can't create the jetliner of that sort. So no one took them seriously. So the design team said, they set one clear goal, that we will make a commercial airliner aircraft that no one can compete with. It was that simple. And that is where the vision of 777 came up. And then rest is history. So that's just an addition I wanted to make, because it's a, that's what Bhag is about. When ma'am was explaining. Very relatable as well. Thank you so Yes. much. Yes. Thank you, all of you. It was really pleasure interacting with you all. I hope I was able to add some value. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Thank you. So, sirs, now we will take a break. Please, आप लोग थोड़ा चाय coffee पीजिए for 15 minutes. I guess we can take a break. We'll take a break, sirs, for 15 minutes. We can resume at 12:40. Yeah. Thank you so much. Nagendra, sorry. Cut off कर रहा हूँ. Hello, sirs. Welcome back. पहले GR Singh sir, आप please बताइए. This time it is correct. I think it is correct this time. Thank you so much. Yes, Thank you third so time much. is a thank you so much for your feedback. Third time is a It's charm. okay now. It's okay now. Thank you so much. Wonderful conversations you were having during the your break. We'll start off with a new session. Actually, I would like to reinforce something that Ashwani sir had said in the conversation. I just noted that I came. Ashwani sir ने बोला था कि I wish we come to the campus. कल हमारे तन्वी ने भी मेरे colleague ने यही बोला था. We also wish that you also come to the campus. We make these conscious efforts, because you also want us to come and talk in person and have these, exchanges in person with us. And we, if you see us, हमारे CLD program from the very start, there's not something new that we come up कि इस program से हमको क्या मिलेगा, leadership तो हमको पता है, we know actually we are very well aware of that sir. तो ये program हमने platform जैसे देखते हैं. अभी आप लोग जो discussion कर रहे हो, deliberation कर रहे हो, you're exchanging stories just around the themes of leadership. I think that is what our objective is. We hardly come with the objectives कि आपको कुछ नया सिखाए. We can provide you new perspectives. We can never teach you anything because we Mr. Banerjee, yes, sir. Who is the taking class of the border management in the MT school? Some our legendary will be there. Sir, I think there is a directorate. I have to follow up. Actually, I'm not aware exactly who it is, but I can get to know. I'll get back to you on that. है ना? Okay. Yes, sir. Sure, sir. Sure. Now I'll just move forward, sirs, with your permission for our next session. हमारा जो next session है, setting direction के अंदर ये है, sirs. It is titled Thinking Big Picture. Now, in this session, मुद्दा है कि we'll explore together ये big picture thinking क्या होता है. You'll come up with narratives आपके personal and professional lives में भी BSF से benefits क्या होता है. How do we think big picture? But इस session में एक बहुत interesting part है कि we'll also explore some cognitive traps, biases, which might be very new for you also when we think big picture. So that's very interesting thing. And ये हमारे थोड़ा reinforce करता है ना journey to understand setting direction leadership के idea में कि big picture thinking क्या है, traps क्या है. So इस session को लेने के लिए we have with us Ravi sir. Ravi sir brings with him over a decade of experience in training and development. He has worked with multiple organizations requiring entrepreneurship development, customer relationship development. And sir is a certified coach and counselor in behavioral science. Ravi sir is not new to the CLMDP program. He's also already conducted before as well. So Ravi sir, a warm welcome to you. I'd like to hand over the proceedings to you, sir. Thank you very much, Swamidev. You're very kind. And thank you for also briefing all our cohort members about what's coming up for them. Namaskar, everybody. Jai Hind. It's such a privilege to interact with all of you. Jai Hind, sir. Sir, कल से और आज तक मैंने एक भी दिन एक भी मिनट के लिए लॉग आउट नहीं किया है
wherever I was occupied, I wanted to understand, how participative the cohort is. And in fact, I'd like to congratulate all of you. What a wonderful participation you all have been carrying up. ये दर्शाता है कि हम सीखने के लिए आतुर हैं. Despite our experiences, whatever, we are reinforcing our learning, and this is tremendous. Before I take the session up formally, सौम्यदेव ने जैसे बताया आपके शेड्यूल में भी होगा, थिंकिंग बिग पिक्चर. ये कभी हमने पर्सनली इस्तेमाल किया है, ये शब्द, ये वाक्य. मैंने अपने करियर के अंदर काफी कॉर्पोरेट्स, नवरत्न कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, मैनेजमेंट लीडर्स, लोअर लेवल लीडर्स, एंट्री लेवल पर्सनल्स, सबके साथ में ट्रेनिंग एंड कोचिंग करी है. कहीं ना कहीं आके मैंने ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में. स्टूडेंट्स अगर आते हैं, सर वी आर स्टक, तो मैं उन्हें बोलता हूँ थिंक बियॉन्ड, थिंक बिग. सर आई स्कोर्ड लो, आई एम लूजिंग आउट ऑन माई समथिंग. आई सेड थिंक बियॉन्ड, थिंक बिग. ये मैंने बोला. आप लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी ऐसा वाक्य इस्तेमाल किया है, पर्सनली, प्रोफेशनली? आपसे जानना चाहता हूँ. Yes. Arun sir, why not? Why would you like to share, sir? नेचुरली किसी को इनकरेज करने के लिए तो मतलब कि बोलना चाहिए, उनको अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छे संवारने के लिए उसको इनकरेज तो करना ही चाहिए. फ्यूचर संवारने के लिए, that means this is something towards the positive side. ये मैं conclude कर सकता हूँ आपके वाक्य से. अरुण सर, thank you so much. Anybody else? There is a concept called appreciation in our parlance. And every person, whether he is a subordinate or in command, he has to think one up, two down. That is the basic functioning of force. And so that means that he has to know the job of the one up senior. And to execute, to get any job executed, he has to go two down, two levels down, to tell them what to do on ground. So in appreciation, we start right from top and then go to ground level to execute. That is logical deduction of any problem. Appreciation in a short, I would say it is logical deduction of any problem solving. Problem solving. Giri sir, amazing. Great input. I'm so happy about this particular word. Problem solving के लिए हमने खास तौर पे इस्तेमाल किया है. Anybody else? It's Sir, right there. Big picture. Yes, we sir. look into the future. We think ahead of the times. Oh, great, Mohan sir. Some better goals. Yes. Than what we earlier had. We may set a better goals also. Absolutely, Mohan sir, bang on. What an amazing insight. So I'm happy that we all are sharing, and तीन लोगों ने यहाँ पर deliberate किया अपने experiences. All of you are correct, and I'm sure everybody else will also agree. इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा. Yes, Ghanshyam sir first. Yes, sir. मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा. हमारे यहाँ जो नए रिक्रूटमेंट जवान आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो कई जो है उनकी क्वालिफिकेशन काफी हाई होती है, बीकॉम, बीएड. हम उनको इंकरेज करते हैं बड़ा गोल दिखाने के लिए. हमारे बीएसएफ के अंदर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एसआई बन सकते हो, अफसर बन सकते हो. एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा. हायर पे में आप लोग जा सकते हो. ये एक बड़ा गोल दिखाना भी, जब भी इंटरव्यू के लिए हमारे पास आते हैं, फर्स्ट जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, तो हम उनको अच्छा गोल दिखाते हैं. तो काफ़ी वो मोटिवेट भी होते हैं. और हमारे काफ़ी जवान जो कांस्टेबल से हायर पोस्ट पे गए हैं, एसआई में गए हैं, जेई में गए हैं, नंबर 2 कम्युनिकेशन, हवलदार कम्युनिकेशन में गए हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है जब हम उनको ये अच्छी बात बताते हैं. बहुत बढ़िया सर. तो घनश्याम सर, आपके इस डेलिब्रेशन से एक बात तो समझ में आई है. ये हम दिखाते क्यों हैं, इसका भी आपने कहा कहीं ना कहीं मोटिवेशन फैक्टर हम सभी के पास में होता है. Whenever that we are wanting them to progress, do their best and achieve something which is beyond their regular arena, I think वहां पर ये बहुत काम में आता होगा. आज का ये सेशन खास तौर पे इसी डेलिब्रेशन के लिए. मेरे एक सवाल आने वाले,
but I think there was somebody else who wanted to share their part. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। Yes, सिंह साहब। कई बार अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम सारी चीजें हमारे हिसाब से होती नहीं है, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। उस समय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सिंह साहब, आपका ये डेलिब्रेशन मेरे इसी सेशन में आने वाले कुछ मिनटों के बाद में ये जरूर आपका वाकया और आपके ये एक्सपीरियंस मैं जरूर लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु हैव डेलिब्रेटेड एंड शेयर्ड their part of experiences. The idea why I wanted to ask this question was, हमने बोला बिग पिक्चर सोचो, ये बिग पिक्चर होती क्या है, कैसे किया, वो आप लोगों ने सभी ने बताया। होता क्या है, ये सेशन हमारा अभी अगले 2 घंटे के आसपास, लगभग 2 घंटे के आसपास चलेगा। एंड आई वाज रीडिंग द चैट मैसेज बाय समबडी, वी विल आल्सो बी हैविंग अ लंच ब्रेक। तो हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये सेशन अभी का, और 1:30 बजे हम लंच ब्रेक के लिए जाएंगे और 3 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम इस सेशन के लिए बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ में इन्वॉल्व रहें, बिकॉज whatever amount of experience that we have, unless we use it for something advantageous, it does not solve the purpose of being. ये हमारे सिर्फ आज के सेशन के लिए नहीं है, ये हमारे सिर्फ BSF की ड्यूटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। This can be applicable everywhere else. I have been training people on superannuation. What do they take beyond once they're off their brasses on their shoulders? तो ये सेशन आपके बहुत काम का आने वाला है। Let's understand what this session holds for us. So हम जानेंगे कि what exactly is big picture thinking and what are the benefits that we can draw out of it. Some of us also deliberated a part of it recently. अब ये big picture होती क्या है और सोचते कैसे हैं? How do we do that? And what are the things, as you know, that cognitive traps that Swamedev had mentioned earlier? I'll be taking you through some common cognitive traps, thinking traps, जब हम routine life में होते हैं। सिंह साहब ने जब बात करी तो मैंने कहा ये part आपका यहाँ जरूर आने वाला है। What are those traps and how do we overcome those traps? अगर हमें वो traps overcome करने आते हैं, then we are certain once we go back to our workplaces, we are commandants, we are leaders, we are leading people, people are looking up to us. How exactly can we create that impact? Not just on the ground, but also for their futures. तो ये हमारा सेशन इस बारे में आज हम deliberations लेंगे and we'll be working out on it together. Now I want to understand from you, are we all in together? Can I see a thumbs up from all of you? Yeah, Ashwani sir, thank you. With that smile, a thumbs up is great. Grisa, great. Thank you very much, everybody, for confirming. Let's dive in. एक ये छोटा सा एक्सरसाइज आप सभी के लिए, करीबन मैं आपको 1 मिनट दूंगा इसके लिए। इट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड आई नीड आंसर्स ऑन दिस प्रॉब्लम, क्रॉसिंग द ब्रिज। I'll give you a minute and the minute has started. All right, so around 30 seconds more for your benefit. Girisa, that was quick. 8 minutes. Wow. 18. Singh Saab, Virendra Pal Singh Saab.
I'll assume that as 18 minutes. All right, 10. 17 minutes, Bipin sir. Wow, that's calculative. Pramod Agarwal sir, enlightenment in life is most important. Absolutely, sir. Yep, Man Singh sir, 17. Rajesh Kumar sir, 8 minutes. 8. Uday Chauhan sir. Great input. All right, time up. Let's understand what this exactly the problem was about. And thank you very much for having that calculative mind coming in for the benefit of this problem solving. 15 minutes, Ashok Singh sir. Thank you for the input. Thank you for working out on this. अच्छा मुझे एक बात बताइए. Of course, I'll tell you the correct answer, but for the part of this workout, you know, I'm thinking big picture कर रहे हैं. The most important part is 1 minute पीछे चलते हैं. Okay, everybody paying attention? 1 minute, 1.5 minute पीछे जाइए. When I showed you this problem, did anybody think that this is problem which is a mathematical problem? It looks like one. I'm sorry if I tricked you in assuming it to be a mathematical problem. क्या किसी ने सोचा कि ये लोग ब्रिज क्रॉस कर ही क्यों रहे हैं? या what alternative ways could have been to cross? पहले तो सॉरी, पहले तो हमें यही नहीं पता ये ब्रिज के आगे है क्या, ब्रिज कितना लंबा है, कुछ पता है, कोई आइडिया नहीं है. एग्जैक्टली सर, घनश्याम पिक्चर दिखाई दे रहा है तो बहुत कोई बढ़िया आइडिया बात नहीं. करी आपने. बिल्कुल, ये देखिए कितना पीछे साइड में कितना है, आगे की साइड में लग रहा है या नदी है, कुछ पता नहीं है. एग्जैक्टली घनश्याम सर, एप्रिसिएशन. और फिर मोटरसाइकिल से कौन कर रहा है और पैदल कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात है. में अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कुछ मत दो मूवमेंट ऑर्डर. मोटरसाइकिल ह्यूमन टेंडेंसी है सर, इसमें ह्यूमन टेंडेंसी है, बिना पर्पज कोई काम नहीं करता है, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है, लेकिन पर्पज है वो जा रहा है. बहुत बढ़िया बात कही सिंह साहब आपने, बहुत ही बढ़िया, एकदम कंप्लीटली एग्रीड. सर घनश्याम सर, आपकी बात भी बिल्कुल वैलिड है. जैसे ही आपने बोला मुझे पता ही नहीं है आगे कितना पानी है, कितना ब्रिज है, मुझे ये नहीं पता कि वो नदी क्यों क्रॉस कर रहे हैं, नदी गहरी है या नॉर्मल पानी है. हम ये भी तो सोच सकते थे कि ये रात को ब्रिज क्यों क्रॉस कर रहे हैं. चलो मैं आपको ना 30 सेकंड और देता हूँ, थोड़ा सा इसको बियॉन्ड, इस प्रॉब्लम के, इस कैलकुलेशन के बियॉन्ड सोच के देखते हैं. आपके इनपुट्स जानना चाहता हूँ, चैट पे या वॉइस पे, जैसा आप कंफर्टेबल हो. मार्केट से रिटर्न हो रहा है, वो मार्केट से आ रहे हैं प्रमोद सर. ओके, मार्केट से रिटर्न हो रहा है, सब गांव के लिए जा रहे हैं. ये काफी ब्रिज होते हैं हम लोगों के पास में बॉर्डर पे. बहुत बढ़िया. तो दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि वो ब्रिज इसलिए क्रॉस करें क्योंकि उनको मार्केट पे जाना है. तो क्या हम वो मार्केट वहां ला सकते हैं? ये अश्वनी सर की मैं बात सुन रहा था और मैं काफी प्रभावित हुआ था उस बात से. क्या वाकया था, कमेंडेबल सर. एंड दैट्स एग्जैक्टली वो जिस थी आज के हमारे इस वर्कआउट की. वो करते कैसे हैं, वो सभी के बेनिफिट के लिए विल बी वर्किंग आउट. And I'll be needing more inputs, more experiences from all of us. So 30 सेकंड, I need your input. So प्रमोद सर ने बहुत बढ़िया बात की, मार्केट से आ रहे हैं, हो सकता है ब्रिज के दूसरी पार मार्केट है, इसलिए वो ब्रिज हो सकता है कोई आगे उसका इंतजार कर रहा हो, कोई पांचवा बंदा है जिनका इंतजार कर रहे हैं. तो कैन बी कॉल दैट पर्सन टू दिस साइड ऑफ द ब्रिज, दैट कुड बी एन ऑप्शन. बिल्कुल अरुण सर, व्हाट एल्स? एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं ये. एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं अशोक सर. ठीक है, चार लोग पार्टी करके आ रहे हैं. पार्टी करके अच्छा वापस घर आ रहे हैं. ओके, दैट मींस पार्टी की जगह ब्रिज के उस पार ही है. ग्रेट. पार्टी से तो कैसे आ रहे होंगे, इतना डिस्टेंस कैसे हो गया? कोई नहीं सर, पार्टी के बाद तो कोई कहीं पर भी पहुंच जाते हैं अक्सर, देखा गया है. लगता है पार्टी में लड़ाई हुई है दारू पी के. कुड बी सर. There is a very specific question in the end which says how much time do they take to cross the river? Exactly, sir. So that's where I said my apologies if I tricked you in thinking this to be a mathematical problem. But मैं जो context set करना चाह रहा हूँ, अशोक सिंह सर ने बहुत सही बात कही, अरुण सर के, प्रमोद सर के, everybody has deliberated it actually very correctly, and this is where my thought process is.
हर वक्त जब, जैसे गिरी सर आपने भी कहा, मुझे नहीं पता आगे कितना पानी है, लैंड कहाँ पे है या ब्रिज कितना बड़ा है, द आइडिया इज आई नीड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन, तभी मैं कुछ बड़ा सोच पाता हूँ। अदरवाइज प्रॉब्लम सामने है, क्रॉस करना है तो करना ही है, वो फिर मेरे लिए डेलिबरेटली मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन के ही रहती, एक टास्क बन के ही रहता है, और यही हमारा डेली रूटीन होता है। लेकिन सर वो क्रॉस किया है तो क्रॉस करके नदी में तो नहीं डूबेगा वो। एग्जैक्टली सर। मतलब सब में, मतलब ब्रिज तो है वहां पे जो आपको वाटर से निकाल करके लैंड में भेज रहा है, लैंड टू लैंड को कनेक्ट कर रहा है। जी सर। तो ये नहीं कह सकते कि कहां तक जा रहा है, क्योंकि आपने लिखा है क्रॉसिंग द ब्रिज। यस सर। तो ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या है? दो चीजों को जोड़ना। एग्जैक्टली सर, जब बिल्कुल। दो चीजों को जोड़ा जा रहा है तो वो कहीं से जो है, कहीं से अपनी शुरुआत कर रहा है और कहीं दूसरी जगह पहुंच रहा है, डेस्टिनेशन पे। यस सर, बिल्कुल। रवि सर, एक मैं कहना ऐड करना यस सर, चाहूंगा, विपिन सर। वी आर ऑल फोर्स पर्सनल। यस सर। If order is given to cross it, then we have to cross it. एब्सोल्युटली सर। The commander must have thought something else after crossing the bridge. So probably this is one of the reason which comes in our mind, that if this task has been given, of course, it is to be thought by commanders, and being the commander, we should also keep a have a purpose. What is the ultimate goal? Absolutely, Bipin sir. Double thumbs up. It's a sort of Burma bridge in terms of force. Okay, Pramod sir. And crosses to difficulty, yeah, hurdles. Yes sir. बिल्कुल बराबर। बिपिन सर, आपने जो आपका डेलिब्रेशन है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन। मैं यही आप सबके साथ में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। इस वर्कआउट को समझने के लिए हमें उस माइंडसेट से थोड़ा ऊपर आज उठना पड़ेगा। अगले जो जितने मिनट हम इस सेशन के ऊपर आज डेलिब्रेशन डालना चाहते हैं, दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग स्टक विद व्हाट इज। बिग पिक्चर थिंकिंग क्या होती है, ये अभी मैं आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ सर। और बिपिन सर, शायद आपकी ये बात जो आपने डेलिब्रेट करी है, मेरे मायने वहां पर क्लियर हो जाएंगे। इफ यू परमिट एवरीबॉडी, आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री ओवर हियर। सो इन व्यक्ति को आप पहचानते हैं जो चेहरा फोटो में दिख रहे हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब he was appointed as the ambassador of France in late 1700s, he went there and as an ambassador he noticed जब भी सर्दियां होती थी तो मार्केट प्लेस में लोग शॉपिंग करने आते थे ऑफिस के बाद में, और दुकानदार मोमबत्तियां जलाया करते थे रोशनी के लिए, जिससे कि लोग आए और शॉपिंग कर पाए। अल्टीमेटली बेंजामिन फ्रैंकलिन थॉट and suggested to the mayor government over there that why not we shift the timing of offices 1 hour before in the winters. It was a suggestion कि offices को 1 घंटा पहले छोड़ दीजिए दिन ढलने से पहले, जिससे कि लोग जाएं और मार्केट प्लेस में शॉपिंग करके और अपने घर पहुंचे, तो लाइट जलाने की, मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता पड़ेगी। And this was agreed, and ultimately the impact was he was able to save big amount of money on burning candles, और daylight saving scheme जो है ये वहीं से पैदा हुई थी। So ultimately big picture thinking is not just about जो है, सर्दियां आएंगी, शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके लिए how can I create an impact? For that I have to pause, step back, reflect कि मैं काफी लोगों का या रिसोर्सेज का कैसे फायदा पहुंचा सकता। एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट वी आर डाइविंग इन टुडे। आई एम श्योर जो अश्वनी सर का एक एग्जांपल था, अश्वनी सर आपके प्रीवियस सेशन से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास में 30 बच्चे गांव के दूसरे पार जाने वाले थे। आई एम श्योर एवरीबडी वाज पेइंग अटेंशन एट दैट पर्टिकुलर थिंग। ही वाज इवन अपलॉडेड। मैं वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं, मैं तो प्रेजेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। कैसे वो 30 बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और लर्निंग इंश्योर करूं? He thought otherwise.
अदरवाइज करना तो था ही, बच्चे लेके जाते, रिसोर्सेज लगते, हर चीज लगती, बट ऑल्टरनेटिव अप्रोच से द बेनिफिट वाज गिवन. Okay, so that is one very good example that I can share from our own cohort member that he shared. Are we clear on this, Bipin sir and everybody else? जब तक आप लोग इस पॉइंट पे क्लियर नहीं है, तब तक आगे बढ़ने पे बहुत मजा नहीं आएगा. So we have to come over this mindset that wherever that we are, whatever that we are doing, big picture thinking सिर्फ मेरा ऑन एक्शन लेने वाली चीज नहीं है. आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का जुनून सर, इट इज अनमैचेबल ऑन ग्राउंड. आई थिंक जितने लेसन्स हैं वो एक बार को बैक सीट ही लेते हैं, बट वंस वी आर सीटेड बैक ऑन आवर सीट, थिंकिंग अबाउट आवर अंडर कमांड्स, okay, our juniors, our complete platoon, everyone, troops, वहां मैं क्या impact create कर सकता हूँ, that is big picture thinking. Are we clear? One more example of the India. Number of things are going in BSF. Yes sir. For example, हम लोग जो है पहले सोडियम लैंप जलाते थे, सोडियम लैंप, और वो होता था जो है सोडियम लाइट होती थी जी, लगभग 250 वाट की होती थी. बिल्कुल. और अभी उसको कन्वर्ट कर दिया है, अभी CFL और वो क्या बोलते हैं उसको, LED. हाँ, LED. बिल्कुल सर. तो उससे लाखों रुपया जो है कि वो जो है बचत हो रही है BSF को, कंट्री को, और उससे लाइट भी बेटर मिल रही है. बेटर मिल रही है और कम एनर्जी खपत है, लंबी भी चलती है सर. हाँ, सेम एग्जाम्पल जो कैंडल वाला आपने बताया हुआ है, BSF में पहले कैंपस के साथ में एक सर्टेन अमाउंट होता था इलेक्ट्रिसिटी का क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन धमाके की उपज की वजह से है उसमें मीटर लगा दिए गए हैं. तो वो जो है गवर्नमेंट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी हुई है, मतलब यहाँ पे सेविंग वाला है जो कंसेप्ट. जी सर. लोगों ने सेव किया और उससे जो है काफी बचत हुई है. Absolutely, Pramod sir. Totally agreed. I'm happy that we are understanding the tune of this particular session. Ashwini sir, your example, you wanted to share something. That example I had seen, I had just given from my personal life and professional life. Okay. I can just place one more example for you for the next course and all. Yes, sir. There was a very big decision taken by some corporate companies to resolve the traffic jam of Delhi. Okay. Again, there are a lot of employees who has to commute from Ghaziabad to Gurgaon. Absolutely, sir. And they have to stuck in the Delhi traffic. They spend a lifetime on. They just changed the office time. Yes, sir. Oh, the peak office time was around 8 to 9. Everybody is stuck in that traffic jam and has to spend 2 hours and 2.5 hours in the traffic jam. Corporate world or those companies has taken the step. They had started the office timing starting from 11 o'clock. Ah, great, sir. So great. Very smart decision from 11 o'clock to late night. So they save that peak traffic jam hours to their employees. Now their employees have started at 10 from the home. 1 hour they reach their destination and they just sit in the office a little late, so 7 to 8 o'clock, and then again they avoid the peak timing and reach back their home. Absolutely, sir. क्या उम्दा example है. बिल्कुल, sir. और sir, इसके फायदा. Yeah, this is big picture thinking. Thank you so much, Ashwini sir. आपके examples बड़े काम में आ रहे हैं मेरे आज, और I'm sure everybody is understanding that big picture thinking. जो मेरे एक धारणा है, उस धारणा से बदल के मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ, वो मेरी big picture thinking में इन्वॉल्व होता है. आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है सभी के लिए. आई एम श्योर इतने डेलिब्रेशंस में हम समझ तो गए हैं कि फायदे बहुत हैं. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि फायदे हैं क्या. Basically, this big picture thinking is futuristic. Yes, sir. You are thinking for achieving a very large goal, and that may be beneficial to a large section of the society or large section of the company or organization. So this is the main purpose of big picture thinking. Okay. Thank you, Bipin sir.
बाकी कोहोर्ट मेंबर्स से भी, रेस्पेक्टेड कोहोर्ट से मैं जानना चाहूंगा आपके क्या विचार हैं, क्या फायदे हो सकते हैं बिग पिक्चर? इसके फायदे ये भी हो सकते हैं कि सोसाइटी, एक आदमी अच्छा सोचता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़े ज्यादा फैमिली पे होगी, उसके बाद वो सोसाइटी फर्दर बिगर पब्लिक सोसाइटी पे होगी, फिर उसके बाद पूरे स्टेट पे सोसाइटी होगी। इस तरह से जो है हमारा जो सोसाइटी है या जो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। एग्जैक्टली सर, अरुण सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात पकड़ी है। इट माइट बिगिन फ्रॉम वन डिसीजन बट इट बेनिफिट्स एवरीबॉडी एल्स। अभी यस सर, प्रमोद सर। राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बिग पिक्चर का। जी सर। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जो है बिग जो है उनका गोल था या थिंकिंग थी, एक तो नदी जोड़ों का था उनका, रिवर सारी सारी इंडिया की जोड़ दी जाए। दूसरा उनका था दिल्ली का कैपिटल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो 4 काउंटर मैग्नेट सिटी बनाने का था उनका। ओके। हाँ, उसमें जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनको जो है शिफ्ट करने का था। तो उससे फायदा जो है कितना होता कि वहां पे जो इतना रस हो गया है, जैसे मिस्टर अश्वनी भी कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैफिक जाम रहता है। मोस्टली टाइम जो है, वैल्यूएबल टाइम दिल्ली वासियों का ट्रैफिक में गुजर जाता है। बिल्कुल बराबर सर। ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट होने से उसके कई फायदे थे। दूसरी जगह भी जो है सिटी डेवलप होते, लोगों को रोजगार मिलता, और लोग जो है केवल डिपार्टमेंट के यदि उससे लें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उससे लें, तो सभी का फोकस रहता है कि नहीं दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, तो उससे भी एक निजात मिलती, लोग अब दूसरी जगह के लिए शिफ्ट होते। तो कहीं ना कहीं यदि बिग जो है थिंकिंग की जाए तो उससे जो है ब्रॉडली जो है इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। ग्रेट ग्रेट प्रमोद सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने आइडिया पकड़ा है इस सेशन के लिए। आई एम सो हैप्पी। वर्मा सर, यस सर। आई वुड लाइक टू से समथिंग। यस सर, रमेश सर। इसमें मैं अपना एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं जो कि हमारे मतलब उस समय गुजरा हुआ है ये सब चीजें। ये 2005 की बात है। एट दैट टाइम आई वाज इन सरक्रीक एरिया, जो उधर है इंडो पाक के बीच में जो है, वो सर्किट एरिया में मैं डिप्लॉय था। कोटेश्वर मेरा जो है वहां पर हमारा एक टेक हेडक्वार्टर था और भुज हमारा जो है बटालियन हेडक्वार्टर था। तो उस समय ये इंडो और पाकिस्तान के बीच जो है सर्किट एरिया का सर्वे करना था। तो सर्वे के टाइम में आई वाज डिटेल्ड कि आप पहले जाकर वहां पर सर्वे करिए और सर्वे करके जो है और फीडबैक दीजिए। तो मेरे साथ टूआईसी गए थे, मिस्टर ये पीडी सिंह थे, अभी नाउ रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो सर्किट एक ऐसी जगह है जहां पर जो है एक तरह से इनएक्सेसिबल है, और वहां पर आई वाज द रादर पार्टी वाज द फर्स्ट टाइम जो वहां पर उस जगह पर गई थी। उससे पहले कोई नहीं गया था और वहां का सर्वे करना था। और वो एरिया जाने के लिए हम लोग को बोट्स वगैरह से जाना पड़ता है, फास्ट स्पीड बोट से। और वहां पर हम लोग 2 बोट से लेकर गए थे और टोटल जो है हमारे साथ जो है 15 लोग थे। पीडी सिंह जो है वाईसी थे हमारे, वो जो है नाला के पास रुके, हम लोग उनको छोड़ के फिर ग्राउंड में जो जी पिलर्स है उसकी तरफ बढ़े और लगभग जो है 2 किलोमीटर वहां से गए होंगे, 2 किलोमीटर क्या, और लगभग 2 किलोमीटर होगा। वहां पर एक स्नैक बाइट केस हो गया था। और वो वैसी जगह जहां पर हम लोग पानी में घुस के जो है गए हुए, कमर तक जो है पानी में घुस के उस जगह पर पहुंचे थे। और ग्राउंड पिलर हम लोग को दिखाई देने लगा था। और एट दैट टाइम जो है स्नैक बाइट केस जो है वो वहां पर हो गई। और हमें उस समय मोबाइल से तो बात नहीं हो पा रही थी, बट एक सेट के थ्रू मैंने पीडी सिंह को बताया कि सर दिस इज द मतलब एक स्नैक बाइट केस, और हमें इमीडिएटली, तो उनके दिमाग में एक गोल सेट हुआ और बिग पिक्चर क्रिएट हुआ कि हमें वी हैव टू सेव बाय हुक एंड कुक। ओके। और वो जो है इमीडिएटली बोला कि डोंट वरी, मैं अब यहाँ से इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी
कि मेरा या बिग पिक्चर मेरा ये है कि हमें इसको बचाना है। और वो ऐसी जगह जहाँ था जहाँ से कोटेश्वर से लगभग जो है 2.5 से 3 घंटा लगता है, लगभग जो है उस जगह पर निकल करके बोट से वापस कोटेश्वर तक आने के लिए जेटी पर। उन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर से जो है भुज से जो है सीओ को बताया। सीओ ने अपने डॉक्टर को मतलब ही नो द थिंग्स कि जिस जगह पर गए हैं सब वहां पर हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट उन्होंने जो भी जैसे इनका मैसेज मिला कि स्नैक बाइट केस हो गया है, वहां पर जो है उन्होंने डॉक्टर को इमीडिएटली भुज से तुरंत अपनी गाड़ी देख के बोला कि गाड़ी का एमटी को मत बुलाओ, हमारी गाड़ी खड़ी है और तुम अभी निकलो, मतलब विद इन 2 मिनट। कोटेश्वर वहां से भी हेडक्वार्टर से भी 2 से 2.5 घंटा लग जाता है अगर फास्ट चलते हैं तो भी। तो कोटेश्वर वहां इन द मीन टाइम जो है डीपी सिंह फिर भी पीडी सिंह बोले कि नहीं सर वो दायरपुर एक जगह है बीच में, वहां के सिविल डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां से कंसल्ट करके डॉक्टर को बताया और डॉक्टर जो वहां पर बोला कि सर इसको लड़के को हमें कैसे बचाएं, हम वहां नहीं पहुंच सकते। बोला कि हमारी टीम उधर से आ रही है लेकर के और उसको जेटी पर आप पहुंचे, बस मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जेटी तक पहुंचाइए, मैं वहां से तक मैं किसी तरह से ला रहा हूँ। वो टीम जो है हमारी जैसे तैसे, उस समय ये नजर नहीं आ रहा था कि हम लोग पानी में कीचड़ में हैं कि कीचड़ खा रहे हैं, कि समुद्र का पानी आपको पता ही है कि कितना खारा होता है, इवन जो पानी पी भी रहे हैं, लेकिन उसको पूरे 15 लोगों को यही था कि किसी तरह से इसको खींच खाच करके जो है वहां पर बोट तक लाना है और बोट से जो है जेटी कोटेश्वर तक लाना है। और ये आपको पता है कि जब स्नैक बाइट केस होता है तो अगर किंग कोबरा या कोबरा टाइप का जो अगर सांप ने काटा है तो इट विल विद इन 4 आवर्स जो है यू हैव टू गिव एंटी वेनम सीरम जो है वो देना पड़ता है। अगर कोई दूसरा सांप है तो उसके 6 घंटे के अंदर उसको जो है वो एंटी वेनम सीरम देना पड़ता है, अदरवाइज जो है उसकी लाइफ जो है वहां खतरे में पड़ जाती है। तो इस तरह की चीजें हम लोग के पास टाइम का भी कांस्टेंट था और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ जो है वो हम लोग का जाने का जो सारा कुछ हम लोग के साथ कुछ इस तरह से था कि कोई सोचने का बहुत ज्यादा स्कोप ही नहीं था कि हम उसमें सोचे, जैसे तैसे वहां से निकलना था और वैसे ही किए हम लोग। वहां से बोट तक पहुंचने में हमें जो है 45 मिनट लगा था, जबकि वहां जाने में हमें जो है 1.5 घंटे से ज्यादा लगा था उस जगह पहुंचने में। लेकिन वापसी में जो है 45 मिनट, इसलिए कि हम लोग गिरते पड़ते, हम लोग का वेपन भी जो है पानी में कितनी बार गिरा होगा, कीचड़ में कितनी बार गिरा होगा, और वहां पर पहुंचे। वहां से लड़के को लेकर के हम लोग 2 स्पीड बोट से, फास्ट स्पीड बोट से जेटी पर आए और वहां पर डॉक्टर को जो है दयापुर एक जगह है, वहां से डॉक्टर को कंपनी कमांडर जो था वहां पर उसको लेकर के वहां पहुंचा था। और तब तक जो है उस लड़के का जो है ओठ और शरीर काला पड़ गया था और वो जो है वहां पर अगर 5 मिनट भी और डिले होता है तो शायद वो लड़का नहीं बचता। लेकिन जैसे ही जेटी पहुंचा डॉक्टर तुरंत जो है इंजेक्शन दिया, कार्रवाई किया और वो डॉक्टर बोला कि आप लोग जिस हिसाब से मेहनत की और जिस हिसाब से अपने एक्शन लिया ना, ये अगर मैं कितना भी तारीफ करूं तो कम है, क्योंकि ये लड़का नहीं बचता किसी भी हालत में। जिस जगह से आप लोग उठा करके और लेकर के आए, क्योंकि वो जगह पहली बार है कि वहाँ इनएक्सेसिबल है और वहां से कैसे कैसे भाग करके कैसे लेकर के आए हैं ये आप ही लोग जानते हैं, हम लोग तो इसको मतलब तारीफ ही कर सकते हैं। और इसके बाद वो जो है इंजेक्शन दिया, वो लड़का जो है एक आधा घंटा में थोड़ा सा, फिर उसका जब वहां जाते जाते बेहोश रादर हो चुका था और वो उसकी जान बची। सीओ जो हमारे इस समय मिस्टर विष्णुदत्त शर्मा थे, उन्होंने खुद भी वहां गाड़ी से निकल गए थे कोटेश्वर आने के लिए और इन रूट जो है दयापुर में मिले वो, जहां पर डॉक्टर को फिर वहां से फर्दर ले गया था। वहां पर मिला, देखा उन्होंने और उन्होंने पूरी पार्टी को अप्रिशिएट किया और इवन जो है ऊपर वाले आईजी को भी अप्रिशिएट किया। इनका बिग पिक्चर क्या है, देखिए इनका बिग पिक्चर ये है, हालांकि 60 टन का है बट इन्होंने एक जिंदगी बचाई है। बहुत खूब सर, बहुत खूब आपकी सर। सर थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही काबिले तारीफ है ये जज्बा और ये आप जो बात करते हैं, इससे मुझे सर कई सारी बातें समझ में तो आई हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो 2-3 चीजें मैंने यहाँ आपकी बात से, आपकी इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने कुछ मेंशन किए बिग पिक्चर के रिगार्डिंग भी,
और इसके जी अलावा सर। भी इसमें एक चीज और मैं लड़ाइयाँ या सर इसमें एक चीज और मैं वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस वजह से जो हमारे बटालियन में और ट्रूप्स के अंडर कमांड जो ट्रूप्स है, इतना पॉजिटिवली हर चीज को लिए कि उन्होंने इतना फेथ रखा अपने अफसरों के ऊपर, कमांडेंट के ऊपर, कि वो कुछ भी बोले तो उसको मानने के लिए तैयार थे कि नहीं सर आप मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सर बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं मतलब पहली चीज जो मेरे को पर्सनली एज अ सिविलियन समझ में आती है, शौर्य गाथा है सिर्फ जंग के मैदान पे नहीं है सर, ये तो मेरे को समझ में आ गई। और ऐसे एक नहीं कई सारे वाक्य मैंने पहले बैचेस से भी सुने हैं, आपसे भी मैं सुनता आ रहा हूँ, और आपके वाक्य बहुत ही वीरतापूर्ण है सर। प्लस बिग पिक्चर थिंकिंग हमारे इस सेशन के लिए खास तौर पे जो मैं वाक्य इन बातों से निकाल पाया, आपके इस एक्सपीरियंस से निकाल पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, बिग पिक्चर थिंकिंग वहां के लिए भी हमें हेल्प करती है। आपने कहा पहली दफा ऐसा फुटस्टेप वहां पर किया था हमने, इससे पहले कोई गया नहीं, वहां का सर्वे करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए हमको वो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, दैट वाज इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, अरेंजमेंट फॉर इमीडिएट एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट सर, वी कैन नॉट ओमिट कि अगर हम सोचते रहते या सिर्फ एक वो विजन ही लेके जाते कि ये टास्क ही कंप्लीट करना है, देन मेरा इमीडिएट एक्शन जो करना है उसमें मेरी बिग पिक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन हो जाता है। ये मुझे दूसरी चीज समझ में आई। बिग पिक्चर थिंकिंग ऑन दी अदर हैंड मेरे को प्रिपरेशन टाइम देती है। नाउ ऑन दैट लैंडस्केप, आप जहां पर भी गए थे उस पीक पे, वी वर नॉट अवेयर कि वहां वेनोमिनस स्नेक्स हो सकते हैं। Probably with that particular experience, we are aware next time a troop will go, a surveyor will go, we can equip them better. Correct? So for future preparation के लिए हम help कर सकते हैं, हम time better manage कर पाते हैं if we have complete information with us. And of course, our efforts are important. If we just keep thinking and don't action, then things can go haywire. फिर वो सारे effort futile हो जाते हैं. So thank you so much for sharing that, sir. Ashwani sir has also mentioned on chat, making the existing problems irrelevant is one of the biggest advantage of big thinking. Absolutely, Ashwani sir, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इररेलेवेंस हम देख सकते हैं, कैसे क्रॉप होती है या कैसे नहीं, हमारे पास में जो करंट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है हमें। हमें ये इस्तेमाल कब करना चाहिए? मेरा अगला सवाल आप सभी से ये है, ये बिग पिक्चर थिंकिंग व्हेन शुड वी यूज इट? आई वांट इनपुट्स फ्रॉम एवरीबडी एल्स आल्सो, जो बहुत ही पेशेंटली सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। So what do you think? Yes sir. Can I quote from history? Why not sir, Mohan sir? Sir, after attaining freedom from British, India was certainly a country of illiterates. In 1950s, if you correctly remember, in Tamil Nadu, the chief minister was K. Kamraj. Okay. At that time, the state was quite a number of illiterate people were there. The percentage were higher. The chief minister thought of a plan how to eradicate illiteracy. So he adopted a policy of free education in government schools. Okay. Still, the literacy rate did not improve. Then, on inquiry, he came to know that most of the population are reeling under poverty, and they don't even have a for one meal a day. So he started a free midday meal scheme. That's how this free education and free midday meal scheme enhanced the literacy rate of Tamil Nadu. Wow. Great. So ultimately, big picture thinking की इसलिए गई, the ultimate idea was, I want to educate the masses, the youngsters, correct? And how to do it was a second thought. Midday meal was again a brilliant idea, of course, as you have shared, sir. What else? तो हमें को जब मुझे masses को influence करना है, तब big picture thinking काम में ले सकता हूँ. Absolutely bang on, sir. What else can we think of? Rotila sir, Giri sir, yes sir. Why not, sir? Ashwani sir. When problems are so serious that they are not non-negotiable, then you should think alternatively to achieve the goal. You had
the resource crunch, basically man and material both, then you should think alternatively. And these are two major things when you have to think big. What has to be achieved and what are the alternative ways. Absolutely, sir. So जो existing हमें करना है उसके लिए भी पहुंचने को the alternatives. Great, Ashwani sir. Great input. Anybody else? It also helps us in having a holistic approach to any situation. Yeah, when we need a holistic approach, absolutely, sir. We start big picture thinking when we found a problem which we face day to day. Okay, that's interesting. Sir, would you like to elaborate on this? Any example? Yeah, I was in Kashmir on deputation with SSB. Okay. My battalion headquarters was at Sora in front of medical college. And that time Pathraw was regular on forces. And so many people are visiting their relatives admitted in hospitals. So we cannot retaliate accordingly. Okay. A place named as Dignival, my backmates who visited there, they see that place Dignival. It was kept pending for last 5 years to shift battalion headquarters from Sora to that place because of it was connected with a Kacha track. Okay. And threat of this ambush was imminent there. When I see this daily Pathrao and not found myself or my troops in proper position to retaliate, I shift this thing to battalion headquarters to Dignival, despite of these things. But now today, that location is a dream location of SSB officers, even troops, because of their safety we provided there. When I found this problem regularly कि पत्थर आ रहा है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो नहीं निकल पाते हैं, तब हमको सोचना पड़ता है कि कुछ क्या ऑप्शन हमारे पास में है. Exactly. बहुत सही बात कही वीरेंद्र पाल सिंह सर. बहुत अच्छा एग्जाम्पल. और इससे मेरे को एक चीज इन्फर हुई जो मैंने यहाँ मेंशन भी करी है. The sustainable change. When we want to bring about a sustainable change, it is not an immediate change या makeshift arrangement नहीं करने. वहाँ big picture thinking की हमें आवश्यकता नहीं है. तो बहुत खूब, बहुत उम्दा सभी के minimize the risk. Absolutely sir. Long term में risk minimize कर देना है हमको. Sustainable होना है. बिल्कुल अश्वनी सर. Great input. अभी मेरे को एक alternative thought आ रहा है. ये तो समझ में आ गया कहाँ use करना है. मैं इसे समझ. Yeah, Mansingh sir and then Neeraj sir, you've raised your hand. आपके भी input जानना चाहूँ. जब आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं और या you are the part of a group, then you have to think out of box or your thinking be like a big picture. Yes sir, बिल्कुल. तो आप masses में जब भी deal कर रहे हो, masses को influence करना चाह रहे हो, तो big picture thinking बिल्कुल बराबर सर रखनी पड़ेगी. Great point Mansingh sir. Neeraj sir, what are your thoughts? मैं ये कहना चाह रहा था, बिग पिक्चर जो है वो थिंकिंग हमारे को कंटिन्यूसली हमारे बैक ऑफ माइंड में रहनी चाहिए. हमारी कोई भी समस्या है वो स्टैंड अलोन समस्या नहीं हो सकती है. बॉर्डर पे अगर हम देखें तो जहाँ पे एक जवान खड़ा है, अगर हम सोचें कि नहीं वो सिर्फ जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट के एरिया की जिम्मेवारी है और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, तो ना वो जवान उस इशू को समझ पाएगा ब्रॉडली कि उसके ढीले होने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ना ही हम कन्वे कर पाएंगे. अगर मैं बिग पिक्चर के हिसाब से उसको अपनी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग को अलाइन करने की कोशिश करूं, मैं उसको बोलूं कि अगर तेरी एक ढिलाई के कारण कोई मिलिटेंट घुस जाएगा और वो देश में सुरक्षा में कहीं पे भी खामियाजा कर सकता है या बड़ा नुकसान कर सकता है, जब तक उसके दिमाग में वो बिग थिंकिंग नहीं रहेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है उस जगह पे, वो उसके दिमाग में नहीं रहेगी, तो वो उस एंगल से उस इशू के लिए अलर्ट नहीं रहेगा कभी भी. बहुत सही बात कही नीरज सर आपने, और बहुत ही वैलिड एग्जांपल आपने यहाँ कोट किया है. द ओनली पॉइंट मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस आल्सो,
फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे को बस वर्बली सब लोग, धीरज सर आपसे शुरू कर सकते हैं, कोई भी 2-4 लोग ये बताएं बिग पिक्चर थिंकिंग I कब just add, इस्तेमाल as a नहीं करनी layman, है। I want to add few things. यस सर। From layman's side, more time we get whenever we go for big picture thinking. Then we use brainstorming. Means as it is a group activities, and more person joins, and they give their inputs, and through their inputs some results comes, which may be few positive, few may not be positive, but corrective measure, we get the corrective measures in these ways. Then we prioritize teamwork, as in certain point of time we found that few person are more involved, and some person are not so involving, and in later stage we found that those person who was not involving initial ways, they come with better ideas, and they are fruitful inputs coming from them. So in that way, and then we have to determine our goals, and in big pictures, in certain point of time, we started for a point A goal, but if we found that we are getting A plus B, then plus C. So these are the few things which we can achieve through big picture thinking. एब्सोल्युटली वकत साहब, आप बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है। मैंने आपकी के कुछ पॉइंट्स से ऑल्टरनेटिव थॉट्स भी निकाले। जैसे ये 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, जब भी हमारे पास में टाइम कम है, वहां हम बिग पिक्चर थिंकिंग के बारे में विचार भी नहीं कर सकते, बिकॉज वहां इमीडिएट एक्शन चाहिए मैं, या जो भी चीज जो इमीडिएट एक्शन मांग रही है मुझसे, आई कांट थिंक कि अभी सोचता हूं उसके बाद करेंगे। जैसे राम सर ने भी पहले एग्जाम्पल दिया, तो वहां इमीडिएट एक्शन चाहिए था, वहां बिग पिक्चर थिंकिंग नहीं, एक्शन को एक्शन में ही कन्वर्ट करना था। सो दैट इज द लर्निंग ऑफ द एंटायर बिग पिक्चर थिंकिंग। तो ये पॉइंट तो हम सबको क्लियर कि बिग पिक्चर थिंकिंग होती क्या है। तो मैं रोजमर्रा के काम में मेरे को बाल कंघी करने हैं, उसके लिए मेरे को बिग पिक्चर थिंकिंग लगाने हैं, जूते के लेस बांधने हैं, बेसिक मुंडेन टास्क पे मैं बिग पिक्चर थिंकिंग नहीं लगाता। ठीक है, सो वी ऑल एग्री टू दिस। अभी बिफोर वी ब्रेक फॉर लंच, मैं एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, द पार्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड देन वील ब्रेक फॉर लंच। ओके, तो मेरे को ये पिक्चर देख के बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। Meanwhile, you think I'm reading messages on chat. So yes, Ashwani sir has mentioned economy of resources, economy of time. Yes, absolutely. Rajesh Kumar Yadav sir, to bigger goal के लिए ही हमको इस्तेमाल करने हैं, छोटे गोले के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते. Yes, absolutely. So what do we understand from the picture? ये देखने के नजरिया को शो करता है। जो देख रहा है, नॉट, नो, इट्स नॉट, ज्यादा गहरा नहीं है, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, और ये जो नीचे है उसको लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, उसने पहले ही अपना मोटिवेशन लेवल उसका डाउन है, मोरल डाउन है। क्या बात है अशोक सर, बिल्कुल बैंग ऑन। आज आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पे जाके लग रहा है, आपने समराइज कर दिया इस चीज को। एनीबॉडी एल्स विद अ डिफरेंट व्यू पॉइंट? It's a state of mind. Yes, it is a state of mind. It is perception. We are guided by our own perceptions. It can be also like this. It can be also like this. At times, leader do not heed to the suggestions and advices of the subordinates. So, indeed, the problem may be deeper, but the leader thinks that he is having more knowledge and he ignores the wishes and thoughts of the subordinates. अंतर्यामी सर, पॉइंट वेरी वेल वैलिड, लेकिन इस पॉइंट को इस सेशन में मैं थोड़ी सी जगह कम दूंगा, लेकिन पॉइंट बहुत वैलिड है सर। मैं इसको एक जोक वे में कहना चाहूंगा, एक जोक वे में कहना चाहूंगा। मीडिया वाला पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है डूबते समय। बहुत बढ़िया। न्यूज चैनल वाला पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है। न्यूज बनाने के लिए ये पिक्चर
जो है सही है। Okay, बिल्कुल। मैं आई थिंक मैं इसको समराइज करता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट, जैसे कि अभी सर ने यहाँ पर मेंशन, अशोक सर ने भी मेंशन किया था। आई थिंक somebody has raised their hand. Your input, sir. राजेश सर। हाँ सर, am Yes, I sir. audible? Yes, sir. बिल्कुल, clearly. Sir, sometimes your position also compels to describe the right thing. The other side of this picture also depicts that sometimes your rear position also. Okay. राजेश सर। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो भी कई बार आपको सिर्फ यही नहीं कि अगला वाला निगेटिव सोच रहा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है, दैट इज ओके वन साइड, बट आपकी पोजीशन भी आपको बताती ये ऊंचाई पे खड़ा है तो ये बोल रहा कि नहीं ये तो इसमें रियलिटी भी कई कई जगह छुपी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट सर। लेट मी समराइज दिस एंड अंडरस्टैंड, ये थॉट रखिएगा लंच ब्रेक के लिए भी। whenever that we are stuck in some problem, we are not able to identify. एक बेसिक एग्जांपल, एक छोटे बच्चे को अगर हम जब स्विमिंग पूल में पहली दफा उतारते हैं, वो पैर फोल्ड कर लेते हैं, 2 फुट पानी के अंदर बोलता है कि पानी बहुत गहरा है, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन वहीं उसका बड़ा भाई या बहन अगर खड़े होते हैं उसी पानी में, नहीं नहीं कुछ नहीं है गहरा पानी, I rise. The moment I rise above, मेरे पर्सपेक्टिव चेंज होने लगते हैं। जिस चीज को मैं प्रॉब्लम समझ रहा था, वो प्रॉब्लम से ज्यादा मेरे को समझ में आता है दिस वाज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। कई दफा सर, एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत ब्रीफली। अगर एक बार की बात है, 4 मॉन्क्स थे सर, उनको ब्लाइंड फोल्ड करके पहली दफा हाथी दिखाने गए उनके मास्टर। तो एक मॉन्क ने जाके पट्टी बंधे हुए हाथी की सूंड पकड़ ली, एक ने जाके उसका पेट पकड़ लिया, एक ने जाके पैर पकड़ ली, एक ने जाके पूंछ पकड़ ली। वापस आए और आकर के उनके मास्टर ने पूछा हाथी कैसा है, तो एक ने कहा कि हाथी तो बहुत बड़ा है, तो बाकी हंसने लगे उस पर। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं पेड़ के तने जैसा है वो, तो जिसने सूंड पकड़ी थी। जिसने उसके पैर पकड़े थे वो बोला तो पिलर जैसा है, और जिसने पूंछ पकड़ी थी वो सब पे हंसा और बोला अरे हाथी तो रस्सी जैसा है। तो जब तक मैं कंप्लीट पर्सपेक्टिव नहीं जान लूंगा, मेरी बिग पिक्चर थिंकिंग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो आई हैव टू राइज अबव माय करंट सिचुएशन and understand the perspective completely, and do not understand an elephant thinking it to be a rope. Okay, so with this thought, I think 9th क्लास का कोर्स तब समझ में आता है जब 10th में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात कही सर आपने। और आई थिंक सौम्यदेव has shown up on the screen smiling at me, asking me with his glare, Ravi sir छोड़ दो, अब लंच के लिए जाने दो। Yes, I was just about to, but thank you, Ravi sir. Thank you so much, Ravi sir. I think now we all deserve a little bit of breaks. Sirs can have a great meal, everyone. I think we can resume again at 3:06. Yes. Okay. Yeah. So we'll if resume everybody again at agrees 3:06 or 3, whatever that you agree with. Yes, 3:06. Okay. All right. Great. Thank you very much, everyone. I'll see you after the break. Enjoy your day personally. So that becomes important. So Manish sir, how are you doing, sir? Yeah, I'm fine, thank you. Okay, so did we have our concepts, our thought processes going on, sir? Pre-lunch session, sir? Anything? बहुत बढ़िया. I'm wonderfully getting the things out of these discussions. Great, sir. Of the experience of the other officers as well as the faculty. I'm very happy about that, sir. In fact, I'll seek your participation in post-lunch session. Your inputs are equally valued, sir. Thank you. Rotela, sir, you've been occupied with a couple of things. In fact, you'll be multitasking, I assume, or you are reading the handbook. So what are your thoughts, sir? Pre-lunch session, what are your takeaways so far?
Rotela sir, if you can hear me. Pre-lunch session was very lively, and yesterday also it was a very lively session. Both the sessions were great. There were great participation also from the participants. Absolutely, गिरी सर, इनफैक्ट मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। ये एक बैच 6 का ऐसा कोहोर्ट है जिसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग इज ट्रेमेंडस। यहाँ हमें बोलना नहीं पड़ रहा है दैट शेयर योर एक्सपीरियंसेस, इट्स कमिंग आउट। इनफैक्ट आपका किया हुआ शेयर्ड एक्सपीरियंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ अस इन द कोहोर्ट। एंड कोई भी एक इंडिविजुअल जो बात कर रहे हैं, इनफैक्ट द काइंड ऑफ experiences that I am getting to learn today are actually the acme level of management and leadership. So too much to learn from all your experiences. And Ashwani sir was right in bringing in everything, laying down the base for me. Thank you very much, Ashwani sir. So Rajesh Kumar Yadav sir, good afternoon. Welcome back. Maheshwar Prasad sir, good afternoon. Welcome back sir. Pal Singh sir, good afternoon. In fact, जो मैं अभी अगर कैमरे पे देख पा रहा हूँ, मैं उन्हीं को सत श्री अकाल कह रहा हूँ। Good afternoon to you sir. Yes sir. Good afternoon sir. Sir, आपके participation चाहिए होगा. I think let's begin in another 10 more seconds. I think जब तक मैक्सिमम लोग आ चुके होंगे, आप लोग सब आ गए हैं। I was waiting the time हो। Pramod Agrawal sir, I hope you enjoyed your lunch. Verma sir. Yes sir. I would like to know that all of you are from permanent faculties from the MT University or some other institutions. Sir, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। This is beyond the regular questions. तो मैं बता दूं, Amity is a universe actually. And जैसे आपने शुरू की presentation जब हमने एक दी थी, उसमें बताया था we have 17 institutions within India. Yes. And 11 institutions outside. तो हम लोग जो permanent faculties हैं, जो trainings हैं, वो AITD के साथ associate होके we deliver the sessions. Along with that, we also have experts from respected fields जो external रहते हैं। Of course. तो ऐसे collaborate करके we try and create a bouquet for the complete value addition, sir. Thank you for asking, sir. In fact, this can lighten up the query box that we all might be carrying in our head. So, Chauhan sir, good afternoon. Gurinder sir, good afternoon, sir. Mr. Ravi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Verma Yes, sir. Jia Singh, sir. Ravi. Yes, sir. I just have a suggestion. Yes, sir. We are not management trainees. Of course, sir, you are not. And the terms that are being used here, they are absolutely from the management perspective. Okay. Can't we put the presentation or put the things or the literature in simpler terms for officers like us who are undergoing the training for Okay, of course, sir. Point very well taken. I think इसके लिए मेरी जो team है, of course, they'll be doing this input. I'll also provide them with your suggestions, sir. We have simplified it to the level where management doesn't confine to one particular organization or any individual entry level or top level manager. ये वो terms हैं जो universally applicable हैं. I think इसलिए use की गई हैं. But customization का जो point आपने कहा, I think that point is very well taken, sir. Mr. Ravi, मैं इसी बात को थोड़ा बोलना चाह रहा था। जी सर। रवि। जी सर, रोतेला सर। जो बोल रहे थे इसी बात को, जो आप टेक अवे की बात कर रहे हैं। जी सर। ये कुछ इस तरह से है जैसे हम लोग कोई क्रिकेटर बड़ा सा क्रिकेट खेल रहा है और शॉट मारता है, उसको पता नहीं है कि उसने शॉट मारा है, और कोई जो क्रिकेटर जानकार है वो बोलता है क्या स्वीप शॉट मारा है, तो इधर उधर देखता है कि बोल क्या रहा है। He doesn't know कि वो स्वीप शॉट है, फिर वो दोबारा शॉट मारता है तो बोलता है क्या हुक मारा है, तो उसको फिर देखता है कि हुक मतलब हुआ क्या, बट जो मार रहा है वो हुक है, वो स्वीप है, उसको पता नहीं है। इट इज समथिंग, जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड में फॉर लास्ट मोर देन 26-27 ईयर्स,
बट उसका थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या उसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इन सिविल पर्सपेक्टिव दैट वी आर नॉट मच अवेयर ऑफ। तो जो बोल रहे थे हर एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर फोर्सेस। You may be having a number of examples in civil department, in civil organization, but might not be aware of in forces. Only through with previous lectures and previous courses, you might be getting some examples related to those terms. तो मेरा सजेशन यही था कि जो आपने जैसे हैंडआउट्स भी दिए हुए हैं, they should have certain say brief of 3 or 4 sentences or letter description of each trade, so that we can associate more closely with them and find whether it is relevant to us or not, even though all points are relevant, but how we are doing that or how we can improve upon them. Of course, Otero sir, I think what I can sum up, आपकी बात बिल्कुल वैलिड लग रही है मेरे को, और आप ये कह रहे हैं कि even in my absence, for example, if you go through the handout, you are able to relate, say 6 months down the line or 8 months down the line, correct? Yes. Got it, sir. I'm sure my team is making a note of the suggestion. Very valued suggestion, sir. All right. Good afternoon, everybody. Welcome back after the lunch break. Pre-lunch session में we were discussing about what is big picture thinking, benefits जाने हमने कब नहीं इस्तेमाल किया है हमने वो जाने. We also understood perspectives क्या हैं और perspectives कैसे change होते हैं. So what we need is a complete understanding of the details to enable us for big picture thinking. अगले 10 मिनट में I want to take you all of us through the part of what is big picture thinking, इसको किया कैसे जाता है. Okay, so this involves 3 levels support. I hope the presentation is visible. Anybody who can confirm? Yes. Yeah, thank you. Yes. And everybody else. Okay, so just give me a moment. I'll get the point out. Yeah. So this one is understanding the problem. So it is a complete understanding. Perspectives की बात मैंने आपको एक example भी दिया elephant वाला. So unless we understand the complete situation, the complete information about a situation, we cannot understand. Now the next step comes is the part of reframing the problem, the situation. So big picture thinking के लिए step number 2 is how do we reframe that problem. एक activity करने वाले just इसके बाद में to understand how reframing is done into big picture thinking. Okay, and then once we have reframed what we need to focus on, तब हम इसका decision लेते हैं. थोड़ा सा हो सकता है अभी आप doubt में हो, एक activity करते हैं, it will have a complete clarity. All right. So here, सबसे पहले, how do we understand the problem? It has a framework. Now this framework has 3 different levels. पहला, why. Second is what and how. Why मैं आपको explain कर रहा हूँ big picture thinking के लिए for having complete understanding. Why is more like rising above. It's like eagle's eye view. 10,000 feet ऊपर हवा में चले गए. And वहां से एक सिनारियो को जब हम देखते हैं, we get to see the complete picture. क्या क्या हो रहा है, क्या कौन सी चीज कहाँ लीड कर रही है. और आप लोग तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे. As we go up, we understand the complete terrain, entire thing which is happening around. So this is the first question that we need to ask to reframe. Okay, to understand the problem. Why? Okay. Second step is what. What is an action figure? उस problem के लिए हमको करना क्या है? What all are the options that are available to us? जैसे ही कोई situation है, उसमें कोई सवाल पूछा, जैसे अश्विनी सर ने एक एग्जांपल दिया था, छोटा सा एक ब्रीफ ले रहा हूं उनका, कि उनको पढ़ाना है. व्हाई डू वी नीड टू डू दैट इज अ डिफरेंट फिगर. जहां मेरे को एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, वहां के यूथ को, वहां के बच्चे को, एजुकेशन इज बिकम्स इंपॉर्टेंट. व्हाट नीड्स टू बी डन इज टेक्नोलॉजी हैज टू बी ट्रांसफर्ड, students have to be transferred to technology, experts have to be there. What question? अब थर्ड क्वेश्चन जो है सर, वो आता है हाउ. जैसे ही हम हाउ पूछते हैं, इट इज टेकिंग एक्शन, कि ये करना कैसे है.
टेक्नोलॉजी जानी कैसे है। ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है। लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर रीफ्रेमिंग। ये यहाँ पर आपको सब क्लैरिटी दे देगा। दिस इज द सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस हियर एंड लेट्स सी हाउ वी कैन reframe this situation. The situation is, I want to have wine. Okay, my friend of mine decided that he wanted to have some wine at 12 o'clock at night. I was in a fix. All the wine shops were closed, and frankly, I was a bit upset with him that he had not thought of this before. What can I do? आप suggest कीजिए। ये framework use करेंगे, why, what, and how. Okay, we are reframing this. Yes, sir. It's a commitment to the friend. That's why. Okay. So I want to fulfill the commitment. All right, Ashwani sir. Kaise? So let's. What will you do? Okay. Why is the commitment to be fulfilled, and how to do it? What all are the places where we can find the wine at 12 o'clock? Okay. So The friends are you can fund it with the friends, yeah, there is no problem. Yes, I know. I will look for the mass. If I don't have any wine in my mass, I will ask your mess. Yes. Okay. No, you don't have to ask the mess here. It is with me. यहाँ मैस कहाँ से आ गई, ये जनरल क्वेश्चन है। Okay, well, ठीक है, बिल्कुल। Basically, it is the मैं तो impromptu दूंगा गाली plan. और बोलूंगा चुपचाप सो जा, तेरे को मैं पिलाता हूँ वाइन, दोस्त है। It is in impromptu plan, and it was not appreciated and planned way. Place So the all of demand sudden, online. Search for the places, search for the people who can provide or who can have. Search with other friends. Okay. सर पहले तो ये सोचना होगा कि ये सिचुएशन अराइज कैसे हुई। सर सडनली दोस्त आ गया, प्रमोद सर। एप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, प्रमोद सर, सिचुएशन बनी, मान लीजिए, देखिए ये समझने के लिए सिचुएशन बनी, आपके घनिष्ठ मित्र आपके पास में सडनली रात को आ गए। मित्र कौन से आए हुए हैं, हमको पता होना चाहिए मित्र कौन से आ रहे हैं। आपके घनिष्ठ मित्र होना चाहिए। सर अग्रवाल सर पता नहीं होता है, कोई ऐसे भी आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर रात को 12 बजे दारू पीने के बाद पार्टी में पान खाने की सिचुएशन हो गई सर। देन कंटिजेंसी रखना चाहिए, कंटिजेंसी। ओके। ये यदि ऐसा होता है तो हमारे पास में कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पे मिल सकती है। जैसे अभी किसी ने बताया था, कई प्लेसेस ऐसी हैं जो रात में खुलते हैं, 24 आवर्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है। तो वो पहले से जो है आई थिंक हमारे साथ अप्रिशिएट करके रखना होगा। बराबर प्रमोद सर, आपने वर्ड यूज किया कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी में मैं अपने दोस्त को ये भी बोल सकता हूँ कि वाइन छोड़ना, मेरे पास वोडका है, जिन है वो पी ले, बियर है वो पी ले। करेक्ट, ये भी तो हो सकता है ऑप्शन। वर्ड बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो प्रमोद सर, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। और बताइए सर। पीने वालों को दूसरा ब्रांड अच्छा नहीं लगता सर? ब्रांड नहीं, अभी तो है, तो अभी वही ब्रांड चाहिए, अभी ज्यादा चूजी हो गए तो दैट्स एग्जैक्टली सर प्रॉब्लम है हमारे सामने गिरी सर। वो इस प्रॉब्लम का निजात हम कैसे लेने वाले हैं, मैं वही जानना चाहता हूँ। मिस्टर अभी क्यों नहीं हम इसको ऑनलाइन सप्लाई ऑर्डर करें? ओके, ऑनलाइन सप्लाई, deliberations and conclusions. Then problem has to be discussed from some other to gain इसको वाइन को पाने के लिए जो है कुछ और ऑप्शन अप्लाई करें, जैसे अप्लाई ऑनलाइन। ओके सर, लिखा मैंने आपका पॉइंट, सर्च ऑनलाइन। और बताइए सर। उसको मोटिवेट करेंगे कि कल सुबह जो है दुगनी तीन गुनी पिला देंगे। या ओके, बिल्कुल, नाउ यू आर टॉकिंग सर। अशोक सर बहुत सही बात बोली। मोटिवेट फॉर टुमारो, पीनी क्यों है हमको, अभी छोड़ना, अभी नहीं हो रहा। वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चल अपन ये बात करते हैं। दैट्स वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट सर। प्रॉब्लम हम रीफ्रेम कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक दो डेलिब्रेशंस और किसी के दिमाग में आ रहे हो तो अंतर्यामी सर, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हम रीफ्रेम कर रहे हैं प्रॉब्लम।
using why, what and how. उसके वाइफ का नाम लेके उसको डरा करके उसको मना करवाएंगे दारू पीने के लिए. Okay. Scare the friend. we can offer him, let's go pubs. We can enjoy over there. Okay. Why wine at home? Let's use music. I will persuade him to drop the drinking altogether. All right. Visit any disco. उसको पहले पंप मारेंगे, बोलेंगे तेरे लाइक की ब्रांड यहाँ पूरे शहर में नहीं है अवेलेबल जो तेरे को सूट करती है तेरे स्टैंडर्ड की. Exactly sir. जो मेरे पास है हमको ये पीते ये तेरे को सूट करेगी. बहुत बढ़िया. रवि भाई उनको जो है ये बोल कर कि हेल्थ इशू है जिसकी वजह से हम नहीं पी सकते हैं, सॉरी कल इसको हम दोबारा ऐसे कुछ और कर लेंगे. बेसिकली टालेंगे या कुछ और बात करेंगे. बिल्कुल. अब मेरा दोस्त है वो बोलेगा कहाँ इधर उधर की बात करे. सो दैट्स वेयर वी आर रिफ्रेमिंग. चलिए सर इस पॉइंट को समझते हैं इसी की डेलिब्रेशन से. एग्जैक्टली अगली स्लाइड पे हमने ये 3 फिल्टर मैंने आपको बताया रिफ्रेमिंग के. द प्रॉब्लम इज आई वांट टू हैव वाइन. इस पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त हम. तो अगर जब भी मैं सवाल पूछता हूँ व्हाट कैन आई डू, तो व्हाट काइंड ऑफ वाइन, फ्रेंच और इटालियन, व्हाइट और रेड, इस तरह की मेरे पास में सीधे जवाब निकलेंगे जब भी मैं व्हाट का फिल्टर अप्लाई करता हूँ. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा सर, ये पूरा फ्रेमवर्क टिका हुआ है बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए. तो जैसे ही व्हाट अप्लाई किया द आंसर्स आर इमीडिएट एक्शन. अब हाउ इज उस एक्शन को फुलफिल कैसे करना है. गूगल स्टोर्स और गाड़ी उठाओ और रात को निकल जाओ, कहीं तो मिल जाएगी. ओके और या फिर जैसे आप कई लोगों ने बताया कि अरे सो जा भाई आज और कल देखेंगे. Correct. So how can I avoid that situation or how can I fulfill that situation? But big picture thinking is about applying the why filter. जैसे ही हमने लगाया why का filter, I want to have wine. The moment I ask why do I want to have wine? अब मेरे perspective खुलेंगे. बताइए सर, पहला सीधा कि भाई पीनी है तो पीनी है. Why do you want to drink? It can be the part of so I can feel good. अब सर अगर मैं इसके ऊपर पूछूं what can I do to make you feel good? If wine is the only thing that can make you feel good, perspectives खुलने लगे. Are we all understanding this? जैसे ही why लगाया मेरा problem statement change होने लगा. Are we understanding this sir? Please. मैं इसका एक और पॉइंट डालता हूं. Why do I want to feel good? So I can celebrate. इसका मैं अगर what and how निकालूंगा, so what can come out, sir? How else can I celebrate? What do I do to celebrate? Correct? That means my complete problem situation has been transforming as I'm applying the filter of why. Let it sink in for 5 seconds, sir. And come up if you have any point over here. Or let me know with a thumbs up on your screen if we are clear how do we apply this and how can we reframe the situation. May I say something? Why not, sir, Giri sir? It reminded me of a famous quote of an old World War II veteran. He said, the thing why should not come in a soldier's language. He said, soldier's duty is not to reason why. A soldier's duty is to do or die. Great thought, sir. In fact, it's very motivational, very inspiring as well. But जब ये सेशन मैंने शुरू किया, उस वक्त मैंने आपको खास तौर पे डेलिब्रेट किया था. Thinking big picture is not just about where we are. जब perspective देखे सर, आपकी situation है बिल्कुल. Do you think, Giri sir, we are at certain level at this point and we are going to stay at certain level for the entire time? We may rise, we may become advisors, we may become, many more things, many more roles to come for us. That's where this management lesson comes into play. No, my contention is that other things are okay. Yes, sir. Because as I said earlier also, our role and tasks are very well defined, Yes, sir. documented.
बिल्कुल सर. So there is no question of why in our role as such. Yes sir. Because when we start to question, then who will get those implemented? Absolutely sir. Nobody is questioning कि कैसे नहीं आपको implement करना. मैंने कल आप लोगों के discussions में नीरज सर, just a minute. I'm just trying to get into that mode of conversation with गिरी sir. कल भी बात करी थी और आप सब लोग एग्री भी करेंगे. आप सभी के पास में एक मेजर टास्क है, बहुत वैल्यूड टास्क है. आप सभी उस काम को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं. क्या सभी वो सारा काम एक जैसा करते हैं? या सबके अपनी यूनिट्स, अपने रोल, उनको मैनेज करने का तरीका, काम वही हो रहा है सबके पास, लेकिन उसका मैनेजमेंट और सब अलग है, हर लीडर पे डिपेंड कर रहा है. That is basically how, because everybody has a different style of functioning. Naturally, it cannot be same. Exactly sir. तो वो हाउ की बात हुई. अब उसी हाउ में if I identify if there is a scope, if today great, if in times to come, what can I do differently, can be a part of it. Giri sir. Yes sir. Neeraj sir. मैं गिरी सर के उससे डू और डाई की कोट से थोड़ा सहमत नहीं हूँ. Why to die? We do it or we do it other way. If we are not doing it other way, we do it third way. We find some more ways to do it. Probably that is what you also mean to say, that how we do it the other way. So we will have to find ways, and things have changed over time. Now we are no more those soldiers who only thought of dying. Now we are the soldiers and leaders who can think of doing many other things before dying. बिल्कुल नीरज सर. गिरी सर ने सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे वो बात कही और बहुत जज्बे से भरी बात है वो. That reminds me of one more quote also of George Patton. Right sir, right sir. He said, "No bastard has won the war by dying for his country. War is won by making the other poor dumb bastard die for his country. But for making that other poor dumb bastard die, you have to be ready to sacrifice your own life." So Neeraj sir, very well. I think again re-explained by Giri sir. So he's keeping up with his point. But yes, Right, sir, Giri right. sir and everybody else. Mr. Neeraj Neeraj's sir के point is well taken. Neeraj is my old friend. okay. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आपको पॉइंट तो हम कभी नहीं काट सकते हैं. I take my words back, but I still think that we have to go a lot far away, and probably this session is for that only. So we think big way. Yes, sir. Neeraj sir, thank you, Giri sir, for your input, and Neeraj sir for that valuable insight. And let's move forward. So, are we all clear with how do we apply these filters? एक बार screen पे thumbs up बता दीजिए मेरे को if we are clear, or if we have any doubts, please let me know. Yeah, Giri sir, thanks. Sanjay Mishra sir, Rajesh Kumar Yadav sir, Mohan sir, any doubts anywhere? Mansingh sir, thanks. Is it why, how, and what was the last? What? What? So why, what, and how is the part of it. मैं reiterate करूं before I move further. Why is rising up altitudinal question है. Okay, how is the mode, and what is diving deep. Okay, so that's the action part of it. Now that we are clear that how a big picture framework works and how do we reframe the situation for us, then it becomes easy for us to decide. अब जो अगले हम next 40 minutes में I want to take up interesting cognitive activities, the biases that come into way, and I want to know from you, sir, all of us, क्या चीजें हमारे रास्ते में आती है कि हम big picture नहीं सोच पाते. What comes in our way, sir? क्या लगता है? आपने गिरी सर ने बहुत क्लियरली मेंशन किया यहाँ पर, एंड मैं उनका पॉइंट सबसे पहले लिखता हूँ. द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन अ वे इज डिफाइंड पैरामीटर्स. ये आपके सिचुएशन के लिए. Oh, I just one is a commitment to the task, basically. Limited resources. Okay. Commitment to the task, basically. Limited resources. Okay. The current task जो है उसके लिए हम नहीं सोच पाते हैं. Multiple tasking. Okay, so we have to multitask. Support and guidance. Okay, so there is no support and guidance.
rigid and conservative nature. Conservative nature. Sir, Mansingh sir, would you like to elaborate on this one, sir? Like forces are working on ethos and their culture. Like in army, they was all the regiments have their separate different cultures. So we are following that cultures. We are very conservative in leaving behind the past. Okay. Different idea. जो भी कोई प्रैक्टिस चल रही है हम लोग इजीली उसको छोड़ते नहीं है. हम नई अडेप्ट कर लेंगे बट लेकिन पिछले वाली को खत्म नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी. We are very conservative in thought process. All right, sir. So I think जो पहला पॉइंट लिखा है defined parameters, ये उसी का एक पार्ट बन जाएगा. Okay. Thank you. Traditions, way of thinking and old learning of doing things. Old ways. Old ways of doing things. Yeah. See. And set. Yes, that's defined parameter. SOPs. SOPs. Okay. Yes. SOPs are defined parameters basically. Correct, sir. Okay. So at this level, we say we operate this way. So, sir, I'm just getting curious. अगर आप थोड़ा सा मेरे को इस पर एनलाइटन करो तो SOPs तो हमारे लिए तो अंडर कमांड्स के लिए भी तो हमारे जो ऊपर हैं उनके लिए भी होंगी. से मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ जो शुरू में हुई थी. It is the set of pattern of the guidelines for everyone whosoever is the working and the member of the force on the line of action. Your technical team who is taking notes of it, I will start with the presentation जो शुरू में हुआ था. Defined parameters हम इसको समझते हैं as a standard operative procedures. Okay. So these are almost similar words. Yep. Standing operative procedures and defined parameters कि किस काम को कैसे करना है. अगर आप इसको SOPs बोलेंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा defined parameters. Okay, sir. वो मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से है. But SOPs, yes, I completely agree. Absolutely, Ashwani sir. Point taken. वहाँ ऊपर भी लिखा या नीचे भी लिखा है SOP. I think this will be beneficial for our learning. So SOPs है. Fear of failure is somebody has mentioned. Sanjay Kumar Mishra sir. Stress may be one of the point. Stress levels are high. Yes, sir. And then firefighting, continuous firefighting. Yeah, too much task involvement. And one very important thing in hindrance in the big learning is, yes, sir. Basically the lack of information. Okay. Lack of information. जब हमें पता ही नहीं होगा कि कहानी कहाँ है किधर जाना है तो that mind will not open up. Exactly, Ashwani sir. इसीलिए मैंने perspectives का point सबसे पहले रखा यहाँ पर. Yes. It comes sometimes criticism. Fear of criticism from others. Yeah, so भगत सर बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला कि हम चाहते भी हैं, हम सोचते हैं व्हाट इफ आई फेल, या मैंने शुरू किया तो लोग बोलते हैं हमको क्रिटिसाइज करते हैं अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीकों से. बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल. नाउ वी आर थिंकिंग, ये है हमारे ट्रैप्स जो आ रहे हैं. आप लोग सब लोग बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, आपके सारे इनपुट्स मैंने स्क्रीन पे उतारे हैं. एनीबॉडी एल्स? मिस्टर रवि. यस सर. I am thinking for authorization of haftar at battalion level. Okay, what is that, sir? Big thinking. Let me know. अब तो है जो थिंकिंग है जी, ये हमारे BSF के साथ में मैच कर रही है या नहीं कर रही है? Can you elaborate this a little bit, sir? जैसे हमारे यहाँ जैसे अमेरिकन आर्मी में या जो है फोर्सेस में वहां पे कंपनी लेवल पे हैफ्टर ऑथराइज हैं. हमारे कहते हैं UNO फोर्सेस में उनकी कंपनियां और वो जाती हैं तो उनके साथ में हैफ्टर उनके साथ में रहते हैं. और हमारे यहाँ 2 फ्रंटियर के बीच में एक हैफ्टर रहता है IG लेवल पे. Okay. तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है बटालियन लेवल पे हैफ्टर होना चाहिए रेकी करने के लिए. Could be, sir. ये जो थिंकिंग है जी, इससे आई थिंक हमारा बिग थिंकिंग. लेकिन ये जो है अपने BSF पार्लेंस में इस प्रकार की थिंकिंग कहाँ सूट करती है? ये इस लेवल पे सोचा जा सकता है या नहीं सोचा जा सकता है? sir, I may not be the absolute right person to answer this,
बट आपके इनपुट से मुझे लग रहा है ये वैलिड पॉइंट तो है. नाउ आई हैव टू थिंक एज अ कमांडेंट वेदर इट बिकम्स. आप बताइए फिर हम भाई अपना वाई और व्हाट और हाउ लगा करके इसको हम कैसे जो है कवर कर सकते हैं. सर वाई आपने समझा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है प्रॉपर फीडबैक हमको देना हो सकता है इससे हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्विक हो जाए, हो सकता है कि हमारे पास एक्टिविटीज या अप्रूवल्स बहुत क्विकली आने लगे. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपके पॉइंट से. वाई इज लाइक दिस, तो वाई डू आई नीड टू डू दिस फॉर ऑल दीज थिंग्स. अब मुझे चाहिए, मैंने मान लीजिए एक इसका टुकड़ा पकड़ा कि इससे मेरी अप्रूवल्स बहुत तेज आने लगेंगे क्योंकि वो वहां पर हैं ऑथराइज्ड. अब व्हाट कैन आई डू to have authorizations coming to me quickly? Is it important कि मुझे वो authorized बंदा ही चाहिए या is there an alternative way? मिस्टर अभी मैं रोकूंगा आपको थोड़ा सा जी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो है काफी स्टडी की है बीएसएफ के बारे में, अदर फोर्सेस के बारे में भी. तो हमने कहा ये जो बिग थिंकिंग है ये क्या सूट करेगी, क्या ये बिग थिंकिंग में आएगा कि नहीं आएगा. मान लो इस लेवल पे हम लोग सोचना शुरू कर रहे हैं या सोचे तो ये उसके साथ में मैच करेगी कि नहीं करेगी. थिंकिंग का भी एक लेवल होता है ना, थिंकिंग का. बिल्कुल होता है सर. अब मान लो हम थिंक कर रहे हैं, हम तो हमारे लिमिटेड जो है रिक्वायरमेंट है. मान लीजिए कि हमें भाई डोमिनेट करना है, मैनेज करना है बॉर्डर को. बिल्कुल. बॉर्डर में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम थिंक करेंगे. अब वहां पे मान लो हम सोचे हैं कि यहाँ से हमारी एक बुलेट ट्रेन निकल जाए ताकि हमारे जो है जवानों के लिए फैसिलिटी हो जाए. तो इस तरह की थिंकिंग के लिए कोई स्कोप है क्या? नहीं सर, देखिए थिंकिंग के लिए द स्काई इज द लिमिट और द स्पेस इज द लिमिट. बट मेरे लिए वैलिडेशन तब बनता है व्हेन इट बिकम्स in sync with my situation, sir. I can't just be thinking, there could be a rocket at a click of my button on my wrist. ऐसा मेरा सोच तो चल सकता है, but is it practically? वही हमको जानना, जहां हम रिफ्रेम करते हैं वो 3 सवाल लगा. ओके, तो इसलिए सोच तो सर कहीं पर भी हम चला सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट या रोक टोक नहीं कर सकता है किसी के. एक लैक ऑफ एक्सपोजर भी हो सकता है मेरे ख्याल से. बिल्कुल हो सकता है सर. एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन जब हमने बात करी, yes, so I think this becomes the same thing. Let's see what are the common traps, sir. I'm happy that आप लोगों के deliberation से we all are getting that clarity. And let me big thinking by organization also, Sanjay sir. Yup. Yes, organization बनती लोगों से है, आप लोगों के input से बनती है, and of course, so that's where new things come into place. So, ये 2 पिक्चर हैं सर आपके सामने. क्या लगता है, पहली पिक्चर देखते हैं. This is A and this one is B. तो पिक्चर A देखिए सर. What comes to your mind? अभी हम ट्रैप्स में जा रहे हैं. वो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, हर्डल बनती हैं बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए. Now we are understanding this. मैडम के सामने कुछ नहीं पता सर, मुझे ही पता है जो तुम सोच रहे हो सब. A is a reaction of B. मैडम के सामने प्रपोजल भेज दिया है हेप्टर का. ओके, ठीक है. मैडम के पास में हेप्टर का प्रपोजल भेज दिया है. प्रमोद सर बिल्कुल, मैडम ने सुन लिया है. मेरे ख्याल से मैडम इसलिए बहुत अनकाइंड एक्सप्रेशन दे रही हैं. ठीक है. हमारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की. करेक्ट. सो व्हाट कम, क्या लगता है मानसिंह सर, पिक्चर ये देख के क्या ख्याल आते हैं? बोला कि आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की. ओके, दैट मींस शी इज स्कोल्डिंग. आप सोचने भी लगे हो. अच्छा, ओके. मिस्टर अभी इसमें ये है, मैडम जो है उन्होंने किसी बच्चे से इसका आंसर पूछा बट आंसर इज नॉट करेक्ट. दैट इज व्हाई आस्किंग सम अदर स्टूडेंट गुस्से होकर के, तुम बताओ सही है क्या है, किसका आंसर. ठीक है, मैडम नाराज हैं. गिरी सर, क्या दिमाग में आता है पिक्चर देख के? अरे ये बच्चे कंप्लेन करने आ गए मैडम से, तो बच्चों को कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ इधर चुपचाप. ठीक है, डांट रही है मैडम. महेंद्र सिंह सर, दास सर, व्हाट कम्स टू योर माइंड? देखा ना क्या और कुछ आ रहा है. He is not buying the idea what you have proposed. अच्छा, ठीक है. That means basically A is the result of out of box thinking. okay.
Right, Giri sir. Now tell me, what else comes to your mind? Chauhan sir, उदय चौहान सर. जो पढ़ाया था वो बोल नहीं रहे बच्चे. तो मैडम नाराज हैं. हाँ, यही लग रहा है हमको. कोई और ऑल्टरनेटिव थॉट? मैडम नाराज है, मैडम खुश तो नहीं है, इतना तो पता है. मैडम को बोला है ये बी को सॉल्व करो. ओके, बी पे भी आ रहे हैं सर. सॉल्व करो. बिल्कुल सर, बी पे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं तो मैडम के बारे में जानना चाह रहा था. ए पिक्चर मैडम को बी पूछ लिया कि बी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो. मैडम नेगेटिव एनर्जी शो कर रही है. नेगेटिव Actually, एनर्जी ये जो- शो करेंगे यादव सर. बिल्कुल. ये जो पिक्चर है ये पार्ट पिक्चर है, इसका फुल पिक्चर जब आएगा तभी इसके बारे में पूरा बताया जा सकता है. बिल्कुल भगत सर. सो नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग द पर्सपेक्टिव्स. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. गुड. व्हाट एल्स? ठीक है. तो इंट्यूटिवली हमने जाना कि मैडम को देखते ही हमें इतना तो पता है वो खुश तो नहीं है. एग्रीड? यस. चलो पिक्चर बी पे आते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पिक्चर भी जरा क्लियर नहीं है. 17/12 क्या है? ये पिक्चर बी में मुझे लग रहा है 17 solution to a problem. मल्टीप्लाइंग द थिंग्स. They are multiplying. Yadav sir, it's a multiplication. इनका फोटो फ्रेम साइज. फोटो फ्रेम साइज है ये. बिल्कुल ये किसी चीज का मेजरमेंट है. पाल सिंह सर बिल्कुल सही कहा. ये अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड है. It's a password. Alpha numerical. Great, Supriya Bhagat sir. Great. What else? मोहन सर, क्या विचार आ रहे हैं इस पे? Basically it's a set of numbers. It's a set of numbers. Okay. सिचुएशन बहुत ऑड है. Odd situation है. Okay. Very negative. ठीक है. Great. Now, what happened here? मैं अब आप सबका ध्यान यहाँ खिंचवाना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने ये दो पिक्चर्स देखी, वहां हमारा सबसे पहला पिक्चर ए देखते ही हमें लगा कि मैडम नाराज हैं. she is about to say some very unkind words. She is pointing at somebody. She is annoyed. She is angry. जैसे पिक्चर बी देखी, वहां हमने इंट्यूटिव कुछ नहीं था. लगा कि शायद मल्टीप्लिकेशन है, लगा कि हमको न्यूमेरिकल है. Something we were not impulsive immediately. Correct? And that's how our system thinking works. पहला हमारा जो मैक्सिमम ब्रेन है, थॉट प्रोसेस है, वो इंट्यूटिव एंड इंस्टिंक्टिव थिंकिंग पे जाता है. और जब तक हमारी ये इंट्यूटिव थिंकिंग चलेगी, बिग पिक्चर थिंकिंग हमारे ख्यालों में भी नहीं आने वाला. बिग पिक्चर थिंकिंग इज दैट रैशनल थिंकिंग सर, जहां एक लॉजिक, इनडिसाइसिव, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चलता है. So we have to pause and reflect to understand that. And this is where I wanted to bring the focus of everybody. Okay? Are we clear, sir? एक बार thumbs up मिल जाएगा तो आगे चलें. बाकी भाई लोग great. All right. Now we are getting into a 8 cognitive biases है हमारी, जो हमारे सबसे common है, आती ही आती. Let's understand each one of them one by one. मैं भी आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ. उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, because it might just get a little tricky. So here is the video for all of you. So Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that
is the amazing color changing card trick. Okay. So, dear sirs, did we notice anything in the video? तो वीडियो ही पूरा नहीं हो रहा है सर। पाल सर, अगर आपको थोड़ा नेटवर्क की वजह से लैग हुआ तो माफी चाहूंगा, ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड में था सर। What about others? T-shirt of the man, color of the T-shirt the man also changed. हाँ मनीष नेगी सर, टी शर्ट का कलर चेंज हो गया, क्या बात है। ग्रेट ऑब्जर्वेशन। Orange, now it's dark brown. ग्रेट सर, ग्रेट। व्हाट एल्स? कुछ अरुण सर कुछ नोटिस किया? अश्वनी सर, उदय सर? I hadn't observed that much. It's a card's color is changed. The card color has changed. Great. My focus was on cards only. No, yes, absolutely. अर्जुन की आंख टाइप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। एग्रीड। अजय सर, मोहन सर? नहीं, कार्ड्स का कलर ऑलरेडी ऐसा था, बट ये केवल एक ही था जो ऐसा दिखाई दे रहा, बट कलर कार्ड का कलर पहले से ऐसे था। ठीक है महेंद्र सर, पॉइंट टेकन। कार्ड कलर इज चेंज्ड। ओके, कार्ड का कलर चेंज हो गया। सो दिस वाज द कार्ड कलर ऑफ द कार्ड चेंजिंग ट्रिक। अभी जैसे अश्वनी सर ने भी कहा कि मेरा अर्जुन की आंख से निशाना लगा हुआ था। मैंने एंड सेम टाइम एग्जैक्टली कलर चेंज तो ये भी है कि वन इज द मैन इज द शर्टिंग विद ब्लैक शर्ट एंड मैडम इज आल्सो अनदर कलर चेंज इज आल्सो देयर। क्या बात है महेंद्र सर, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। दैट मींस यू ऑब्जर्व समथिंग एल्स। अब मैं आप लोगों को सबको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर इसका डीब्रीफ दूंगा। तो पहला जो पॉइंट है, जो हमारी बायस आती है, वो इल्यूजन ऑफ अटेंशन ही है, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखते हैं, यहाँ हम एनलाइटन हो जाएंगे, ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। That's my cognitive limitation. Absolutely सर, नहीं सर, सभी के साथ है। इनफैक्ट लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वीडियो। तैयार? पे अटेंशन। Hi, I'm Richard. This is Sarah, and we're going to perform an amazing color-changing card trick. This blue-backed deck of cards. Now, the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now, Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing color-changing card trick. All right. So here I am cognitive limitation. Okay sir, so this is one of the biases sir, जो मैं आप सभी का ध्यान यहाँ पे खिंचाना चाहता था। हम लोग अक्सर इतने occupied होते हैं अपने काम में that we don't notice the changes that could be going around, around that particular activity. सेम इसी के हिस्ट्री से भी एग्जांपल्स हैं, लेटेस्ट एग्जांपल्स आप लोगों ने सुबह भी शेयर किए मेरे सेशन के अंदर। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक कार, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने में व्यस्त थे कि सडनली लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई और उसको मार्केट में उतार दिया। So we must not have this occupied, preoccupied concepts, no? Exactly sir, that's where the attention focus is sir. हमें एज अ लीडर, जब हम एज अ लीडर सोचते हैं तो अटेंशन तो देना है, एक्टिविटी करनी है, बट वी ऑल्सो भी हैव टू बी माइंडफुल दैट व्हाट कुड बी गोइंग अराउंड, व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग अराउंड अस। तो पहली बायस First bias is? Yes sir. First bias is? This bias is illusion of attention. Okay, let's move on. Then how much time needed to judge a conflict situation? Any
Sir, this absolutely depends upon the experience level of the person and the gravity of the situation, sir. Conflicts एक जगह से सुन के तो कभी हम समझते नहीं है कि ये situation एक जगह की है. We have to understand the perspective, sir. देखिए मिस्टर रवि. Yes, sir. लेकिन आपका फोकस जो है डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है फोकस. बिल्कुल सर. कैसे सर? नहीं कर सकते हैं फिर टास्क के ऊपर. यदि आप इतने चेंजेस देखेंगे जी इन अराउंड आपके पास में कितने चेंजेस हो रहे हैं, तो आप अपने जो है टास्क पे जो है फोकस नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली सर. प्रमोद सर बिल्कुल वैलिड. फिर से आपका पॉइंट वैलिड है यहाँ पर. मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बिग पिक्चर थिंकिंग जब हमने कहा कि कब नहीं करनी है, जब मेरा इमीडिएट टास्क है, टाइम कम है, मेरे पास लिमिटेशन है, अर्जेंसी है, मैं बिग पिक्चर लेके बैठ ही नहीं सकता सर. इट इज दैट मोमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस जहाँ डीप डेलिब्रेशन डालनी पड़ती है. एंड देयर इसलिए बीएसएफ क्या होता है, बीएसएफ क्योंकि बीएसएफ काम करती है जीरो एरर सिंड्रोम पे, जो जिसका एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, या यदि कंट्री में भी देखें तो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी जगह ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा. बराबर सर. बिल्कुल बिल्कुल सर. लेकिन बीएसएफ काम करती है जीरो एरर सिंड्रोम पे. यस सर. उसमें यदि आप फोकस्ड नहीं होते हैं तो आप कैसे आप अचीव नहीं कर सकते हैं उस जो है टास्क को. बिल्कुल अभिमान सर, कंप्लीटली एग्रीड. मैं बस आपसे एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. हो सकता है वैलिड हो सकता है इनवैलिड हो, लेकिन आप मेरे को इससे शायद मैं आपको बस यहाँ फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ समझ के लिए. नहीं, इसमें आपने सरप्राइज कर दिया. जब हम फोकस कर रहे थे कार्ड्स के ऊपर और यदि आप कह रहे हैं इतने चेंजेस हो गए हैं जी, इट इज सरप्राइजिंग. सर दैट्स वेयर द सरप्राइजेस कम्स इनटू प्लेस. सर हमें क्या मालूम था कि हमारी वॉरफेयर सिंपल मैन एंड स्वॉर्ड वॉरफेयर से गन्स एंड बुलेट्स पे चली जाएंगी, गन्स एंड बुलेट्स से ड्रोन्स पे चली जाएंगी. We all were taken by surprise, sir. And that's where we have to keep an eye on the changes that are happening around us. Okay? Yes. This is where I'm trying to bring the focus in, sir. मोदी इसीलिए सीओआई होती हैं. समझ गया. चलिए सर, फैक्ट निकालने के लिए सच्चे फैक्ट निकालने के लिए. ओके सर, हमारे एक और सेशन है, इसके बाद में थोड़ा सा जल्दी से इसको समझते हैं. Objective facts. One thing I have to add. सेकंड बायस इज कंफर्मेशन बायस. अब ये कैसे काम करती है सर? हमारे एक सर्टेन सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम होता है सर, और हमें लगता है कि जैसे ही हमारा वो बिलीफ सिस्टम हमारी सिचुएशन से मैच किया, हम झट से उस पर डिसीजन ले देते हैं. व्हाट वी एक्चुअली हैव इज द पार्ट ऑफ समथिंग ऑब्जेक्टिव फैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल हमें मोबाइल लेना है, और मोबाइल लेने के लिए हमने थोड़ी सी रिसर्च करी एंड वी फाउंड आउट इन एन एंड्रॉइड फोन, से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक सैमसंग कंपनी बहुत बढ़िया है फॉर एन एग्जांपल. मैंने उसके रिसर्च कर चुका हूँ. I go to my friend and he says, yeah, I've bought a Samsung mobile phone. And he says, yes, my choice is right. And I can immediately go for a decision based on it. तो हमारे लिए सेकंड जो बायस होती है वो है कंफर्मेशन बायस. तो हम आइडियाज इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करते हैं. ठीक है? हाउ वी डील विद दिस पर्टिकुलर बायस इज, मेरे को एक बार पॉज करना पड़ेगा और मुझे इसके ऑल्टरनेटिव थॉट पे जाना पड़ेगा सर. तभी हम बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए कमिटेड हो सकते हैं. अदरवाइज अगर उन्हीं बायसेस में चलेंगे, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ हर्डल फॉर अस. Can we go for the previous slide, please? Sure, sir. This one? Oh, yes. Objective facts. Yes, and sir. what confirms your beliefs? Belief. Yes, sir. And the intersection of this is what we are seeing it. Exactly, sir. Objective facts we find somewhere. And research. beliefs को confirm करते हैं. बिल्कुल सर. रिजल्टेंट में हम दोनों को मिला के जो देखते हैं और उसको समझते हैं कि यही दिस इज राइट थिंग. एग्जैक्टली सर. जैसे ये हमारा पूरा कंप्लीट एक सेट है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का. सेम दूसरा सेट है बिलीफ सिस्टम का, दैट कैन कंफर्म. बट हमारी डिसीजन मेकिंग कहाँ आके रुक रही है? इन दो के इंटरजेक्शन पे सर, which is much smaller than the complete picture that could be in place, sir. रवि जी, yes, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन ये ऑब्जेक्टिव, आपने वो वाली बात बताई. There are some friends who I ask कि मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए. जी सर. ठीक है नहीं, दिस इज, और 2-3 लोगों ने मुझे बता दिया कि ये है. एंड माय कंफर्म बिलीव इज कि दे आर मोर टेक्निकली क्वालिफाइड देन मी
Absolutely. Better. This is my belief. I just go for the 3 friends who are IIT products. Absolutely. कंपनी में ही काम कर रहे हैं. बिल्कुल. ये Immediate. मेरा बिलीफ है कि जो मुझे बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे. बिल्कुल सर. एंड उन्होंने मुझे बता दिया कि सैमसंग खरीद लो. बिल्कुल. So now I'm just restricted to Samsung only. Exactly sir. बिल्कुल. I had not explored any other phone, Apple, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि मेरे दोस्तों को मुझसे ज्यादा नॉलेज है और उन्होंने एक चीज मुझे बताई है कि ये खरीद ले. I go to the market and take out that. बिल्कुल सर, बिल्कुल अश्विनी सर, बिल्कुल सटीक आपने एग्जांपल इसको वापस या सबके सामने रखा बेनिफिट के लिए. ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या हुआ, मैंने गूगल पे सर्च किया और मैंने जाना कि इस सैमसंग का गुड फोन, वहां पर सिस्टम आया, मेरा रिसर्च कंप्लीट. फिर मैंने कहा अरे छोड़ो, ये तो मेरा फैक्ट्स है, ये तो गूगल ने बताया. मेरे 2 या 3 दोस्तों ने भी बोला कि हाँ यार गूगल तो अच्छा फोन आ रहा है. वो मेरे बिलीव्स हैं. यस, तो मेरे बिलीफ सिस्टम पे डिसीजन ले लिया. नाउ दिस इज बायस बिकॉज वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है. ये जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है, इसको होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्स. ओके सर, एनी एग्जांपल दैट यू लाइक टू शेयर हियर, जिसको आप कन्वर्ट बिकॉज टू डिसाइड एंड टेक द डिसीजन ऑन एनीथिंग, दैट ऑब्जेक्टिविटी इज द वेरी मच आइडियल सिचुएशन. ओके, yeah, the basic part of it, sir. You mean that? See, objectivity, suppose as you are telling about the phone, same thing. तो suppose that phone, कौन सा फोन अच्छा है, तो उसमें जो आप 2, 3, 4 लोगों से जब आप बात करेंगे तो उसमें फैक्ट्स आ जाएगा. तो वो ऑब्जेक्टिविटी है नहीं, न्यूट्रलिटी एकदम, कि हमें नहीं ये सैमसंग नहीं लेना ना, ये अल्फा लेना है, हमको यही लेना, ये जो है ये इसमें ये है, तो वो है ऑब्जेक्टिविटी, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, न्यूट्रल फैक्ट्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. Sir, okay, I consider your point also, sir. The ultimate idea is big picture thinking के लिए limited piece of information पे decisions नहीं लेना, and that's where I'm trying to bring the focus. Yes. Oh, that's okay. So how can we deal with it is we have to be assuming differently. अच्छा, इसके अलावा क्यों, सब हर कोई तारीफ कर रहे हैं, तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव सर्च करके देखता हूँ. Could be giving me more information about it, sir. Okay, so that's where we get rid of confirmation bias. Immediately jump नहीं करना है इस पे. Let's understand the third bias, sir. Simplicity bias. Okay, so now here problem statement is coming for all of us. मेरे को इसका जवाब जितना जल्दी दे सकते हैं आप बताइएगा प्लीज. Okay, we are also running out of time. So a bat and a ball cost rupees 110. The bat costs rupees 100 more than the ball. How much does the ball cost? What is the answer? 10 rupees. Cost rupees. I mean more. 5. Okay, Giri sir, you mentioned 5. What about others? 10 rupees. 10 rupees. 10. 10. 10. 5. Today, sir. 5. 105. 105 rupees for the ball. Okay. 10 rupees for the ball. Great. सर देखिए ये सेशन हमारा चल रहा है बिग पिक्चर थिंकिंग पे, तो यहाँ पे इतना आसान तो होने वाला है नहीं. So the correct answer, I will yes. The correct answer I'll tell you, but the answer does not matter here. What matters is what was that impulse. Simple statement लगा हमको, and immediately answer हमारे 10 निकले, 5 निकले, अलग-अलग निकले. The correct answer is 5. Okay, but जैसे ही हमको लगा कि okay ये minus cure हो गया, and that's where we jumped into simplicity bias. हमें situations, problems हमें लगते हैं तो simple है, and we go ahead and taking that decision. That is not big picture thinking, sir. ये एक bias है जिसके हमें we have to get rid of it. So ultimately we accept contexts that look easy and straightforward. So how to deal with this is step back and take a moment to reflect. क्या वाकई में ऐसा है?
जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या इज दैट द करेक्ट वन, और डू आई थिंक and get into a little deeper into it, and I understand the perspective. Are we clear on the simplicity bias, everybody? Can I get a thumbs up if we are clear? Good, clear. All right, great. Let's understand the next bias, sir. The activity trap. अभी ये पॉइंट आप लोगों ने सुबह से मेरे प्री लंच और अभी के सेशन में भी बताया. Now this is where I want you to work upon. पेन पेपर सब लोग हाथ में ले लीजिए सर प्लीज, एक वो चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए. Okay, I will request everyone to have a pen paper or a pencil paper with all of us. Now we have to connect these 9 dots, sir. The rule is all the dots have to be connected. Touch होने चाहिए with 4 lines या फिर fewer straight lines. 4 straight lines or fewer than 4 lines. और रूल है कि पेन या पेपर पेंसिल अपने को उठानी नहीं. Four lines. all dots, sir. इसको ऐसे मानिए सर, टास्क है हमारे रूटीन, ये 9 के 9 टास्क हमको करने हैं और एक ही दिन में करना है. We have to connect all 9 dots, sir, with 4 lines or fewer. Okay, नीरज सर, great. Very easy. Great. आप ही समझाएंगे सर सभी को. बस 10 सेकंड और रुकते हैं नीरज सर. छोड़ दिया, कर दिया प्रमोद सर. क्या Done. बात है. मोहन सर डन. Done. क्या बात है प्रमोद सर, मोहन सर, ग्रेट. नीरज सर ने सबसे पहले मेरे को दिखा दिया था, तो मैं चाहूंगा कि वो भी बताएं और आप उनकी हेल्प कर सकते हो. मैं बाकियों से जानना चाहता हूँ, आर वी एबल टू डू इट? नो. Within this time. Yeah, I forget how to do it, but I had done it, but forget it. Doesn't matter, sir. देखिए, टास्क तो करना ही है हमें कब. Okay, but the idea. So this is again that big picture thinking, sir. मेरे लिए कोई एक्टिविटी इस वक्त मायने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती. द लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट. या मानसिंह सर, थैंक्स. अगर हम सभी लोग कर पाए हैं तो शुरुआत नीरज सर ने किया था. नीरज सर, प्लीज गाइड एवरीबॉडी. नीरज, मैंने पहले भी किया था ये, तो इसलिए मैं कर पाया. दिखाओ यार, हमें भी देखो. तो ऐसे भी तो हो सकता है अगर वैसे थे तो. लेकिन क्रॉस तो किया है ये क्रॉस तो करना था सर. क्रॉस तो ठीक है, पेन उठाना नहीं था. 4 स्ट्रेट लाइंस है सर. पर हमने तो पेन उठा. इसे में देखिए नीरज वर्मा सर. या सर दिखाइए. ये लीजिए सर, थोड़ा सा पास में लाइए. ओके. 1 2 3 4 5 लाइनें हैं सर. महेंद्र सर, 1 2 3 4 5 4 लाइनें उसमें कम करना. I done it with 5. अच्छा, अब फिर करते हैं. ये भी 5 है. 1 2 3 1 2. Now we are understanding. नीरज सर, वेलकम. बट मेरे को 5 रुपए वाला समझ में नहीं आया. सिंप्लिसिटी वाला नहीं समझ में आया सर. नहीं. गिरी सर, इफ यू कैन हेल्प नीरज सर. मीनवाइल आई विल जस्ट ड्रॉ सॉल्व कैसे करना है. या प्रमोद सर, वुड यू लाइक टू हेल्प? टोटल 100 वाले में. हाँ, 100 वाले. टोटल 110 और दोनों में 100 रुपए का फर्क था. 100 रुपए, 105 की कीमत हो गई उसकी. तो 5 और 105 ही बनता है, और कोई चारा नहीं है. गिरी सर का सही था वो. 105 रुपीज की कीमत है वो. सर, थोड़ा सा इसको एक्स वैल्यू में डाल के करेंगे नीरज सर, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके. मैं इस एक्टिविटी का थोड़ा सा एक डीब्रीफ बता देता हूँ. हमने जैसे कि अगर हमारे 9 एक्टिविटीज हैं जो हमें दिन में करनी है, 4 जो लाइनें हैं, ये हमारा समय है. हम जितनी भी कोशिश कर लें, अगर एक सिमेट्री में ही जाते रहेंगे, हम ये 9 की 9 एक्टिविटी कंप्लीट कर ही नहीं सकते. सो व्हाट वी डू इज, सर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आप सभी के लिए. प्लीज अपनी प्रैक्टिस हैंडबुक में अलग से कीजिएगा. हम पहले यहाँ आके रुके
और देन वी एक्सटेंड सर, हम ऊपर एक्सटेंड कर गए एंड देन वी आर कमिंग ओवर हियर सर, और यहां एक्सटेंड कर गए। ओके, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में हमने यहाँ एक्टिविटी कंप्लीट करी अपनी, एंड देन वी टेक केयर ऑफ द अदर 2 एक्टिविटीज विच आर लेफ्ट। 4 लाइनों में हमने ये 9 डॉट्स तभी कंप्लीट कर पाएंगे व्हेन वी स्ट्रेच आवरसेल्व्स सर। हम सेम उसी ढर्रे में चलते हुए, उसी रूटीन में चलते हुए बिग पिक्चर थिंकिंग नहीं कर सकते। वी विल बी फॉलिंग शॉर्ट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ट्रैप। आर वी ऑल क्लियर विद दिस bias or not? Please let me know. Clear. Great sir, thank you for confirming. अब वैसे मैं बता दूं आपके चैलेंज के लिए, स्कोप तो बीएसएफ में नहीं है सर आप कहां से कहां चले गए विदाउट आरएमएस? Think big, partner. Think big. Here, Think big. RMS is required. RMS is let it be at IPP. ये स्टेट में चले गए ऊपर। Okay, Pramod sir, I will not be a party to this. You cannot जो है उससे आप जो है ये जो दायरा बना हुआ है इसके ऊपर नीचे नहीं जाना है सर। आई डीआईजी में आप ये लिमिटेशन सेक्टर की भी आरएमएस चाहिए, फ्रंटियर की आरएमएस चाहिए। यू हैव टू गो स्ट्रेट 100-200 किलोमीटर। बिल्कुल सर, डीआईजी में पावर है सर, जा सकते हैं आप सर। नहीं वो चीज अलग है भाई, जो उधर ऊपर वालों को जो है सॉल्व कर पाएंगे भाई, यूनिट लेवल के कमांडर नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व। सर अब आपको डीआईजी बनना है सर, यूनिट लेवल पे नहीं होगा सर ये। अरे I am sending out good wishes for Pramod sir and everybody. Okay. सर आपको डीआईजी बनना है और आपने बिग थिंकिंग करनी है, कमांडेंट लेवल की थिंकिंग खत्म होनी है सर आपको। ऐसा है यहाँ पे ऊंचे बनते हैं, उनकी कंधे भारी हो जाते हैं, चलना मुश्किल होता है। मैं जब कंपनी कमांडर था ज्यादा फ्री था, आज कमांडेंट में जो है तो यहाँ पे उल्टा है। अरे तू बंद करवाएगा प्रमोशन हमारे। रौतेला क्लास ले लेगा इसलिए चुप हो जाओ। किसी हालत में खुश नहीं रहना। कंपनी कमांडर तो चला करो भाई। यस यस। सोचो। May I have everybody's attention? I know things are getting connected. बोला तो है, let it be think by big. Okay, sir. If I have your kind attention, sir, there are more biases. बस ये biases finish करके, then we'll go for a break, and at that time we can of course continue the interaction, sir. Okay, so the next bias is gratification bias, sir. कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो immediate result दिख रहे हैं हमें वो फायदेमंद दिखता है। Which one will you choose, sir? 1 lakh this month or 3 lakhs in 6 months, sir? Which one will you choose? 1 lakh this month and 3 lakhs in 6 months. Yes, sir. 1 lakh. Immediate. बिल्कुल sir. Mahendra sir. Okay. So what could be the thought behind it, sir? ये 3 लाख रुपए अपनी कहावत है, अपने पास एक कहावत है, 9 नगद 13 उधार। बहुत बढ़िया सर। आदत लगाने के लिए, हैबिट में लाने के लिए ड्रीम 11 वाले जैसे करते हैं कि 1 करोड़ कमाओ। Okay, I'm not aware about that, sir. The idea here is that you should have resources scattered over a long period of time instead of immediate this gratification. Bigger amount. You will have resources in hand and you will not face resource crunch in the coming months, in the next 6 months. Am I back? Okay, thank you for confirming. I'll just go back and share the screen quickly. Yeah. So ultimately, when we are talking about big picture thinking, sir, हमें हमेशा जो immediate मिल रहा है result,
या जो एक रिवॉर्ड मिल रहा है हमें वो ज्यादा समझ में आता है. इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. But big picture thinking is, what is the long-term view that we have, sir? What are we trying to ascertain? Okay. And what are we trying to achieve? That becomes a part of it. So a win or a reward immediately may not be the bigger achievement, sir. So for getting over this bias, we need to ask if we are focused on the right priorities today, which is in line with the vision of your successor. Okay, so this particular bias is called the gratification bias. All right, are we clear on this one, sir? So big picture thinking ke liye, we have to think what is the vision of success that we have, and we have to keep that in our mind and not fall prey to immediate rewards. Mahendra sir, are we clear? Sir, bilkul, yes, you are, sir. Okay, great, sir. Let's understand the next one. और ये सुबह अशोक सर ने शायद मुझसे बात की थी, मैंने कहा था सर याद रखिएगा आ रहे हैं. टायर्ड एंड इमोशनल. अक्सर हम अपने काम की वजह से टायर्ड होते हैं. वी आर फीलिंग इमोशनली लो, एंड दैट्स वेयर वी आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन मेकिंग द राइट डिसीजंस. हम थक हार के गए अपने ऑफिस या रिटायर हुए घर पे, and immediately that there is a mail that that you have to answer, or you have to come back on duty or something else. So there's a lot of constant pressure, and the decision may not be very right. So when we are facing such biases, when we are not thinking positively or in the right direction, it's always advised that we take a break. If not complete break, then shorter breaks, sir. ओके जो हम बात करते हैं, आज नेहा जैनर जी ने भी सुबह आपको योगा का बात करवाई होगी. शैलो ब्रेथ्स. ओके, वी काम आवरसेल्व्स. और सुबह सर ने कहा था अच्छा नहीं भी महसूस हो रहा हो तो अच्छा महसूस लगवाते हैं खुद को. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स सर. दिस एक्चुअली वर्क्स. मेरे साथ कई एग्जांपल्स हैं. आई एम श्योर आप लोगों के साथ तो और भी कई एग्जांपल्स होंगे, आपके खुद पर्सनल एग्जांपल्स भी. So let's avoid taking decisions once we are feeling emotionally unstable. That's where we get rid of the bias. Okay, Giri sir, in line, in sync. Okay, great sir, thanks. And the next bias is recency bias, sir. बताइए सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है? Fill in the blank. It's complete 4 letter word. Seat, belt, Okay. seat, and boat.